Invincible. Invincible.
Hello, ladies and gentlemen, and you're welcome on Asia Balbush Chapter 3rd. And my name's Inferno, along with Edge. And Edge, we are back here again. And it's gonna be day number 3 of playoffs qualifiers. देखिए आज के दिन को हम जैसे ही स्टार्ट करें, आप लोगों से एक दिल से रिक्वेस्ट रहेगी, राइट? जाइए जल्दी से जाके मैं अभी बोल रहा हूँ, रिक्वेस्टिंग यू फ्रॉम द स्टार्ट, राइट? अभी जाकर चैनल को सब्सक्राइब करिए, बिकॉज़ आवर चैनल इज रियली क्लोज टू 50K. सो जाइए जल्दी से आके सब्सक्राइब करिए. एंड एनर्जी इज टोटली हाई. ग्रुप्स के अंदर चेंजेस मिलेंगे. ग्रुप ग्रीन इज बैक टू द सर्किट एंड दे आर ऑन द पैनल. सो यहाँ पर फाइट्स भी हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगी. फैन फेवरेट टीम्स है, हर एक टीम यहाँ पर बेहतरीन खेल रही है. कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा अमेजिंग. एंड इफ यू गाइस आर टॉकिंग अबाउट द कोऑर्डिनेशन, मी एंड एज वी आर आल्सो कमिंग ऑन द पैनल एज वेल. I mean, yes, in sync always, you and me, and hopefully the teams will be as well today. I mean, desperately need to. I believe Group Green is going to be coming into action today. So, I mean, these teams, they need to start coming in with good games, you know, with good games, decent games, so that they don't feel the pressure as the day progresses, as the event progresses, as the playoffs progresses, as we near the grand finals. They don't, you know, want to be in a situation where they feel like, are we going to be qualifying? Is there any doubts now that those thoughts lingering in your mind is probably going to cause some issues later on. So hopefully teams from Group Green, they will come out swinging, and we will probably have some decent games coming up, because once again we do have Rondo, Erangel, Miramar, and the cycle repeats itself. And Group Green, we all know who are in it. It's the kings of Rondo, if you ask me. So 4 tribes will be coming in today. Anyways, as we take a look at the event roadmap, we had Phase 1 starting from 8th of January to 13th of January. 18 teams moved to the grand finals from 14th Jan to 17th of Jan, where Flash was crowned the champions. Phase 2 started on 18th of January till 23rd of January. It was the playoffs. Top 18 once again moved to the grand finals from 24th of January, and 27th of January is when we crowned Flash once again as the champions. Now that is insane. 2 times back to back, 2 phases. Now they thought it was the end. Well, it's chapter 3 by 141 esports. So we have phase 3 as well now coming in 28th January to 2nd of February, and grand finals from 3rd of Feb to 6th of February. Top 16 plus 2 fan favorite teams will be moved to the grand finals. I mean, up until now, the fan favorite teams were DRS and 4 tribes. And I mean, phase 1 was the same scenario. Phase 2, similar situation. Now phase 3 coming in. I want to see if there are going to be any changes, or will we, be looking at once again 4 tribes and DRS being the top 2 fan favorite teams. Absolutely, this is going to be the event roadmap, and इस बार का ये रहेगा आखिरी फेज जो रहेगा, फेज 3 as you were talking about. एंड देखिए टॉप 18 टीम्स यहाँ पर हम लोग को देखने को मिल जाएंगे ग्रैंड फाइनल्स के अंदर. जैसे पहले यहाँ पर सिस्टम होता था, हमारे जैसे पहले स्टेप्स रहते थे, वैसे ही रहेंगे. कुछ यहाँ पे चेंजेस नहीं रहेगा. हालांकि देखिए 2 फैन फेवरेट टीम्स यहाँ पर हमेशा क्वालिफाई करती है लाजमी तरीके से, वो भी आप लोगों के वोट्स की वजह से. तो जाइए जल्दी से आके अपनी फैन फेवरेट टीम को भी वोट करिए. देखिए इट्स अ universal fact and truth in Asia Balbush Chapter 3rd, DRS and 4 tribes are going to be the favorite teams forever right now. But एक बार हम लोग यहाँ पे ग्रुप के ऊपर नजर डाल लेते हैं. ये रहेगा हमारा ग्रुप ब्लू, जहाँ पर हम लोग को BTR, RRQ, टीम फ्लैश, टीम SKYFORCE, टीम DRS गेमिंग, टीम हांगकांग, टीम साइट्स, टीम T2K esports एंड Erangel देखने को मिल जाएगी फ्रॉम कोरिया. सो मैं बोलूंगा ग्रुप ग्रुप कल के दिन के अंदर यहाँ पे इनकी बहुत ही ज्यादा बेहतरीन परफॉर्मेंस थी. देखिए यहाँ पर मैं बोलूंगा चिकन डिनर्स यहाँ पर बहुत सारी टीम ने लिए थे. आई मीन 6 टीम्स हम लोगों ने देखी थी, एंड 6 डिफरेंट टीम्स कमिंग अप एंड टेकिंग दैट चिकन डिनर. बट स्पेशली मैं बोलूंगा ग्रुप ब्लू, जहाँ पर इतनी ज्यादा पावर पैक टीम्स है, जैसे कि BTR, RRQ, टीम फ्लैश, DRS, बीट, टीम हांगकांग एंड Erangel. ये कुछ ऐसी टीम्स है मैं बोलूंगा ये है पावर हाउसेस ग्रुप ब्लू के. बट इन लोगों की परफॉर्मेंस एज कल के दिन के अंदर थोड़ी बहुत मैं बोलूंगा लैक करती हुई इन टीम फ्लैश के हम लोग को यहाँ पर देखने को मिले थे डिफरेंट, राइट? वो जो एक ओजी स्क्वाड थी हम लोग को नहीं देखने को मिली थी. सो चिकन डिनर्स के अंदर इजाफा यहाँ पर टीम फ्लैश कल तो नहीं दिखा पाई थी, बट देखते आज के दिन के अंदर टीम फ्लैश के वही सेम खिलाड़ी हम लोग को ओरिजिनल रोस्टर खेलते हुए देखने को मिलेगा या फिर नहीं. We'll see if that is, we'll see what is going to be the case, as we will be jumping into the match pretty soon. But these are the teams, and from Group Blue, we have red and green in the mix too. Red usually associated with being the most aggressive ones, and well, we'll take a look at Group Green first.
as we have Boom Esports, VOIN Esports, Nogshim Red Force. Now NS coming in. This is going to be interesting as we have Team Secret, DRX from Korea joining us now. Team 52, 4 Tribes, and ASI 8 Esports now switching groups, coming into Group Green to join their Pakistani brothers along with Team WARGYE. Now these 3 teams coming up, it's going to be really interesting to see how they pan out with the other team from the same region. So we'll see how things unfold here. And day number 1 for this group, of course, and hopefully these players will be stepping up and will be putting up some good performances pretty early into the stage. Otherwise, things might get a little scary for everyone. This is going to be the group green on our screen, and there we have it. I mean, ग्रुप ग्रीन यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाएंगे आज के दिन के अंदर, और देखते हैं क्या सिनेरियोज यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलेंगे इस टीम की तरफ से, एंड कैसे लाजमी तरीके से डिनर को अपने नाम लेके जाएंगे. एंड देखिए यहाँ पर 4 ट्राइब्स, SCYTES स्पोर्ट्स टीम, वार्गे, कुछ ऐसी टीम्स रहेंगी जो यहाँ पर खेलते हुए देखने को मिलेंगी. ग्रुप रेड हमारे स्क्रीन के ऊपर अभी के लिए, एंड Group Red. Oh, the teams here are very scary. We start off with Alto, Ego, Eris coming in really hard, especially with the addition of Rosemary back into the squad. D plus Kia, who are now on the top of the table here, coming into the playoffs. Of course, at these with the new iteration of players, they've been performing out of their mind too. HORAA Esports coming up. Hopefully this time grand finals they will make their way. Phase 1 they did, unfortunately not the kind of performance they were hoping for. But phase 2, unfortunately, they didn't really make it to the grand finals. And BLUG, they're picking up the pace. We still are waiting to see how they perform. I'm waiting for those amazing games from them. Alpha Gaming, we didn't really get to see the Alpha Gaming that we did get to witness in PMGC 25. So hopefully we are we are in for a ride here for sure. But Team 11, the 11 from Korea, they are the only Korean team that's kind of struggling. 2K Esports, on the other hand, had a pretty good phase 1 and phase 2. Looking forward to phase 2 for sure. Team PANDUM, phase 1, nothing to talk about, but phase 2, definitely a lot to talk about. They're now coming into phase 3. Let's see if they'll be talk of the town or be out of the town, as these are the groups now, ladies and gentlemen. We will be jumping in to the matches pretty soon. I believe it's Group Blue and Group Green jumping in today. So these players on the side of Group Red, they will not be coming in today. They did play 2 days already back to back, so I believe that's 2 days of rest now, or maybe 1 day of rest. But regardless, they will have some time off now at the moment while we take a look at the other groups coming in. Of course, we will be heading down to the overall standings as well to see how things are turning out for the groups, for the teams in Group Red and Blue, for now at least, and see what are the changes that are going to be coming up soon and by the end of the day too. And talking about the fan favorite teams, well, this is what you guys have pulled in at the moment. DRS leading right now. HORAA Esports 4,700. 4 Tribes pushed out to 3rd position. I don't think I've ever seen that ever. But here's the thing, they've never played yet. They haven't played, and they already have 4,252 words. So I'm pretty sure the fans are gonna go crazy the second they come in. Things yes, will absolutely be on the rise. Yeah, absolutely, and especially we can see DRS, HORAA Esports, all those teams they were playing yesterday, right? So 4 Tribes आज के दिन के अंदर हम लोग यहाँ पे 4 Tribes खेलने को देखने को मिल जाएगी. देखिए तब भी यहाँ पर भले ही 4 Tribes ने 2 दिन नहीं खेला था एज, उनके फैंस ने यहाँ पर 4,000 से ज़्यादा वोट्स अपनी टीम के लिए यहाँ पर एक्यूमुलेट किए हैं. देखिए HORAA Esports, आई फील लाइक यहाँ पर इस बार मेरे को ऐसा वाइब आ रहा है कि हो सकता है कि टॉप 18 के अंदर फिनिश ऑफ करके जाए. पिछली बार यहाँ पर हम लोगों ने HORAA Esports को नहीं देखा था आता हुआ टॉप 18 के अंदर, कहीं ना कहीं दे वर स्ट्रगलिंग अ लॉट. बट देखते हैं इस बार यहाँ पर टीम 4 Tribes के फैंस कितने ज़्यादा वोट्स लेके जाते हैं.
पिछली बार हम लोगों ने देखा था they were having 20,000 plus votes. तो जाइए जाके अभी जाके अपनी टीम को वोट करिए एंड इट्स रियली इजी टू वोट. अगर आप लोगों को वोट करना है तो आपको यहाँ पर #4T लिखना पड़ेगा यहाँ पर कमेंट सेक्शन के अंदर. आप लोगों को अगर 4 ट्राइब्स को सपोर्ट करना है, इफ यू गाइस वांट टू सपोर्ट T2K esports, so hashtag करके T2K esports लिखिए. दैट्स ऑल. आई मीन बहुत ज़्यादा इजी स्टेप्स रहेंगे एंड स्पेशली द टीम्स आर लुकिंग गुड. देखिए आज यहाँ पर हम लोगों को मेजॉरिटी ऑफ द पाकिस्तानी टीम्स देखने को मिल जाएंगी एज, क्योंकि ग्रुप ग्रीन का यहाँ पर आगमन हो जाएगा आज के दिन के अंदर. देखते हैं 4 ट्राइब्स वारगे SCYTES स्पोर्ट्स आज के दिन के अंदर कैसा परफॉर्म करती हैं. Well, there are going to be a lot of expectations coming in, a lot of hope for sure for the side of 4 tribes. Of course, they were very close to taking down Flash in phase 2 grand finals, right? They were both on 177 point towards the last day, but then it was like, you know, Flash was one of those vehicles that had the sports mode enabled, and they just went away with the talk that they had. It was insane to watch. I do feel bad for 4 tribes though. They did perform really well, but I still feel like, you know, these teams, most of the teams, as a matter of fact, are trying their, you know, new strategies, new players, especially coming in. I mean, we did see Flash pull up the a different roster altogether the other day around. So it's amazing to see that these teams and these players are getting the experience that they need. And once again, huge shout out to 141 Esports for making this possible. This is PUBG Mobile Asia Battle Wars Chapter 3. And if you haven't subscribed, well, folks, you're missing out on so much. So make sure to subscribe and hit at that bell icon. Also, make sure to follow 141 Esports on Instagram so you stay updated with day-to-day updates. And just in case you miss a stream, or if not, even though you want to get updated with the future tournaments as well. And well, yeah, for all of that, you probably do want to check out the Instagram page of 141 Esports. We have the links down in the description. But going back to the 4 tribes, right? I mean, they've changed players a couple of times. The one player that has been outperforming everyone, in my opinion at least, has to be IQQ. I mean, I get it. Falk's really good. Nock is amazing too. Huzaifa, yes, top notch. But it just feels like, you know, IQQ has that, what do you say, has that discipline when it comes to those fights. And I think that is what makes 4 tribes the scary team that they are. I mean, absolutely. I mean, 4 tribes and every player out there, they are just performing invincibly. And as we were talking about IQQ, yes, absolutely, I'd agree with you 100% that he is way too consistent with his gameplay. And especially when it comes to his, like, you know, in-game sense, it's all about that IQQ. I mean, IQQ just अपने नाम को यहाँ पर बिल्कुल बयां करते हैं कि IQQ नाम है तो IQ भी बहुत ज़्यादा हो रहेगा. हमने उनकी तरफ से बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन क्लचेस देखे हैं. इट्स बीट 1v2, बीट 1v4. 4 ट्राइब्स के चारों खिलाड़ी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन परफॉर्म करेंगे. एंड देखते हैं आज के दिन के अंदर यहाँ पर उनकी परफॉर्मेंस इस लाजमी तरीके से हम लोग को देखने को मिलेगी एज, राइट. एंड आई जस्ट कैन नॉट वेट मैन. मेरे को यहाँ पर पहला मैच का आगमन बस देखने को मिल जाएगा बहुत ही जल्द, क्योंकि पहला मैच एज होने जा रहा है रोंडो का मुकाबला. एंड हम लोग को पता है कि टीम 4 ट्राइब्स आउट ऑफ 3 मैप्स, राइट, बीट एरांगल, रोंडो एंड मिरामार, 4 ट्राइब्स का यहाँ पर सबसे ज़्यादा बेहतरीन मैप इज गोइंग टू बी रोंडो. For sure. I mean, it's the one map that Rondo is very important for 4 tribes and Team Secret as well, if you ask me. I still feel like the only team that can, you know, be at that level of 4 tribes in terms of its point accumulation, right, has to be Team Secret. And I feel like if 4 tribes are Superman, their kryptonite is Amin's esports, is what it feels like, you know, with Talhi performing really well. And at the moment, they don't have Amins here at the moment, which is kind of unfortunate, which also I believe we did miss out last time. We were talking about teams that, you know, were replaced here, and Amins is one of those teams. So, yeah, I mean, we're missing out on some, but it gives opportunities to other teams and other regions, especially the Korea region now. Let's talk about them for a second. FN Sejong coming in. Deeples here, brilliant performance on day 2. Yeah. Now, FN, on the other hand, day 1 was amazing. Day 2, not so much. I can't really say that they had an amazing day, but there was some improvement for the 11,
right? In terms of point accumulation, in terms of the overall gameplay, it just feels like the 11 are finally taking those 11 steps towards success. Yeah, absolutely, why not? But let's just have a look on the overall rankings, क्योंकि हम लोगों ने कल के दिन के अंदर देखा था इन टीम्स ने इन ओवरऑल रैंकिंग्स के अंदर बहुत ही ज्यादा भूकंप मचाया था। एंड स्पेशली मैं बात करूं टीम डीके एंड टीम एफएन, ये दोनों ही कोरियन टीम्स ने बहुत ही ज्यादा बेहतरीन परफॉर्म किया था एंड अच्छे पॉइंट्स कैपिटलाइज किए थे कल के दिन के अंदर। बट एज इट्स गोना बी अ न्यू डे, इट्स गोना बी अ न्यू डॉन, सो लेट्स सी which team will be coming on top and यहाँ पर टॉप 5 के अंदर यहाँ पर अपना खिताब बना के जाएंगे। एंड मैं स्पेशली बोलूंगा, देखिए यहाँ पर जो भी टीम्स पहले पेज पर है एक बहुत ही ज्यादा कंफर्ट जोन के अंदर है, दूसरा पेज इट्स गोना बी अ येलो जोन एंड थर्ड पेज इट्स टोटल रेड जोन, राइट? जो भी टीम्स यहाँ पर अभी आज के दिन के अंदर सेकंड पेज पर है उन लोगों को अपना टॉप 18 का स्पॉट कायम करके रखना पड़ेगा। लास्ट में तरीके से यहाँ पर चिकन डिनर्स निकालने पड़ेंगे, नहीं तो शायद से हो सकता है बहुत ही ज्यादा बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। टॉप 18 के अंदर नहीं रहे सो वो रेड जोन के अंदर जा सकते हैं, जहां पर उनका क्वालिफिकेशन ग्रैंड फाइनल्स के अंदर नहीं देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर हमारे पास में बहुत सारी टीम्स है, मजीद टीम्स अभी तक यहाँ पर इस लॉबी के अंदर रहेंगी। सो कोई ना कोई तो ऐसी टीम रहेगी ना जो यहाँ पर टॉप 18 के अंदर रहेगी, और बाद बाकी यहाँ पर हमारे 18 से जितने भी ज्यादा फॉलो ऑफ होंगे टिल 28 टिल 27, वहां पर अपने को कुछ टीम्स थर्ड पेज पे भी देखने को मिलेंगी। सो इट्स ब्यूटी of all PUBG Mobile era, it's the beauty of Asia Bible chapter 3rd, and it's all about that competition. So teams on the first page, congratulations to you all. It's all about this consistent gameplay into the upcoming days. 4 दिन और बाकी है, सो और उन दिन के अंदर मैं बोलूंगा कंसिस्टेंट गेम प्ले दिखाएं एंड इजीली यहाँ पर अपने आप को क्वालिफाई करें। That is probably going to be the go-to strategy. You don't really want to have those second thoughts coming in, that pressure, that added pressure of coming up to the top 16, top 18, depending on the fan favorites. But as you said, top 16, top 18 is where we will be looking out for now. Grand finals, though, of course, you want to be the number one. And the one team that probably is on everyone's mind right now, and even if you don't talk about them, you will have to acknowledge them, is the side of Flash. And it's just that they've been really good. Now, back-to-back champions for Phase 1, Phase 2. That is insane. That's a feat in itself. But now if they get Phase 3 to their name too, I don't think any other team has been able to do such a run in any championship, or at least nothing that I've heard of. That's true, and let's just have a look on the second page of the overall rankings, जहाँ पर टीम्स सबसे ज्यादा स्ट्रगल करती हुई एंड देखते हैं यहाँ पर आज के दिन के अंदर टीम्स यहाँ पर टॉप 18 के अंदर अपना स्पॉट कायम कर पाती है या फिर नहीं है, क्योंकि teams like 11 and team APG, I did not expect this kind of performance coming in from that team, right? And team APG especially, उन लोगों का performance, it's devastating right now. I did not expect them to play like this, Edge. Never in my dream, because team APG is one of the most potential team, and right now they're struggling the most into the lobby with team 11 from Korea. I mean, Team 11 it's on a really unfortunate journey at the moment. They've got 8 points on day number 1, 20 points into day number 2. I mean, as I said, decent decent improvement, but just not enough. 20 is not a good number. It's better than 8 though, so that's why I was like, yeah, we'll take it. But now, as we take a look at day 3, let's see how things go from here on forward. Overall rankings, these are the 18, and now we will have 9 more teams joining in. That is going to be interesting to see, because now Group Green coming up, 4 tribes joining in the party. WARGYE, we have ASI 8 now changing groups. Let's talk about that for a second. ASI 8 have been the counterparts for a lot of these teams from the same region, of course. Right, they've been putting up some numbers of their own, but at the same time, they've been the one team that everyone's kind of afraid to take down, because you never really know how ASI 8 is going to end up performing. There are games where they absolutely get destroyed, and then there are games they absolutely destroy. So ASI 8 coming into Group Green along with 2 Pakistani teams, as I said, 4 tribes and Team WARGYE. This is going to be interesting. Now this is going to be a very
important group for the region, of course, because there are 3 teams here, and I believe apart from them, we only have SCYTES, and SCYTES, they're performing decent. It's not a great display of skills, but it's still going good. So SI now jumping in the party, I feel like we will be taking a look at some more events action coming in from the region. Of course, Team WARGYE, I mean, we don't have to talk about them. All I'm saying is #AI. yeah, absolutely. I mean, जब भी यहाँ पर WARGYE एक बेहतरीन चिकन डिनर निकाल के जाती है, देखिए, it actually feels like AI sometimes, क्योंकि प्लेयर्स यहाँ पर एकदम से जो अपना ग्राफ के ऊपर स्टैंडिंग्स लेके आते हैं, जिस तरीके से यहाँ पर चिकन डिनर्स निकाल के लेके जाते हैं, it does not feel like that Team WARGYE is playing anymore, but it's Team WARGYE, right? So #AI for the win, #WARGYE for the win, and let's just see which team will be crowning on the first map, and it's gonna be Rondo. देखिए, एशिया वाइल्ड चैप्टर 3 है. अगर आप लोगों ने अभी तक यहाँ पर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, और जाके अपने PUBG प्लेयर्स या फिर टीममेट्स के साथ में हमारी स्ट्रीम को नहीं शेयर किया है, तो जाइए जल्दी से उनको भी बोलिए, cause it's Asia Battle chapter 3. It's not a tournament. It's a whole festive of intense fights incoming. It's all festive of emotions. So जल्दी से जाइए, शेयर करिए एंड बताइए कि हम लोग यहाँ पर कुछ ना कुछ हर दिन नया सीखते हैं, टीम से सीखने को मिलता है. Whenever we analyze all these teams, even you can implement their strategies even in your competitive scrims. Practice scrims, practice games, and maybe in classics. And जाइए जल्दी से आके शेयर करिए. That's what I'm saying. And subscribe करिए चैनल को. Edge. It's going to be the first map of our day into the map rotation pool. 6 matches के अंदर, 6 matches आज के दिन के अंदर हम लोग को देखने को मिलेंगे. 3 मैप्स आज के मुकाबले के अंदर, रोंडो, इरांगल, मिरामार, एंड दोबारा से हम लोगों को रोंडो, इरांगल, मिरामार देखने को मिल जाएंगे. 6 मैचेस, बहुत ही ज्यादा एक्शन पैक्ड मैचेस होने जा रहे हैं. पहला मैच तो मैं बोलूंगा हर वक्त यहाँ पर जो एनर्जी है टीम्स की हाई रहती है, हमारी हाई रहती है, एंड स्पेशली ऑडियंस वाचिंग आउट देयर, द एनर्जी इज फीलिंग गुड. सो देखते हैं यहाँ पर कौन लेके जाता है चिकन डिनर को. नो प्रेडिक्शंस व्हाटसोएवर बिकॉज़ इट्स प्लेऑफ्स क्वालिफायर्स. Playoff qualifiers, and I think it's about time. I think it's time for us to jump in to the map of Rondo here for the first time for Group Green. We will be taking a look at how they perform and how things turn out here. This is Phase 3 playoffs, ladies and gentlemen. Day number 3, match number 13. 6 more matches lined up for you guys, so don't go anywhere. Make sure you have your snacks refilled, your drinks all ready to go. Because now the players are definitely ready to go, and we are dropping down towards Jeddah City. Absolutely. And now, the flight path on our screen. Stadium, Distract New York's factory, Xiaoting, Danshan, and Jeddah City. कुछ ऐसे इलाके रहेंगे जहाँ पर टीम्स आराम से ग्लाइड कर सकती हैं, यहाँ पर फाइट्स के अंदर आ सकती है. 4v4 एनकाउंटर्स हमने को आज के दिन के अंदर देखने को मिलेंगे. ग्रुप ग्रीन जैसे ही ज्वाइन किया है, सो उनकी एक बारी टीम्स के ऊपर भी नजर डाल लेते हैं, जो भी ऑडियंस अभी आज के दिन के अंदर ज्वाइन करी है. बूम esports, VOIN esports, टीम NS, टीम सीक्रेट, DRX गेमिंग, टीम 52 esports, 4 stripes, WARGYE एंड ASI esports यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी. एंड मैं बोलूंगा, देखिए 4 पाकिस्तानी टीम्स हैं, उसमें से 3 पाकिस्तानी टीम, आई एम टॉकिंग अबाउट टीम 4 स्ट्राइप्स, WARGYE एंड ASI esports यहाँ पर उतरती है बेसिकली इन द रीजन ऑफ डिस्ट्रैक्ट एंड न्यूयॉर्क फैक्ट्री. अभी के लिए यहाँ पर हम लोग को टीम WARGYE का एक डिफरेंट स्प्लिट देखने को मिल जाएगा. हालांकि वहां पर ये लोग, मैं बोलूंगा कि एक रोटेशन करते हैं न्यूयॉर्क फैक्ट्री के आसपास, एंड वहां पर किल्स एंड पॉइंट्स लेने का ट्राई करते हैं. बट हम लोग एक बार नजर डालेंगे नौके के ऊपर, हाथ में मिल जाएगी एस्ट्रल के एक ऊजी भी मिल जाएगी, एंड यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं मजीद प्लेयर्स न्यूयॉर्क फैक्ट्री एंड डिस्ट्रैक्ट के इलाके में ऊपर T24 OP and IQQ and फलक के साथ खेलते हुए. एंड दिस इज गोइंग टू बी दैट OG लाइनअप ऑफ टीम 4 ट्राई स्पॉट. यहाँ पे प्लेयर को किया जाएगा डाउन, यहाँ पर किया जाएगा, एंड थॉमसन के साथ में पहला यहाँ पर एलिमिनेशन पॉइंट अपने काबू में करते हुए टीम 4 ट्राइब्स का यहाँ पर किंग बन सकते हैं. दोबारा से न्यूयॉर्क फैक्ट्री के ऊपर डिस्ट्रैक्ट के इलाके में यहाँ पर हम लोग को एक और टीम देखने को मिल जाएगी. बट न्यूयॉर्क फैक्ट्री में देयर आर 4 टीम्स बट 1 विनर. कौन सी टीम रहेगी? DRX. फाइनली यहाँ पर मैं इस टीम का भी गेम प्ले देखना चाह रहा था, बट अभी FN शोजोंग के साथ में यहाँ पर फाइट के अंदर आती हुई टीम 4 थ्रेड्स, एक प्लेयर यहाँ पर इनके इलाके के अंदर, यहाँ पर IQ ने स्पॉट किया प्लेयर को. 6x रहेगा हाथ में, डाउन यहाँ पर प्लेयर को किया जाएगा, एंड दूसरा एलिमिनेशन पॉइंट अपने हाथ में. एंड टीम 52 का वो जो प्लेयर है स्पॉट यहाँ पर शायद से किया जाएगा एक और एलिमिनेशन पॉइंट. 3 एलिमिनेशन पॉइंट्स यहाँ पर, बट टीम FN शोजोंग यहाँ पर टीम 4 थ्रेड्स के इन दोनों खिलाड़ियों के अगेंस्ट बहुत ही जल्द फाइट लेगी.
BT are already down to one player. 52 are down to 1-2. Now these teams have already lost a lot of players, and they got to be very, very careful how they play from here. And in the midst of all this, we actually did forget to talk about one player on the side of 4 tribes. It was T24. I mean, we were talking about Noki, IQQ, Fala, Kuzeifa, but T24 has been one of those pillars for the side of 4 tribes as well, who has been delivering day in and day out. I mean, okay, sure, you can't expect greatness from him every single time, but you can expect good things every single time. He will perform consistently decent, and I think that is what the team needs. And 4 tribes, they're definitely going to be happy that they have T24 in their squad. And at the moment, DRX will be looking to take down one more point in their favor. They're up to 3 now already, pretty early at Neox Factory this time. It's kind of back to how it used to be, in the grand finals in phase 2 and phase 1, where we do see usually 4 tribes coming in. And I mean, the last couple of days, Neox Factory has been a little dry, but now it's filled with the blood of all these players, metaphorically, of course. Exactly. But Team 4 Tribes 3 एलिमिनेशन लेने के साथ में मैं बोलूंगा DRX, उनकी भी परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन। देखिए DRX का यहाँ पर पहला दिन यहाँ पर होने जा रहा है। पहले कुछ मिनट्स के अंदर यहाँ पर हम लोगों ने उनकी परफॉर्मेंस देखी और वो चारों प्लेयर्स फाइनली एशिया बाल चैप्टर 3 के सर्वर में आते हुए एंड स्पॉट किया जाएगा एफ के प्लेयर को गोस्ट। इन लोग जिस सामने फलक के हाथ में एस्ट्रल के तैनात यहाँ पर दोनों ही प्लेयर्स रहेंगे। फाइनल यहाँ पे लोग जिस सामने स्पॉट यहाँ पे प्लेयर को किया जाएगा डाउन यहाँ पे करने की दरकार और डब्बे के लिए फलक यहाँ पे थोड़ा सा पीछे जाते हुए थोड़ा सा रिट्रीट करेंगे। देखिए फलक, हम जानते हैं कि उनकी क्लोज रेंज पावर इज रियली गुड, बट अभी के लिए यहाँ पर टीम के साथ खेल रहे, कोऑर्डिनेटिव है बहुत ज्यादा एंड कोऑर्डिनेशन एंड सिनर्जी बहुत ज्यादा अच्छी, क्योंकि एनालाइज हम लोगों ने जैसे किया था फलक कभी कभार ज्यादा ओवर एग्रेस करते हैं, उस ओवर एग्रेशन को यहाँ पर कंट्रोल के अंदर रखते हुए, बट IQ यहाँ पर डाउन हो जाएंगे। यहाँ पर 3 एलिमिनेशन लेने के बाद में कोई एलिमिनेशन के अंदर इजाफा अभी के लिए यहाँ पर नहीं रहेगा। टीम ऑफ 4 ट्राइब्स SCYTES के अगेंस्ट एक और पाकिस्तानी टीम थोड़ी सी क्रम्बल यहाँ पर होती हुई एक प्लेयर के डाउन होने के बाद में मैं बोलूंगा शायद से थोड़ा बहुत पैनिक सिचुएशन बन सकता है। जी हाँ, उसी के साथ में फलक यहाँ पर ओपन के अंदर सोलो पकड़े गए थे, शायद से रिटेलिएशन बिल्कुल आएगा। ग्रेनेडियर यहाँ पर SCYTES का वो खिलाड़ी बनता हुआ, बट एफएन कुछ प्लेयर्स यहाँ पे डाउन होते हुए। DRX गेमिंग द टीम फ्रॉम कोरिया स्पोर्ट यहाँ पर T24 को किया जाएगा आगे की तरफ है, तो बेहतरीन नॉकआउट यहाँ पर T24 दिखाएंगे, बट ही इज गोइंग टू गेट आउट नंबर। दिक्कत यहाँ पे बन सकती है। जी हाँ, बिल्कुल डाउन यहाँ पे T24 को किया जाएगा। 4 ट्राइब्स का वो आखिरी खिलाड़ी नॉक करेंगे, रिकॉल अपने प्लेयर्स को एंड शायद इंस्टेंटली टीम 4 ट्राइब्स बैक ऑन द फीट्स। क्या यहाँ पे रिकॉल कर दिया जाएगा इजीली, बट रिकॉल टावर इज रियली क्लोज येट टू फॉर। He's making a run for it, so it's okay. It's understandable, and it is a decent, call to be made. And DRX also going for that. We call immediately, and look at Trey. He's gonna get one, and he get more. Gotta be careful. Preetham now here, very close in the vicinity. The shotgun out in the open. Preetham gets taken down to DRX. Making work. K2 might be the only one standing now here on the side of ASI 8 in the region. Because I believe, apart from him, the other players really far away. But in the meanwhile, Nongshim, Red Force are gone. 18 position, 3 eliminations. But can we go back to the fight between ASI 8? That is what I want to see. ASI 8 and DRX. It looks like DRX might just be the one coming out on top. Or maybe not, because I already see the recalls being made by the players on the side of ASI 8. They will be back to 4 players as there is a self-finish coming in by TRE on the side of DRX. That's true. Team HKT, Team Hong Kong. एक ग्रेनेड यहाँ पर उनके जो सामने आके भले गिरा था, बट शायद से नॉकआउट अभी तक उस ग्रेनेड से आएगा नहीं। बट प्लेयर्स को पता है, स्काईफोर्सेस के प्लेयर्स को पता है, शायद से it's going to be Team WARGYE. Absolutely, it's going to be Team WARGYE. कितने प्लेयर्स के साथ में है? अभी भी यहाँ पे 4 प्लेयर्स हम लोग के जिंदा रहेंगे। एक पहला एलिमिनेशन यहाँ पर हम लोग के हाथ में रहेगा और हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं आगे की तरफ बढ़ेंगे। स्काईफोर्सेस की सांचर हमारी स्ट्रिंग के ऊपर एक ग्रेनेड यहाँ पे जाता है, बेहतरीन ग्रेनेड यहाँ पे रिकॉर्डलेस की तरफ से डाकू के ऊपर डाउन किया प्लेयर को। एस्ट्रल के से यहाँ पर कंफर्मेशन भी यहाँ पर ले लिया जाएगा। मजीद प्लेयर्स अभी भी लॉबी में, बट देखिए यहाँ पर जिसके साथ में रेज बेहतरीन तरीके से एस्ट्रल के से एक और नॉकआउट यहाँ पर अपने हिस्से में लेके जाएंगे। स्पॉट यहाँ पर प्लेयर को कर लिया जाएगा। ये जो 1v1 है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। रेज को भी रियली केयरफुल। ओह, HKG is gone too. This is turning out to be another disastrous of a start for the side of SKG.
SKYFORCE on the other hand, they will be good for multiple here. Godless will be up to 3 now, and will be going for that revival on to 24. Before they get back, Sancho on the map, you can see he's already going to be recalled. But SKC with 55 points on the third day of the playoffs here, things are looking not so good for them. You can see the circle as well there. I mean, it's really far away for a lot of these teams, especially SKYFORCE, C2K, really far back to Boom Esports on the other hand. They can make their way in pretty safely because there's no one in their way. Hangshan is open, Tin Long Garden's open. There's so much space for them to work with. But for teams like C2K or SCYTES, as a matter of fact, they might have to face off a couple of teams while they make their way back in. Look at Ajaya though. He still has a recall tower, but there is DRS in the vicinity. As we now take a look at Team Flash once again, not the main roster. I want to see. I actually do want to see how they perform here in this lobby. Yep, new players incoming. The performance क्या यहाँ पे सेम रह पाएगी या फिर नहीं? ASIT esports वर्सेस टीम FN, यहाँ पर प्रीतम बेहतरीन स्प्रे यहाँ पर लेंगे डाउन, यहाँ पे प्लेयर को किया जाएगा। इनको 16 चला रहे हैं एंड अभी के लिए प्लेयर्स को जरूर स्पॉट तो किया गया था, बट आगे शायद से जोन के अंदर जाने की तैयारियां बनती हुई हैं। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ से जोन के अंदर जाने की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। देखते हैं यहाँ पर जोन के अंदर कब तक यहाँ पर पहुंच पाएंगे इन लोग। जो सामने रहेगी लेक ब्रिज भी रहेगा, सो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई गेस एच जोन के अंदर यहाँ पर टीम SIT इस एक बेहतरीन रोटेशन करेगी, बट दे आर आउट ऑफ द जोन 3000 मीटर्स, राइट? तो जल्दी यहाँ पर जोन के अंदर जाना पड़ेगा। दिक्कत यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बन सकती है इन लोग के लिए, नहीं तो क्योंकि जो जोन का डैमेज है वो भी और भी ज्यादा बढ़ेगा जैसे जैसे यहाँ पे स्टेजेस एंड फेजेस बढ़ेंगे। एंड उसके बाद में यहाँ पे फर्स्ट स्टेज अप्लाई करनी पड़ेगी, बैंडेजेस यूज करनी पड़ेंगी जोन के बाद। पर जब जोन के अंदर आएंगे अगर फाइट के अगेंस्ट आए तो रिसोर्सेज से यहाँ पर एग्जॉस्ट हो जाएंगे। सो ASIT esports, let's see what's going to be the storyline for this team, but right now edge मैं अगर स्पेशली बात करूं हमारे इस गेम की स्टोरी लाइन की, इस गेम के यहाँ पर मैं बात करूं सो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन। बट फलक ने स्पॉट किया गॉडलेस को, स्प्रे यहाँ पर लिया जाएगा। ओ फलक ही whiffed a little bit गॉडलेस के ऊपर, बट क्या नॉकआउट आएगा या अपनी? फिर से शॉट लिया गॉडलेस, इज रियली लो टू द HP, ही रिकवर्ड। फलक यहाँ पर कहीं ना कहीं लग तो रहा था कि शायद से वो नॉकआउट नहीं मिलेगा, नॉकआउट हो सकते हैं, नहीं रिटालिएशन के अंदर नॉकआउट आ जाएगा। एंड द थिंग आई वाज टॉकिंग अबाउट एज कि टीम 4 स्ट्राइप्स के 3 खिलाड़ी यहाँ पर हुए हैं रिकॉल, राइट? सो नॉकी का सिर्फ और सिर्फ रिकॉल बचा हुआ है, बाद बाकी यहाँ पर प्लेयर्स अगर नॉकआउट हुए तो सीधा फिनिश ऑफ होंगे। एंड फलक he is surviving solo right now. Team 4 tribes, बाकी के 3 players कहाँ पर? मैं एक बारी मिनी मैप पर जरूर देखना चाहूंगा। 3 players, okay, बाकी के players they are coming here and they are back with a bang and the force is here, Edge. They're definitely back with the forces. As Funk is going to be bleeding at the moment, they will probably get the revival back up. They don't really need to worry about their situation too. I mean, with only 3 eliminations, they will probably be looking up to get more. As the game progresses, we're up to 11-minute mark almost. 16 teams and 63 players still in the server. Oh, this is Noki. Okay. Oh, this fun. Nice name there coming in. Going in, Falak is gone. एक प्लेयर यहाँ पे डाउन हो तो नॉकी पीछे से एस्ट्रल के कई शॉट्स लेते हुए शायद से इनके ऊपर भी बहुत ही ज्यादा डैमेज आता हुआ। 3 एलिमिनेशन पॉइंट लेने के बाद में नियोक्स फैक्ट्री के बाद में थोड़ा बहुत स्ट्रगल करते हुए IQ स्पॉट करेंगे प्लेयर को। यहाँ से रिटेलिएशन जरूर आना चाहिए, रिटेट नहीं करेंगे, फाइट लेने का पूरा ट्राई करेंगे। नॉकी स्पॉट यहाँ पे प्लेयर को किया तो गया है, बट एस्ट्रल के कब तक यहाँ पर इनसे फ्रेन करेंगे? इसी के साथ में थोड़ा सा बैक ऑफ करते हुए स्पॉट यहाँ पे प्लेयर को किया अगेन। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं एस्ट्रल के दे आर जस्ट रेनिंग सुप्रीम ग्रेनेड्स यहाँ पर आ रहे हैं। नॉकी एक और प्लेयर को यहाँ पे डाउन किया, गॉडलेस he is gone, he is bleeding and SKYFORCE का वो जो आखिरी खिलाड़ी है उसको डाउन कर पाएंगे अपने। एक और यहाँ पर बेहतरीन 1v2 नॉक दिखाएंगे and SKYFORCE का आखिरी खिलाड़ी रहेगा शायद से रिकॉल टावर के ऊपर। एंड टीम 4 tribes they are back to their knees, but the thing is Edge, T24 OP and Falak they are gone from the match, no recall available. Oh my god, that is gonna be hurting it for sure. Hurting them for sure coming in. But the only team that actually did surpass, only 2 teams actually that did surpass the 100-point marker right now are FN. In this one, we don't have D plus Kia coming in today's matches, so FN will be trying to get some numbers on the board so they can
surpass D plus Kia pretty early and then build up the lead. As DRX, they're having one hell of a match here. 11 eliminations with 4 players standing. I mean, Trey is just popping off right now. 7 eliminations, already contending for that MVP spot. But 4 tribes now with only 2 players standing, 6 eliminations for themselves. That's a decent start, but now they need to slow down a little, capitalize on getting those position points as well. That's true, but DRX, आप यहाँ पे देखिए 11 एलिमिनेशन यहाँ पर DRX के पास में रहेंगे और अभी सिर्फ तीसरा जोन है। सो मैं वही बात कर रहा था, जैसे ही यहाँ पर एक कोरियन टीम्स आई हैं एशिया बास्केटबॉल चैप्टर 3 के अंदर, ये जो कंपटीशन का ग्राफ है ना और भी ज्यादा बढ़ चुका है। देखिए 11 एलिमिनेशन, सो आप यहाँ पर समझ सकते हैं डोमिनेशन यहाँ पर न्यूयॉर्क फैक्ट्री से स्टार्ट हुआ एंड DRX गेमिंग, दिस इज द टीम आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू एंड मैं इन्हीं का गेम प्ले देखना चाहता था। एंड चारों प्लेयर्स दे आर हेडिंग टुवर्ड्स अगेंस्ट टीम PTR कोरिया वर्सेस इंडोनेशिया। दोनों ही टीम्स यहाँ पे पावर हाउस से पहले प्लेयर को यहाँ पे डाउन किया जाएगा। नो दिक्कत यहाँ पे शायद से बन सकती है, बट इसके साथ में रिटालिएशन नॉकआउट, मजीद प्लेयर्स यहाँ पर अभी भी लॉबी के अंदर 57 प्लेयर्स आर अलाइव एंड एलिमिनेशन भी यहाँ पर टीम BTR का हो चुका है। शाका वार्ग्ये की तरफ से सोलोमन स्टैंडिंग मोलोटोव इज लुकिंग गुड, पीछे आएंगे, थोड़ा बहुत फॉल बैक करेंगे। एक और नॉकआउट यहाँ पर वार्ग्ये का आखिरी खिलाड़ी, यहाँ पर शायद से कयामत बन सकते हैं अपनी एनिमी टीम के ऊपर। ग्रेनेड यहाँ पर हाथ में रहेगा। टीम 52 के अगेंस्ट वाली फाइट है, ये जो राइवलरी है इन दोनों ही टीम्स की। बेहतरीन ग्रेनेड एंड शाका दोबारा से ग्रेनेड हाथ में रहेगा। एस्ट्रोल की यहाँ पर रहेगी तो शायद से बेटर हो सकता है। यहाँ पर आगे तरफ बढ़ेंगे, एस्ट्रोल को स्पॉट हो जाएगी एंड शायद से उस प्लेयर की टीम 52 की जो एस्ट्रोल के रिलोड पे जाएगी एंड रिलोड भी कर ली जाएगी। लेट्स से शाका एंड टीम 52 के बीच में जो राइवलरी है दोबारा से यहाँ पर बनती हुई। एजेंट 47 ही वो आखिरी खिलाड़ी है और टीम वार्ग्ये के अगेंस्ट 1v4 किया था। ये जो फाइट है बहुत ही ज्यादा स्ट्रेच होगी। पोस्टेड यहाँ पे अप्लाई कर दी गई है। एक अगर एसवाल्के का फटका तो बाहर और इसी के साथ में एजेंट 47 को करते हुए बाहर। बेहतरीन रिटालिएशन, बट टीम 52 का अभी भी एक खिलाड़ी जिंदा रहेगा। शाका रिवाइव करेंगे, चौथा जोन है एंड एक बार आप देखिए कि कितना ज्यादा डैमेज यहाँ पर पड़ता हुआ जोन के बाहर। तो जोन के अंदर जाना पड़ेगा, जल्दी से फर्स्ट एड लगानी पड़ेगी, रिटालिएशन करना पड़ेगा जोन के अंदर और इट्स गोना बी रियली बैड रिट्रीट। दे गोना डू इट रियली फास्ट, समय नहीं है इतने ज्यादा। हम लोगों ने देखा था कि IQQ he was being the dominator of the lobby right now, डोमिनेशन का भी टाइटल लेके गए थे। स्काई फोर्सेस को यहाँ पे एलिमिनेट किया, जोन के अंदर आने का ट्राई कर रहे थे एंड वहां पर उन्होंने करी एक बेहतरीन गेट कीपिंग सिनेरियो, बट अलिशबा AKA नॉके बहुत ज्यादा लो हो चुके थे HP के ऊपर। साइड्स के गोस्ट यहाँ पे जोन के बाहर डाउन होंगे एंड साइड्स भी यहाँ पर टीम पूरी की पूरी जोन के बाहर एलिमिनेट होती हुई। बट द थिंग इज एज कि टीम्स ने यहाँ पर अभी भी रोटेशन नहीं करी है। मैं एक बार मिनीमैप जरूर देखना चाहूंगा कि जोन का शिफ्ट कहां पर है। हार्ड शिफ्ट ही हम लोग को देखने को मिलेगा। ये जो PUBG मोबाइल का मेटा जोन्स आ रहे हैं ये टीम्स के लिए बहुत ही ज्यादा खामियाजा लेके आ रही है, स्पेशली IGLs दे आर हैविंग हेडेक्स राइट नाउ कि इतने ज्यादा बड़े हार्ड शिफ्ट्स और उसके बाद में यहाँ पर जोन के अंदर रोटेशन भी यहाँ पर उतनी ही कॉम्प्लेक्स देनी पड़ती है। सो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के टीम्स फाइट करती हुई, इट्स अ थर्ड पार्टी टूर्नामेंट, स्टिल यहाँ पर वो जो वाइब है अभी भी यहाँ पर ऑफिशियल टूर्नामेंट जैसी आती हुई है। I mean, of course, I mean, everyone's here to play, everyone's here to win and dominate for sure. Especially Team Flash. We talked about that, right? No matter what tournament, no matter what stage of the tournament, no matter how many maps are left, no matter if they have a chance to even qualify or not, they will always outperform. And yes, I know we were talking about Flash, but okay, see, here's the thing. This is not the main roster. Guys, please, this is not what I was talking about, but regardless, they will get eliminated pretty early. Unfortunately, it's 0 eliminations, and I think even though they're not getting any points into this one, I feel like they're getting the experience that they need, and it's gonna help them move, perform better later on. They've already done whatever that needs to be done in terms of winning championships here. Phase 1 and Phase 2 as DRX, well, they're going to be done too in position number 10. ASI 8 will finally get that revenge. They will be down to 3 players, but they'll be up to 9 eliminations as we are heading down to 17 minutes on the mark. 8 teams now, 27 players as Preetham gets taken down. T2K Maharani is the one to drop him. The 4 tribes are out of the picture too in the meanwhile. The meanwhile, yes, exactly. Team 4 Stripes बाहर होती हुई इस गेम से
नौके यहाँ पर मैं बोलूंगा वाटर बॉडीज के अंदर जिंदा थे, बट ज्यादा देर के लिए नहीं। एंड अपना किल यहाँ पर एनिमी टीम को ना देके यहाँ पर खुद वाटर बॉडीज के अंदर खत्म हुए। बट अजय क्लोज के अंदर आते हुए एसआईटी स्पोर्ट्स के क्रिप्टो को स्पॉट किया। अजय बेहतरीन स्प्रेज यहाँ पर लेंगे एंड टीम एसआईटी स्पोर्ट्स को बाहर करते हुए। टॉप 7 टीम्स एंड 24 प्लेयर्स इन द लॉबी। एज अजय दूर दराज से यहाँ पे शॉट आएंगे टीम सीक्रेट्स की तरफ से। टीम सीक्रेट्स कितने एलिमिनेशन यहाँ पे इन लोग के पास में रहेंगे? अभी 5 एलिमिनेशन है, ज्यादा एलिमिनेशन पॉइंट नहीं रहेंगे। बट टीम सीक्रेट्स अ वेरी डिफरेंट लेवल ऑफ अप्रोच, अ वेरी डिफरेंट लेवल ऑफ गेम प्ले, क्योंकि टीम सीक्रेट्स हालांकि यहाँ पर ट्राई करती है बहुत ही ज्यादा एग्रेस करने की एंड यहाँ पर शुरुआत में एलिमिनेशन पॉइंट्स उठाने के लिए मौजूद थे अभी भी लॉबी के अंदर जिंदा। बट टीम सीक्रेट्स उन लोग के पास में यहाँ पर इतने ज्यादा एलिमिनेशन पॉइंट्स नहीं है, तो शायद से मैं बोलूंगा खामियाजा थोड़ा बहुत भुगतना पड़ सकता है ओवरऑल रैंकिंग्स के अंदर। सो अच्छा रहेगा कि टीम सीक्रेट्स जिस तरीके से दूर दराज के एरिया से फाइट ले रही है, स्प्रेस ले रही है, थोड़ा बहुत क्लोजिंग करे डिस्टेंस को और वो 4v4 फाइट्स को एंगेज करे और भी ज्यादा एलिमिनेशन पॉइंट्स को यहाँ पे लेने के लिए स्टार्ट करे। क्योंकि एज if it's the map of Rondo, even if you get eliminated way too early, you need those elimination points, right? So why not focus on elimination points rather than getting that chicken dinner with decent points of 10 or 12 points? Maybe try to get 25 plus points. What do you think? 25 plus point is definitely gonna be a number decent enough, and let's see if they can pull it off. It's not gonna be easy, but getting those 20 plus points in any of the matches is good. 25 plus, even better. And Rondo is a perfect map for you to pull it off. Every other, maybe 10 to 15 is going to be your average score coming in. But Rondo is a one map where, once again, we've talked about it multiple times. You definitely go and prioritize those elimination points more than the chicken dinner itself. So let's see which team will be the one getting immense number of points, or will there even be any team getting immense number of points. At the moment, DRX is the highest in the server with 14, but they're eliminated already, so they will end on 14 too. As we have 7 teams and 24 players now, we're heading towards the final circle as stage 5 comes into play. That's absolutely true. RIQ यहाँ पे इस साथ में फाइट्स के अंदर आते हुए एंड पूरी स्पोर्ट्स के कुछ खिलाड़ी डाउन एंड कुछ खिलाड़ी ही नहीं, पूरी की पूरी टीम को यहाँ पर रास्ता दिखाएंगे लॉबी तक का एंड बाहर यहाँ पे वो पूरी की पूरी टीम हो जाएगी। पूरी स्पोर्ट्स द गेम इज ओवर फॉर देम। फर्स्ट मैच आई नॉट से कि ज्यादा डिसेंट था उन लोगों के लिए। 3 एलिमिनेशन पॉइंट्स यहाँ पे मिलेंगे और 4 पॉइंट्स के साथ में यहाँ पर बाहर होते हुए पूरी स्पोर्ट्स। बट वॉइन स्पोर्ट्स हमारी स्क्रीन के ऊपर बेहतरीन परफॉर्मेंस यहाँ पर पिछले फेजेस के अंदर दी थी। क्वालिफायर्स हो, ग्रैंड फाइनल्स हो, एंगेजमेंट, अर्लीस्ट skirmishes, VOIN esports is really good with everything. esports 6 एलिमिनेशन पॉइंट्स के साथ में यहाँ पर VOIN esports के ऊपर यहाँ पर नजर गाड़ते हुए स्पॉट यहाँ पर प्लेयर को भले किया था, स्प्रे यहाँ पर लिया जाएंगे पर दूर दराज से बहुत ही ज्यादा बड़ा डिस्टेंस अभी के लिए यहाँ पर बनता हुआ है। सो ये जो लॉन्ग रेंज की फाइट है, कब मिड रेंज के अंदर जाएगी, कब शॉर्ट रेंज के अंदर जाएगी, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द जोन एंड जोन का कैसा शिफ्ट आएगा। एज 30 more seconds and the zone is going to get shrinked more and more. The zone will collapse and the teams will collapse as well. That is true. We were waiting to see where the drift is going to come in. They got to be really careful. Yeah. Team Secret with 4 players still standing. 5 elimination points is what they have right now on this on this map. As C2K are looking to maybe take them down. Deals a bit of damage, but it's not going to be enough just yet. As we do have an elimination coming in. WARGYE are gone with 7 eliminations in 6th position. Top 5. RIQ, T2K, VOIN, Team Secret, and DRS. It's been a while since I've seen DRS in the top 4, top 5. Well, now is their opportunity to get that winner chicken dinner, or at least get some decent number of points for themselves. RIQ, I mean, the only team that is not a full-man squad is DRS. Everyone else, they have all of their members alive. So this is going to be chaotic and very messy as the circle comes to a close. At stage 6, the circle will start shrinking in the next 15 seconds. Stage 7 circle, I think it's going to be a bloodbath. Exactly. DRS Gaming, top 5 teams. RQ surviving with 4, T2K surviving with 4, VOIN esports surviving with 4, Team Secrets, they are also surviving with 4 players. So DRS Gaming एक ही ऐसी टीम रहेगी जिसके पास में यहाँ पे ज़्यादा players नहीं रहेंगे. I mean, they are having a decent number of players right now. 3 players यहाँ पर खिलाड़ी लॉबी के अंदर सर्वर के अंदर जिंदा. एक ही प्लेयर यहाँ पर बाहर हुए जो थे किला वाइटी. 6 एलिमिनेशन पॉइंट्स लेने के बाद में यहाँ पर
इस गेम के अंदर बढ़ोतरी करते हुए, बट आप यहाँ पे देख सकते हैं मजीद प्लेयर्स लोग जो सामने निकला है ना। सो यहाँ पे गेट कीपिंग सिनारियोज है जहाँ पर बन सकते हैं टीम डीआरएस गेमिंग के लिए अपने लिए अगर स्पेस बनानी है जोन के अंदर, या तो पूरा एक्सट्रीम राइट साइड से पूरा रोटेट करके जोन के अंदर जाना पड़ेगा, और एज दे हैव टू फाइट अगेंस्ट द टीम्स एंड प्लेयर्स एंड मेक द वे इनटू द जोन। The rotations and the path that they take is definitely going to be a big factor into how these teams perform. The grenade frag! I mean, he saw the frag right in front of him and he had to go down. Maharani once again with the Maharani grenade. Beautiful stuff there. As URS now, Cyclone's the only one standing. Will he be able to create a cyclone? Or will he be gone in the cyclone himself, created by the teams? Especially by T2K right now, putting screws to them. And he spotted Cyclone. Maharani cooking up another grenade. If that grenade lands in, I swear. If that grenade lands in right now. Okay, no. Another one? Maybe take two. Maybe take two works out. We'll see. At the moment. There you go. There you go. I'm telling you. This player is so good with the grenades. And I think calling it the Maharani grenade, I think it's justified at this point. As DRS, they're gone. Actually, beautiful grenades. Why not now putting the screws to the players inside of T2K who wanted to take them down and are being retaliated so hard. Maharani now the only one standing against three players instead of one. It's a 1v3. The players are trying to take him down. The jumping weapons come up, and VOIN will be the one taking on T2K immediately. In the blink of an eye, as VOIN will go back to that revival of the player. RQ, VOIN, Team Secret, top 3. Exactly. Top 3. One esports, they're looking good to be honest, and RQ they're also looking good, but Team Secrets यहाँ पर अंत तक अभी तक हम लोग को देखने को मिल जाएंगी, एंड डोमिनेशन सभी के सभी प्लेयर्स दिखाते हुए बेहतरीन परफॉर्मेंस यहाँ पर टीम सीक्रेट्स के, जो कि हम लोगों ने देखा था इन्होंने एक बेहतरीन तरीके से टीम फ्लैश के अगेंस्ट एक मैं बोलूँगा वो फैन फाइट जब करी थी उस ग्रैंड फैंस, बट वाज रियली गुड मैन, दैट वाज स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट कमिंग इन, बट इट्स गोइंग टू बी 2 इंडोनेशियन एंड 1 वियतनामी टीम। द जोन यहाँ पे ये जो 7वां फेज और 7वां स्टेज है जोन का श्रिंक इन करेगा 30 सेकंड के अंदर, उसके बाद में टीम्स एंड प्लेयर्स दे विल बी फोर्स्ड टू रेकनिंग टुगेदर दैट जोनल एडवांटेज। टीम आरक्यू इन लुक जस्ट अगेंस्ट वन ई-स्पोर्ट्स भी, सो टीम सीक्रेट्स ये भी हो सकता है गेटकीपिंग के सिनेरियोस बन सकते हैं, बट जोन के बहुत ही ज्यादा पास है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी, स्पेशली व्हीकल है सो दे डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। That vehicle will be coming into play soon. Maybe even sooner than I think. Secret 4, VOIN 4, RQ 4. All these 3 teams surviving with 4 players. As the circle comes in to effect, Team Secret will be happy to let these 2 teams face off against each other as RQ. They will take their first loss. They will go down to 3 players. Now at a disadvantage compared to the other 2 teams. Let's see if RQ can then withstand the force now from the side of VOIN. If they do manage to go for this play, as stage 7 comes to a close in the next minute, the next trip in the circle will be affecting most of these teams. As Genforce is spotted, Lulwu using the smoke to his advantage will be dealing a bit of damage, but not enough. And if he gets taken out of the circle, it's definitely not going to be any revivals anytime soon. Yep. And now sprays यहाँ पर टीम आरक्यू के ऊपर लिए जा रहे हैं, एंड अभी के लिए यहाँ पर दोनों के दोनों इंडोनेशियन टीम जोन के अंदर आ चुके हैं। सभी टीम्स में बोलूँगा ये जोन के अंदर अपना एक छोटा चंक लेके जरूर जाएंगे, बट टीम सीक्रेट्स अभी के लिए यहाँ पर 7 एलिमिनेशन पॉइंट्स एज। देखिए शायद से बहुत ही ज्यादा फोकस किया जा रहा था चिकन डिनर के ऊपर, पर ये जो ग्रेनेड आएगा जेटा की तरफ से, इट वाज अ वेल कुक्ड फ्रिकिंग ग्रेनेड। क्या टीम सीक्रेट्स के ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है, क्या टीम सीक्रेट्स के ऊपर स्लैमिन आ सकता है। वॉइन ई-स्पोर्ट्स एक नॉकआउट लेने के बाद में जोन के अंदर और भी ज्यादा आगे की तरफ बढ़ते हुए वॉइन ई-स्पोर्ट्स के पटेरो को स्पॉट यहाँ पे किया जाएगा, जंप कर रहे हैं, शायद से स्मोक यहाँ पे किया जाएगा, स्मोक स्क्रीन या स्मोक की दीवार अपने आगे बनाएंगे, उसके साथ में यहाँ पर जोन के अंदर जाने का ट्राई करेंगे। देखिए खामियाजा कभी भी आ सकता है, रेडी रहना पड़ेगा। टीम सीक्रेट्स के प्लेयर्स को यहाँ पर रिवाइव भी कर दिया जाएगा। एक ग्रेनेड से टीम सीक्रेट्स के ऊपर आएगा तो 2 प्लेयर नॉक ऑफ हो सकते हैं। जेटा will he go for the grenade, will he go for a perfect grenade one more time or not?
In secret, now on the move, getting into that circle is going to be a task in itself. They are going to be in a position where they will be able to take a look at both the teams that are in front of them at the moment, RQ and VOIN. VOIN have a really good chance of closing things off as well. They do have few utilities to work with, but Team Secret, they have some of their own. But RQ, they have the bigger arsenal when compared to the other teams. No one's closing in right now. Everyone's holding on to their positions. Team Secret now slowly, sneaky beaky, moving in closer and closer, trying to see if they can find any spots here. The 4-man squad against the 3 players inside of RQ. This is definitely good news for Team Secret and VOIN, but RQ, I mean, don't take them lightly whatsoever. They do have 3 HE grenades, 5 smokes to work with, so there is a good amount of utility that they can actually throw out onto these players. And RQ might be able to come out on top if they just play it right. Once again, vigilance and patience. That's all you need. You gotta be vigilant, that is for sure. 11 players यहाँ पर. 6, 5, 4, 3, 2, 1, and then the zone will close in. Grenades are reigning supreme on Team RRQ. Paragraphs was down. Smoke यहाँ पर किया जाएगा. Look at the सामने. Smoke screen. एक और grenade. That's a perfect grenade on face. धीरे धीरे करके ग्रेनेड वो जैसे आ रहा था उनके जिस सामने लग ही रहा था कि शायद से नॉकआउट आएगा. एंड बेहतरीन नॉकआउट यहाँ पर लिया जाएगा. लैपर को डाउन किया जाएगा. तरंग की तरफ से सीक्रेट्स आर गोइंग गुड. जेटा यहाँ पर आरक्यू के प्लेयर्स को डाउन करेंगे. शायद से आरक्यू का वो जो आखिरी खिलाड़ी है उसको भी डाउन किया जा सकता है. फायरन इज आउट ऑफ दिस पिक्चर राइट नाउ क्योंकि ये जो फाइट है सिर्फ और सिर्फ अभी वाइन esports और टीम सीक्रेट्स के खिलाड़ियों के बीच में. एक और ग्रेनेड यहाँ पर जू के कुछ शायद से डाउन कर सकते हैं, but he is surviving barely. जेनफोर्स यहाँ पर उनका जो किल है वो फाइनलाइज करते हुए फायर पे स्पॉट किया. शॉट्स यहाँ पर जा रहे हैं बट कनेक्शन यहाँ पर अभी के लिए. बट वाइन esports and team secrets, H, what do you think? Which team will come on top? Looks like Team Secret might just be the one closing this out with a chicken dinner here, as they are the ones with 4 players standing, 1 with 3, 1 bleeding. RQ, the last man standing, is going to be fired and it's going to be spotted as well. VOIN looking to maybe put the screws to him. At the moment, going for the revival immediately so they can have their 4th player back up against Team Secret, which is going to be very important. So it's a perfect opportunity for the player on the side of RQ to maybe go for the third party here, maybe steal an elimination or 2, maybe increase his chance of getting into a better position. I mean, a 1v8 situation, but I don't think the chicken dinner is going to be possible, but you never really know, as he will go down outside the play zone. RQ down in 3rd position, 9 eliminations. I mean, he will not be giving that point to anyone, but he will not be getting any points in terms of extra eliminations there towards the end. Now 4v4 situation, VOIN will be happy to put their all players back on their feet. Exactly, VOIN esports. 9 eliminations they are having. And players का पे डाउन किया जाएगा. पहले प्लेयर को यहाँ पर VOIN esports को पिक ऑफ करेंगे दोबारा से साथ में टीम सीक्रेट्स. दिस इज द मोमेंट टू स्ट्राइकिंग. यही यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी रहेगी. जो जोन है यहाँ पे ये भी क्लोज इन होता रहेगा. एंड द प्लेयर्स एंड द टीम्स आर फोर्स्ड टू रैक एंड क्लोज इन एज वेल. यहाँ पर तरंग को स्पॉट किया. एक और बेहतरीन नॉकआउट. 2 प्लेयर्स यहाँ पर बिगली द प्रेडेटर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा लो चाहिए. जेटा, ही इज द मैन, ही इज द मिथ राइट नाउ. Can he actually pull it off? Zeta की पर परफॉर्मेंस यहाँ पे बहुत ज्यादा बेहतरीन. बट नो, AUG हाथ में प्लेयर को स्पॉट किया जाएगा. एंड टीम सीक्रेट्स, wait, they got eliminated. Team, what? VOIN esports, they took the winner in a chicken dinner and they did eliminate Team Secrets. Man oh man, somewhere around यहाँ पे लग रहा था कि Team Secrets लेके जा सकती थी इस chicken dinner को, but VOIN esports, they took that winner in the chicken dinner. It happened in some fraction of seconds. That was a match. That was insanity right there. What an end to the match. Team Secret looked like they had it under control, but then VOIN esports, they steal it. And finally, it's good to see them back in action. Phase 2, phase 2 grand finals. It's been a little depressing if you ask me for them, but now coming into phase 3 playoffs, first day for them, and they are jumping in with a chicken dinner. Brilliant performance coming in, and this is what we wanted to watch. I mean, let me catch your brother too. Let me just calibrate what happened in the previous match. Did you speculate that thing happening? I did not, cause I did not. I did not have it. Even thought even a single person that Team VOIN esports might actually pull that chicken dinner off. Team Secrets, the positioning was good, the resources were good, the utilities were good, but Zeta,
he played amazingly. He's always been that key player. In terms of dealing damage, Zeta was always the star for the side of VOIN. And once again, he proved to be so. I mean, if you take a look at the match highlights, we did start off really well. SKYFORCE here accumulating a few points. You know, we thought Godless was going to be on a rampage there with the amount of eliminations that he was getting. And also a great start for the side of ASI 8. Just not a good end. And FORTRICE, this was the fight where Falak did get that point towards Godless, but that's about it. After that, they were immediately getting hunted by the players inside of SKYFORCE. But he did manage to get himself a couple more here. You can see Noki. Beautiful play. Takes control of that region, but then immediately other teams join in the party and ruin the day for the side of FORTRICE. Unfortunately, not a great performance. Unfortunate. But Team WARGYE, that was also good fight incoming. Shaka and Rage performed really good. But कहीं ना कहीं यहाँ पर मैं बोलूँगा खामियाजा थोड़ा बहुत भुगतना पड़ा. But it was a match to witness, man. We learned a lot, to be honest, and especially the audience watching out there. Hopefully आप लोगों को भी यहाँ पर आज के दिन के अंदर कुछ नया सीखने को देखने को मिला and witness करने को मिला, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर teams full fight को capitalize करती है, it's just insane, man. जिस तरीके से वॉइन esports के पोटैटो ने यहाँ पर एक बेहतरीन 1v2 किया, जूके को डाउन किया. जेटा कहीं ना कहीं यहाँ पर मेरे को लग रहे थे कि डाउन होंगे एंड हुए भी. उसके बाद में जूके को डाउन किया गया था एंड इनसेन लेवल ऑफ 1v2. देखिए हम यहाँ पे पीओवी के अंदर देख नहीं पाए हैं, बट पोटैटो he did an insane level of spray transfer there. यहाँ पर वॉइन esports के एक खिलाड़ी को डाउन करने के बाद में जूके के ऊपर जिस तरीके से यहाँ पर स्प्रे ट्रांसफर किया, it was on point. Great stuff coming in from VOIN esports. 4 eliminations for Zeta, 5 for Potato, 5. Poxy, I believe it was Woxy who changed his name to Poxy now, with 2 eliminations, and Defiant with 4 eliminations for himself. What is that? What does that sum up to? 13? 13 eliminations now coming in from them, and a total of 23 points is what they will be accumulating into this match. So a great start of the day for the side of VOIN esports. Team Secret, they'll be happy with the performance. A little disappointed in terms of the chicken dinner, but I think overall it's been a great performance from them. But still hoping to see more of them. But this player, man, he was so good towards that New York's factory region, taking all the players inside of ASI 8 especially. 8 eliminations, 1,483 damage, 2 assists, 60 minutes and 45 seconds of survival time, 10 knocks, and 292 heal. I mean, DRX, they're here to perform, man. And look at his headshot percentage right now. 31 headshot percentage. It's not a small number at all. Right? And even though he's taking a lot of damage as well, right? So I'd say he was really precise with his sprays, gunshots incoming, and 25, lower torso, that's all. But 31.25, it's going to be the headshot percentage incoming, 8 elimination and 10 freaking knockouts. He was a war machine into the lobby. He was making sure to dominate each and every single player in front of him. Well, let's just have a look on the top 4 players into the previous match, because Team Secrets will be got to be joining the spot. GKMJ, T2K Ajaya, and VOIN esports with 4-4-4 elimination. But man, Tree from the side of DRX, he is having 8 elimination and just totally decimated the competition in top 4. Great start to the day here. We've seen so many players step up their game. We've seen so many good players being pulled off into this match, and I think we are set for the day already. It's not going to be warm-up time. It's not going to be teams coming in slow. Group Red are usually the ones aggressive, and Group Green, well, they're coming in with explosiveness right now. And you can already see everyone here are from the side of Group Green, except T2K if I'm not wrong. But regardless, everyone else are coming in really strong. Now talking about the teams to watch, well, definitely VOIN esports, thanks to the chicken dinner. And DRX, they came in swinging. They're not going to stop anytime soon. That's Team Secret on 9 eliminations, RQ on 9 too. 2,600 damage though for VOIN.
So those are some ridiculous numbers. As we have the match summary on our screens right now, ladies and gentlemen. Total eliminations 102, 7 grand eliminations, 3 drop looted, 2 vehicle eliminations, 13,933 healing done. Longest elimination of 271 meters by Cyclone on the side of DRS. Exactly. This is going to be the typical match summary out there. And Cyclone will be taking the longest elimination in the previous one. Let's just have a look on the match rankings, because VOIN Esports will be taking 23 points with 13 elimination incoming. Team Secrets will be taking 15 points with 9 elimination. RQ will be taking 14 points. But look at that. Edge, DRX, 14 points. And top 5 and 14 points, total domination. It was just total raw power incoming. 14 points and not even a single point of placement. 14 points, just elimination points, that's all. DRX, they're showing up, and they're showing up strong. And I just want to see DRX just totally decimated the circuit right now, man. This team is going to take the competition higher and higher. But let's have a look on the overall rankings. Because teams on the first page, यहाँ पर इन teams को कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है. देखिए T2 के esports team PANDUM and team SCYTES यहाँ पर थोड़ा बहुत और भी अच्छे तरीके से परफॉर्म करे तो मैं बोलूँगा बेटर रह सकता है. बट क्योंकि आज के दिन क्या जैसे ही ग्रुप ग्रीन ज्वाइन करिए तो हम लोग यहाँ पे 3 पेजेस देखेंगे, राइट. ओवरऑल रैंकिंग्स के अंदर चेंजेस यहाँ पे आ सकते हैं. स्पेशली मैं बोलूँगा टीम्स यहाँ पर जो फर्स्ट पेज के अंदर है, दे आर इन द ग्रीन जोन. Teams on the second page, they are in the yellow zone, and teams on the third page, they are in the red zone. So हम यहाँ पर teams को ऐसे थोड़ा बहुत डिवाइड करेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे टॉप 18 जैसे बात करें तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स चले जाता है. बट राइट नाउ द ओवरऑल स्टैंडिंग्स, these teams, they are doing good, Raj. They are in the comfortable zone. But the teams on the second page, what do you think? What is going to be their game plan today? I think the teams here, they probably are gonna be some of the teams coming in from Group Blue. Some of the teams are from Group Red. So I think Group Red are probably, just gonna be sitting back and hoping. But Group Blue, they probably are gonna be trying their level best to get into that number 1 page of the overall standings, because they'll be left with 1 more day of games. That's it. One more day of matches, and today is going to be very important as we take a look at the last page of the overall standings, which is pretty much going to be just Group Green, if you ask me. VOIN with 23, 15 for Team Secret, DRX is here, ASI 8, WARGYE, 4 Boom, Nongshim and 52X. Unfortunately for Nongshim and 52 Esports, this was not the kind of start that I was expecting. I was hoping for them to come out swinging. For Boom, understandable. This is what they do. They don't always come out swinging. They wait for they take their sweet time, and then they will pick up the pace, and they will not stop from there on forward. Yeah. So all these teams, SIT first team, WARGYE team, Boom Esports team, Nongshang Red Forces, Team 52, it's going to be the first day of them playing, right? So they do have more matches to work with. But let's just have a look at the overall MVP, because as we won't be seeing any sort of changes. The Xavier's Wong Young will be taking 28 elimination points with 30 knockouts, will be taking the first spot. Godless will be taking the second one. Fighten will be taking the third one. Chips will be taking the fourth one. And No Fear from the side of HORAA Esports is coming also in top 5 MVP till now. I believe Godless might just surpass, Wong Young here on the side of Xavier today, at least. Because Xavier, I don't think they're going to be joining us anytime soon for a day or two. So Godless might be able to take the throne from him. For now, once again, he will have his time. He will have his chance. As we are now, once again, looking at an Indonesian team starting off really strong on the map of Rondo. Yesterday, both the Rondos were won by Indonesian teams. Today, the Rondo is once again Indonesians. So that's 3 Rondos now going in their favor. Let's see if Erangel is also going to be dominated, or is it going to be some other team from any other region coming up? I do kind of want to see HKG put up some numbers. It's been that one team that I've been rooting for since day 1 of Phase 1 playoffs, and I don't want to let them go. Yep, absolutely. And now the next map, it's gonna be Erangel, and it's gonna be HORAA Esports versus Team Flash. Although HORAA Esports, they're coming up with a new lineup. Oh, sorry, not HORAA Esports, I'm so sorry. Team Flash is coming up with a new lineup in the roster. All the 4 players are different, but still they are gonna be spotting up in, I'd say,
the region of Yasnaya. So Edge, next fight is gonna be legendary, but to the audience watching right now our stream, जाइए जल्दी से आके सब्सक्राइब करिए 141 esports के चैनल को, क्योंकि हम लोग यहाँ पे मजे लाजमी तरीके से बहुत ही ज्यादा पास रहेंगे 45 के सब्सक्राइबर्स के। देखिए 50,000 सब्सक्राइबर्स हम लोग को यहाँ पे करने हैं इस चैनल के ऊपर, एंड आप लोग भी हमारी मदद कर सकते हो। आप ही लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे तो 141 esports आगे कैसे बढ़ेगा? तो जाइए जल्दी से आके सब्सक्राइब करिए एंड कीप ऑन सपोर्टिंग द ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज दे आर डूइंग अमेजिंग। एंड क्या पता आगे वाले समय के अंदर हम लोग को एशिया बैलून चैप्टर 4 देखने को मिले, एंड I'd love to see chapter 4 to be honest, क्योंकि it's going to be a legacy of this tournament now. That is true indeed. Chapter 4 might be coming in sooner than you think, but regardless, one that's happening right now is going to be Erangel. And we're starting off towards military base. I think we are heading towards Kameshki, maybe? I mean, it looks diagonal enough. We are ending, yeah, towards Kameshki, but it's between Kameshki and Lipovka. So there is going to be a really good chance that HORAA esports can, will go towards Yasnaya. I'm not really sure about the Flash because this is not the iteration of players that we usually see against HORAA esports. So we'll have to wait and watch if that's going to be the case, or do they already have a pact where they've already mutually decided that they will go towards Yasnaya Polyana and maybe fight off, even though they're not the same players. Absolutely. And right now जो फाइट पाथ है कुछ टीम्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन, बट कुछ टीम्स के लिए यहाँ पर मैं बोलूँगा थोड़ी बहुत दिक्कतें बन सकती हैं। जिन भी टीम्स को यहाँ पर जॉर्ज पूल, पोचिंकी, स्कूल या फिर रोजा क्या 70 के रीजन में जाना पड़ेगा एज, लोगों को बहुत ही ज़्यादा एक लंबा ग्लाइड करना पड़ेगा, एंड देन ओनली दे कैन रीच द डिजायर्ड लोकेशंस and drop locations. But Yasna is close, so we can see Team Flash versus HORAA esports anytime soon. And Fortress once again sticking to their ferry pier. Novorapnoi belongs to SKYFORCE at the moment. We'll be keeping our eyes open for Team Flash and HORAA esports as the circle is decent. We do have Gatka ruins towards the northern part of the map. We already see some teams going in for melee fights, Boom and FN. And looks like Boom might just be able to take down the entirety of the squad coming in from the side of FN. As Nongshim are going to be the ones dropping players on the side of Flash. It's not HORAA esports, but FN. The ones at the top of the table between these two teams are going to be eliminated in under a minute of dropping down. And to melees even. Oh no, this is bad. They're getting out. And now DRS Gaming versus RQ. ये 4v4 फाइट यहाँ पे इनिशिएट होती हुई पहले प्लेयर को यहाँ पे डाउन करेगी जेडफोर्स यहाँ पे डाउन, उसका फायर एंड इज रियली लो एचपी, बट यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ेंगे एंड 15-3 से एक नॉकआउट निकाला जाएगा। एंड वी हैव DRS Gaming, दे आर हैविंग अ बेटर स्पॉट। RQ का वो जो आखिरी खिलाड़ी है उसको नॉकआउट करके फिनिश ऑफ करने की पूरी दरकार रही है, एंड शायद से RQ हार सकती है इस 4v4 बैटल को बिकॉज़ फायर एंड ही इज द सोलो वन स्टैंडिंग नाउ एज। RQ, the last man standing, is going to get taken down. With that 1 point that they got, they have somehow managed to get the same number of points as FN. Now, so they are on the equal score line as Flash. They will get taken down. They did manage to get one elimination though in the meanwhile, but they're going to be gone as well towards Pochinki, where we are right now. VOIN coming in with 3 players as SCYTES are here as well. A 3v4 situation. VOIN, will they be able to retaliate, or will the chicken skirts come into play? They did get the chicken dinner, which means a lot of these players are definitely going to be thinking about their upcoming performances, because you definitely are going to be having some pressure. The performance anxiety will be coming in. Now you'll be expected to win again and again and again, or perform better. But with the way things have started, SCYTES have the upper hand and might just keep it that way, as they do manage to knock one more player, while two of his teammates are in the other building. Team 52. Now 1 elimination, 1 knock already. That is for themselves. Let's see if there's going to be more casualties. 52 esports dropping down as well.
And Outlaw, beautiful jump there coming in. Agent 47 will be taking a bit of damage as we have the fight between VOIN and SCYTES. Looks like SCYTES might just be eliminating VOIN, and the chicken curse is real. It is gonna be VOIN getting taken down pretty early into the game with no eliminations whatsoever. They just got the chicken dinner. 23 points is what they were able to accumulate on that map. And guess what? In this one, it is gone. They're nowhere to be found. Pretty early too. And SCYTES, they'll be happy with this performance. A good start for them. 4 eliminations with 4 players still standing. 13 teams, 49 players, 5 minutes about to hit. The circle will be coming to a close in the next 3.5 minutes. So there's a lot of time for these teams. There's a lot of time for the player to go and make a move, position themselves in places where they think is decent. Not everyone will be thinking same. Not everyone's going to be predicting the circle right, and definitely not everyone has the similar mindset. Gameplay wise, I feel like there's a lot of these teams that are similar and players that are similar. But when it comes to mindset, I think everyone is very distinct, and I think that's what separates them from the rest. You know what they say, separates the best from the rest, something like that. But yeah, I think that is probably the case here. Team Secret in the meanwhile, Trang is very low and is bleeding too. They already lost one player. Logman and Juke are the only ones standing. Lipovka is where we are at the moment. T2K is here too. T2K on the other hand, they've been performing decently well, and all of their games have been going decent for now. I feel like there is a really good opportunity for them to close things off there, off in the phase 3 playoffs. The Nepali counterparts that they had at HORAA Esports and DRS have usually been the ones that are in the spotlight, but now T2K, they've had their moments here and there, yes, of course, but they were never the one team to look out for. But now I think T2K might just be someone you need to keep an eye out for here. Yep. T2K esports, they're really close, and एक बारी हम लोग एक दफा जोन के ऊपर देखते हैं टीम वार्गे स्टेलबर एंड कामेशकी के आसपास, एंड एज वहां से रोटेशन मारना मैं बोलूंगा इजी हो सकता है. यस्नाया का पूरा रीजन खाली रहेगा. लिपोवका पे हालांकि यहाँ पे फाइट चलती हुई, एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें जैसी टीम वार्गे एक बार अपना रोटेशन डालेगी, सो हो सकता है डीआरएक्स के अगेंस्ट थोड़ी बहुत हेयर अंदर हो सके, शायद से डीआरएक्स के अगेंस्ट थोड़ी बहुत फाइट लोग की इनिशिएट हो सके. एंड anything is damn possible edge right now, but Team Secrets हमारी स्ट्रेन के ऊपर, and they've been performing really good, I'd say. लास्ट मैच यहाँ पर हालांकि चिकन के बहुत ही ज्यादा पास है, एंड लास्ट मैच के अंदर अगर चिकन डिनर मिल जाता तो आगे आने वाले समय के अंदर टीम सीक्रेट्स यहाँ पे बेहतरीन पॉइंट्स के अंदर इजाफा कर सकते थे. बट अभी के लिए टीम सीक्रेट्स वो बात शायद से थोड़ी बहुत खटकेगी कि क्यों चिकन डिनर नहीं हो पाया, एंड वॉइन ईस्पोर्ट्स के अगेंस्ट वो 4v4 बैटल के अंदर यहाँ पर अपर हैंड एडवांटेज होने के बाद में भी वो चिकन डिनर इन लोग के हाथ में नहीं आ पाया. बट अभी के लिए टीम स्काईफोर्स हमारी स्ट्रिंग के ऊपर 0 एलिमिनेशन के साथ रोटेशन करते हैं जोन के अंदर. SKYFORCE going in for the rotations here as well, pretty early too, if you ask me. You usually don't see them go for these rotations this quick. They're taking the roads as well. They're taking their sweet time, and they kind of have to. They have to be careful a bit while they make their way back to the main island. It's about the bridge camps that they should be worried about, and I think that's exactly what they are focused on right now, as they will be taking it slow, getting back into the main island. We will be witnessing a fight. BTR and HKG, who will be the one coming out on top. HKG at the moment losing 2 but dropping 1. It's all about the game of trades, Edge. यहाँ पे 2 प्लेयर्स टीम BTR के खामियाजा भुगतते हुए BTR के क्यों वो हाथ में रह गए एक बेहतरीन ग्रेनेड दागा तो गया, पर वो ग्रेनेड शायद से सही जगह पे जाके नहीं करा. इस साथ में टीम BTR, they are out of the circuit, they are out of the panel, and यहाँ से होती हुई टीम BTR बाहर. एलिमिनेशन यहाँ पर इन लोग का भैया आ जाएगा, एंड 4 एलिमिनेशन भले इन लोग के पास में थे Edge, but they did not perform good, and team BTR getting out of the match, man. I did not expect team BTR to play like this. They are in top 5. हालांकि यहाँ पर टॉप 5 के अंदर है, बट कहीं ना कहीं शायद से दिक्कतें बन के आ सकती हैं. बट टीम 4 थ्राइव्स अभी के लिए यहाँ पर हमारी स्क्रीन के ऊपर,
एंड कोई भी एलिमिनेशन पॉइंट्स टीम सी फोर्थ ड्राइव के पास में भी नहीं है एज, बट हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं टीम बूम ई स्पोर्ट्स थोड़े आसपास के दूर दराज के एरिया से रोटेट करती जाएगी। 3 पॉइंट उन लोग के पास में पिछले गेम के अंदर यहाँ पर उन लोग के पास में ज़्यादा पॉइंट्स तो नहीं थे, बस 5 पॉइंट्स यहाँ पर कवर अप कर पाए थे, 5 या 4 पॉइंट्स एक्चुअली। बट अभी के लिए यहाँ पे टीम फोर्थ ड्राइव्स, व्हाट डू यू थिंक एज, व्हाट्स द गेम प्लान फॉर टीम फोर्थ ड्राइव्स, बिकॉज़ दे आर प्लेइंग वे टू साइलेंटली। I think once again everyone's main motive right now is to focus on getting those numbers in terms of position points. Getting the chicken dinner is definitely going to be the key. And since it's very start of the day for them, right? It's still the second game for Group Green. I think they're still getting the feel of the lobby, understanding how things are going here, because there are a couple of teams that are new here. SIA joining the Group Green roster. The DRX. Yeah, we have SCYTES coming in, FN too, and Nongshim as well. Yeah, do not forget them. Nongshim coming in. I was expecting a lot, but they have not yet delivered what I feel like it's gonna be something scary for sure coming in from them. With 6 eliminations here into this one, maybe they are picking up the pace. Maybe this is the time. Maybe this could be the time. And Team Secrets के लॉल वो यहाँ पर जोन के बाहर नॉकआउट होते हुए, टीम सीक्रेट्स पूरी की पूरी टीम यहाँ से होती हुई बाहर, एंड T2 के esports के अगेंस्ट टीम सीक्रेट्स लिपोवका के अंदर फाइट ले रही थी। अभी भी देखिए जोन के अंदर का एडवांटेज उन्होंने नहीं लिया है एज, जोन के बाहर ही यहाँ पर जो फाइट थी चल रही थी, एंड खामियाजा टीम सीक्रेट्स को यहाँ पर भुगतना पड़ा है। चारों के चारों प्लेयर्स जोन के बाहर ही एलिमिनेट होकर खत्म हुए। बूम ई स्पोर्ट्स वर्सेस स्काईफोर्सेस फाइट यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। बूम ई स्पोर्ट्स हालांकि जब रोटेट कर रहे थे तो हम लोगों ने फोर्थ ड्राइव्स को भी मिनी मैप के ऊपर देखा था एज, सो मैं बोलूंगा फोर्थ ड्राइव्स इज आल्सो रियली क्लोज इनटू द प्रॉक्सिमिटी। तो कभी भी यहाँ पे थर्ड पार्टीज के सिनेरियोस बन सकते हैं। टीम फोर्थ ड्राइव्स अगर किल फीड पढ़ रहे होंगे तो थर्ड पार्टीज कभी भी आ सकती हैं। That's one good/bad thing, right? Good if you are the one third party. Bad if you are in a great fight, that is leaning towards your favor and you get third partied. I don't think anything agitates you more than that. I think that's what these players are kind of looking out for, not to get third partied in situations like this, especially when games are going so good for them. SKYFORCE are finally going to be making their way back into the circle. It's been about time. There have been a few eliminations too. But let's see if Severny, players there, that is WARGYE, if they can survive here. They're split up quite a bit. It's not going to be very easy, but HKG, they're in a 2-2 split, and they might now take the fight towards WARGYE. As Raze is spotted, he's on a retreat. Exactly. A-side esports, देखिए पिछले गेम के अंदर मैं बोलूंगा एक बहुत ही ज्यादा डिसेंट गेम इन लोगों का था, बट अभी के लिए ए साइड ई स्पोर्ट्स क्या रिटालिएशन, क्या फाइट्स, क्या गेम प्लान रहेगा इन लोगों का। चारों के चारों प्लेयर्स में से क्रिप्टो अभी के लिए शायद से AFK हैं, तो वापस आ जाए तो बेहतरीन रहेगा उस टीम के लिए। बट अभी के लिए ए साइड ई स्पोर्ट्स दे आर इन द डिसेंट स्पॉट, रोटेशन बेहतरीन। बट टीम फोर्थ ड्राइव्स पहले 4-4 एंगेजमेंट रोजॉक्स अपर हिल के ऊपर यहाँ पे स्टार्ट हो चुके। टीम NS इन लोग जो सामने What's going to be the case scenario, क्योंकि शायद से इंटेल है, इंफॉर्मेशन है। ओके वेट कर रहे हैं प्लेयर यहाँ पर, जैसे ओपन के अंदर आएंगे नॉकआउट यहाँ पर लिया जाएगा, उसी के साथ में यहाँ पर इजाफा भी किया जाएगा। स्पॉट किया प्लेयर को, क्या कब शूट करेंगे, कब फायर लेंगे। अगर शायद से ओपन के अंदर आया वो खिलाड़ी तो मे बी कभी भी शॉट्स आ सकते हैं। पर टीम फोर्थ ड्राइव्स दे आर वेटिंग लाइक लायंस एंड टाइगर्स hunting for a prize. Team 4 Thrives and Team NS, this is going to be a very interesting fight, क्योंकि अभी तक यहाँ पर पाकिस्तान वर्सेस कोरिया नहीं हुआ है। T24 ओपी डायरेक्टली स्लैमिंग करेंगे, उनको पता है कि बान हाउस के अंदर वो सोलो में स्टैंडिंग है, तो क्यों ना पुशिंग करें, यहाँ पर प्लेयर को डाउन किया जाएगा जब एडवांटेज है। पर एनएस की पूरी टीम यहाँ पर आ जाएगी, एंड जो कोरियन प्लेयर्स है 4 प्लेयर्स एक साथ यहाँ पर आते हुए। इन द मेन टाइम यहाँ पर T2K esports बाहर होती हुई, IQQ बेहतरीन ग्रेनेड इजाफा यहाँ पर बेहतरीन तरीके से किया जाएगा। आगे की तरफ यहाँ पर चलते हुए T24 ओपी के हाथ में रहेगी एस्ट्रल के,
आई गेस वो जो रिवाइवल है यहाँ पर नहीं हो पाएगा, बट अभी के लिए IQ की स्पॉट करना पड़ेगा पीछे प्लेयर पे, बेहतरीन फ्लिक और उस DBS को बरसाते हुए एंड कहर यहाँ पर बचेगा एंड NS अभी के लिए यहाँ पर भागते हुए सिचुएशन से, क्योंकि उनको पता है इफ दे आर गोइंग टू बी टेकिंग अ फाइट टीम अगेंस्ट टीम फोर्ट्रेव्स they are in a disadvantage and कभी भी शायद से finish off कर सकती टीम फोर्ट्रेव्स, they are in the upper hand advantage, so why not run away, reset, then come in the fights into the last zones. Oh no. NS. In the meantime, वहां पर वो टीम एलिमिनेट हो गई एंड इट वाज टीम HKG आई गेस और सम अदर टीम जो यहाँ पर उनको थर्ड पार्टी किया एंड बाहर किया जाएगा मैच से. इट वाज रियली बैड, आई मीन सैड टू सी, आई डिड नॉट से बैड, क्योंकि डिसएडवांटेज में आ गए थे जैसी फोर्थ राइव्स के अगेंस्ट फाइट उन लोगों की हुई थी. उसके बाद में यहाँ पर जैसे रोटेट करने का ट्राई किया, दे गॉट एलिमिनेटेड. बट DRS गेमिंग वर्सेस बूम esports, the Nepali giants on our screen, Killer White and Cyclone अभी के लिए यहाँ पर XMPLZ डाउन तो हो चुके हैं, बट कभी के लिए मैं बोलूँगा DRS गेमिंग ये टीम बेहतरीन परफॉर्म करती है. बट मैं बोलूँगा यहाँ पर थोड़े बहुत चोक सिनारियोज हम लोग को इनकी इस टीम से भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि XMPLZ I'd say is one of the most consistent player in the lobby. उनकी यहाँ पर क्लोज रेंज पावर एंड एवरीथिंग इज जस्ट सो गुड. बट टू द ऑडियंस वाचिंग आउट देयर यार, अगर आप लोगों ने अभी तक यहाँ पर हमारे 141 esports के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो जाइए जल्दी से जाके सब्सक्राइब करिए एंड डू सपोर्ट 141 esports चैनल, क्योंकि आगे आने वाले समय के अंदर आप लोगों को ऐसे ही टूर्नामेंट्स देखने को मिलेंगे मजीद. यहाँ पर आप लोगों के लिए टूर्नामेंट्स हम लोग लेके आएंगे, तो जाइए जल्दी से सब्सक्राइब करिए अभी हमारे चैनल को एंड देखते हैं यहाँ पर इस मैच के अंदर क्या सिनारियो हम लोग को देखने को मिलेगा, क्योंकि चौथा ही जोन है, 9 ही टीम्स यहाँ पे जितना ज़्यादा प्लेयर्स एंड टीम लॉबी के अंदर नहीं रहेंगे, सर्वर के अंदर नहीं रहेंगे. सो जो फाइट्स यहाँ पे बहुत इजीली या जल्दी कैपिटलाइज नहीं होंगी. लास्ट के अंदर हम लोग को शायद से फाइट्स देखने को मिलेंगी, क्योंकि ब्रीदिंग स्पेस यहाँ पे टीम्स एंड प्लेयर्स के बीच में बहुत ज़्यादा रहेगा, डिस्टेंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा रहेगा. जैसे जैसे डिस्टेंस क्लोज करेंगे जोन कोलैप्स होता रहेगा, वैसे ही टीम्स यहाँ पर फाइट्स के अंदर आएंगी. बट अभी के लिए यहाँ पर DRX गेमिंग, दिस टीम is just insane. This Korean team is just insane. But अभी के लिए SCYTES के अगेंस्ट यहाँ पर फाइट. SCYTES यहाँ पर एशिया बैटल वर्ल्ड चैप्टर 3 के सर्किट के अंदर यहाँ पर पहली बार हम लोग को देखने को मिल जाएगी पाकिस्तानी टीम. वे नहीं आगे की तरफ बढ़ेंगे, बट SCYTES के प्लेयर ने बेहतरीन फाइट एंड इसी के साथ में अब SCYTES के चारों प्लेयर्स ने, मैं बोलूंगा DRX के प्लेयर्स को घेरा. चारों कॉर्नर से टीम वार्गे भी आ चुके हैं. थर्ड पार्टी यहाँ पर टीम वार्गे करेगी. वार्गे दे आर रियली फास्ट विद देयर स्ट्रैटेजीज एंड साथ में जो थर्ड पार्टी थी यहाँ पर कितना जल्दी एक डिसीजन बनाया कि चलते हैं जल्दी से यहाँ पर फाइट लेते हैं. उस नॉकआउट प्लेयर का यहाँ पर एलिमिनेशन पॉइंट अपने नाम पर शायद बेटर रह सकता है. घोष को यहाँ पर स्पॉट किया जाएगा, शाका स्प्रे लेंगे अपनी स्कारल से, बट यहाँ पर मैं बोलूंगा एलिमिनेशन पॉइंट को कवर अप कर पाए या फिर नहीं, एलिमिनेशन पॉइंट मिलेगा या फिर नहीं, आई डोंट थिंक सो. वो जो एलिमिनेशन पॉइंट है उनके हाथ में आएगा एंड टीम वॉर गए बेहतरीन थर्ड पार्टी साइट esports SKYFORCE के अगेंस्ट K2. SKYFORCE के प्लेयर को स्पॉट किया गया है. इंफॉर्मेशन एंड इंटेल यहाँ पर रिवील तो हो चुकी है, बट K2 he's just scouting the area right now and I really love the skin of his Porsche. The skin is looking so good. I'm so sorry, I really love cars, so कभी कभार मैं बहुत ज़्यादा distract हो जाता हूँ because the skin of the cars it's always eye catching man. But let's just come back to the match right now, क्योंकि गॉडलेस यहाँ पर K2 को स्पॉट कर चुके हैं मेरे हिसाब से. ग्रेनेड यहाँ पर हाथ में रहेगा एंड शायद से साउंड क्लूज मिल जाएंगे. क्या ग्रेनेड पिन करेंगे? शायद से ग्रेनेड यहाँ पे गॉडलेस की तरफ से बिल्कुल जाएगा. When is the question? और नव यहाँ पे कुछ स्प्रेज लेते हुए एंड शायद से SIT esports के प्लेयर उस व्हीकल के अंदर गॉडलेस को स्पॉट करेंगे. शायद से यही मोमेंट है, यहाँ पर स्प्रे लिया जाएगा. एक और प्लेयर को नॉकआउट करने की दरकार, K2 को नॉकआउट किया जाएगा एंड यही ओपनिंग है SKYFORCE के लिए. यहाँ पर स्ट्राइक इन करें एंड टीम SIT esports को बाहर कर सकते हैं इस मैच से, बाहर लॉबी तक का रास्ता दिखा सकते हैं. SKYFORCE अपने आगे स्मोक करेंगे. ग्रेनेड यहाँ पर बेहतरीन आएगा. रोंडो को स्पॉट यहाँ पर किया जाएगा. सांचर को स्पेस को लेते हुए, बट अर्नव यहाँ पर अपने DBS से शॉट यहाँ पर लिए जाएंगे. नो रिटेलिएशन के अंदर बेहतरीन नॉकआउट SIT esports. रिटेलिएशन के अंदर यहाँ पर इनका भी प्लेयर डाउन हो जाएगा एंड दे आर गॉन. इसके साथ में सांचर अभी के लिए हमें बेहतरीन तरीके से इसको डाउन करेंगे. इसके साथ में SIT esports का भी यहाँ पर अपने आप को रीयूनियन करेंगे. दैट इज गोइंग टू बी द क्वेश्चन राइट नाउ. सांचो दोबारा से ग्रेनेड हाथ में रहेगा. ये जो ग्रेनेड है शायद से यहाँ पर खामियाजा भुगतना पड़ सकता है SIT esports को. बेहतरीन ग्रेनेड जगह पे जाकर लगी और एक ग्रेनेड, 2 नॉकआउट लेने के बाद में एक प्लेयर को फिनिश ऑफ करके जाएगा.
What a beautiful grenade it was. But Sanchez open के अंदर first जाएंगे. Crypto लेके जाएंगे उस player का elimination point अपने नाम. And SKG in the meantime हो चुकी बाहर इस game से Edge. Unfortunate turn of events as we're down to 7 teams now, 20 players coming in. WARGYE will be really happy with that elimination. They will be getting those extra crucial points they needed. But here we have SKYFORCE getting taken down too with only 1 elimination. 4 tribes now picking up the pace. 3 eliminations with 4 players standing. They're going to be one of the top 6 teams as SKYFORCE are going to be gone in position number 7. 2 eliminations out they have. 16 teams. Sorry, 16 players. And 6 teams here. SCYTES now in a good position to maybe surpass 100-point marker. 1 more position point that they need. That's it. Or maybe 1 elimination points. They'll take either. जी हाँ बिल्कुल 3 elimination points यहाँ पर and Alishba aka Noki and to the people audience watching out there कि आप लोग पूछ रहे हो who's Alishba, it's gonna be Noki. They changed the name again and 4 tribes के players यहाँ पर जितना ज़्यादा मैं बोलूँगा skins के ऊपर पैसा खर्च नहीं करते उतना खर्च शायद से ID rename cards के ऊपर कर देते हैं बट अभी के लिए यहाँ पर क्रिप्टो स्पॉट यहाँ पर प्लेयर को किया जाएगा यहाँ पर बेहतरीन स्पेयर्स आएंगे एंड शायद से उस स्प्रे के दौरान क्रिप्टो का डाउन किया जाएगा हांजी बिल्कुल इसके साथ T24 ओपीएन पलक एक डेडली डुओ एक बेहतरीन स्प्रे यहाँ पर लेंगे बट यहाँ पर एक खामियाजा उनको भुगतना पड़ा नोकी के नाम का एंड नोकी बाहर होते इस गेम के लिए डाकू डोमिनेशन दिखा के जाएंगे एंड WARGYE बेहतरीन परफॉर्मेंस और टॉप 5 टीम्स हमारी स्क्रीन के ऊपर 14 प्लेयर्स यहाँ पर अभी भी लॉबी के अंदर But Team WARGYE उनके पास में बेहतरीन advantages. They are having 4 players standing. But sides का वो खिलाड़ी यमी के ऊपर नॉकआउट ले जाएगा. And Team BOOM ESPORTS, 1 is gone, 1 is bleeding, and 2 is surviving. 5 teams now here in the server. Looking at the top 5, we're hoping to get 1. There are 3 Pakistani teams here in the mix still. DRS and BOOM are the only non-Pakistani teams. So let's see if it is going to be a Pakistani team coming out on top, because it looks like it. At the moment, a beautiful grenade coming in. Shaka dropping on Kibo. As Falak gets the frag on to SCYTES. They are gone. 4 tribes putting the screws to them, and that's going to be the end of SCYTES. So now we're down to 2 Pakistani teams. 4 tribes looking like they're finally able to pick up the pace and, you know, find the groove that they were missing on the map of Rondo. Erangel, towards the end, looks like 4 tribes might have a really good chance, even with only 3 players standing. I mean, WARGYE definitely has the upper hand at the moment in terms of man advantage. They have 4 standing, but DRS with 2, BOOM with 3, 4 tribes with 3. Never take them lightly whatsoever. I mean, never take them lightly, but DRS बेहतरीन स्प्रे किलर वाइटी की तरफ से और उस M416 का कहर मचाते हुए बेहतरीन स्प्रे मैं बोलूंगा एंड इसी साथ में BOOM ESPORTS को वो आखिरी खिलाड़ी मॉल स्पॉट किया जाएगा एंड किलर वाइटी की तरफ से वहां पर एक बेहतरीन स्प्रे भी आता हुआ एंड BOOM ESPORTS का जो आखिरी खिलाड़ी है उसका जो एलिमिनेशन पॉइंट है वो जाएगा 4 ट्राइब्स के खिलाड़ियों के पास में 2 पाकिस्तानी टीम और एक नेपाली टीम देखते हैं कौन सी टीम आएगी जो चिकन डिनर लेके जाएगी बट DRS गेम के साइक्लोन किलर वाइटी रहेंगे 2 वुमेन स्टार्टिंग इस गेम के अंदर मौला he has been spotted but team 4 tribes यहाँ पर एक गेम प्लान क्या रहेगा किस तरीके से इजाफा करेंगे और किस नजाकत से इस चिकन डिनर को अपने हित में लेके जाएंगे बट पेंगुइन एके फलक यहाँ पर बनते हुए डोमिनेटर एंड WARGYE के रेज को डाउन करेंगे इन्हें बहुत ही ज्यादा एक इंपॉर्टेंट फैक्ट टीम WARGYE के ऊपर T24 OP एंड दे आर परफॉर्मिंग रियली गुड एंड स्पेशली IQQ दाद देनी पड़ेगी इस टीम की जैसे ही सर्किट के अंदर दोबारा से वापस आते हैं दे मेक श्योर टू डोमिनेट दे मेक श्योर टू बी इन सिंक एंड कोऑर्डिनेशन 4 ट्राइब्स अभी तक यहाँ पर सिम्फनी और एक रिदम में काम करते हुए एंड इसके साथ में दोबारा से यहाँ पे टीम 4 ट्राइब्स का एक खिलाड़ी डोमिनेशन का खिताब पर टाइटल लेके जाएंगे बट टीम WARGYE व्हाट्स गोइंग टू बी द गेम प्लान क्या पर DRS के अगेंस्ट फाइट लेना चाहते हैं क्या यहाँ पर 4 ट्राइब्स के अगेंस्ट फाइट लेना चाहते हैं या फिर सिर्फ और सिर्फ जोन का एक छोटा सा चंक अपने नाम करेंगे और यहाँ पर होल्ड करना चाहेंगे They want to do a third party, I guess, Edge. क्योंकि टीम WARGYE आज के दिन के अंदर third parties, they were so clean. Ooh, IQQ. What a play there coming in, and WARGYE now feeling the heat. They might get taken down. And you're definitely right. I mean, third party today has been, you know, the go-to situation, the go-to scenario for a lot of these teams and a lot of these players, and it might be coming out on top yet again. I mean, WARGYE, they will have to go for the revival, otherwise 4 tribes can actually capitalize with the man advantage that they have
they can actually take down the entirety of the squad of WARGYE and DRS2 at the same time. Yep. DRS देखिए 2 प्लेयर्स के साथ में अभी भी ज्यादा प्लेयर्स इन लोग के पास में नहीं रहेंगे. But the thing is, the coordination coming in front of side of both of the players is really good. Cyclone smoke अपने आगे किया जाएगा and कहीं ना कहीं इनकी जो information और intel है कहीं ना कहीं मिलेगी जरूर. Grenades यहाँ पर आते हुए हैं टीम 4 Thrives अभी के लिए यहाँ पर 8 elimination point लेने के बाद में थोड़ा बहुत पैसिव अप्रोच नहीं, बिल्कुल भी नहीं. स्पॉट यहाँ पर जैसी प्लेयर्स को करेंगे डाउन यहाँ पे किया जाएगा. बट आई क्यों आज के दिन के अंदर वो M416 और 4X का कहर जो मचा रहे हैं, बेहतरीन एकदम. डाकू का रिवाइवल यहाँ पर हो जाएगा. टीम 4 Thrives, दिस इज द मोमेंट टू स्ट्राइकिंग. दिस इज द राइट मोमेंट टू थर्ड पार्टी एंड मे बी जस्ट स्ट्राइकिंग, क्योंकि एक एलिमिनेशन पॉइंट मिलेगा. रन डाउन यहाँ पे करने का ट्राई कर सकते हैं. ग्रेनेड्स देखिए आप एक बार T24 ओपी के पास में 7 ग्रेनेड्स एंड 4 Thrives दे आर हैविंग अ लॉट ऑफ ग्रेनेड्स टू वर्क विद. यहाँ पर एक चलती फिरती आर्टिलरी बन के चल रहे हैं. दे आर द मॉर्टर्स राइट नाउ. देखिए ग्रेनेड्स यहाँ पे स्पैमिंग करेंगे. IQQ उनके ग्रेनेड्स यहाँ पे एग्जॉस्ट हो चुके हैं. T24 OP के पास में 2 ग्रेनेड्स उन्होंने स्पैमिंग किए. 7 ग्रेनेड्स थे तो 10 ग्रेनेड्स है अभी भी यहाँ पर टीम 4 Thrives के पास में. DRS एंड टीम वार्गे यहां पर आती हुई एक फाइट के अंदर एंड टीम 4 Thrives यही मौका है थर्ड पार्टी के लिए. और भी ग्रेनेड्स जाते हुए. द मैन विद द गोल्डन हैंड, इट्स गोना बी फन फॉर यू ऑल. साइक्लोन की भी यहां पर पोजीशनिंग रिवील हो जाएगी. इंटरेस्टिंग ग्रेनेड साइक्लोन के ऊपर जा सकता है, नॉकआउट यहां पर ले सकता है. बट अभी के लिए टीम 4 Thrives थोड़ा पीछे जाते हुए एंड टीम DRS कैसे होती हुई बाहर. टीम 4 Thrives एक यहां पर कमोशन के अंदर आते हुए. इट्स गोना बी अ 3v2 सिनेरियो. शाका अपने प्लेयर को रिवाइव, शायद से शाका ही नॉकआउट हो चुके हैं. मॉल के ऊपर ग्रेनेड बहुत ज्यादा हो चुके हैं एंड नो फलक बेहतरीन नॉकआउट एंड फिनिश ऑफ. एंड टीम 4 Thrives आज के दिन का दूसरा मैच अपने हित में लेके जाएंगे, जहां पर डाकू इज द सोलो मैन स्टैंडिंग. स्पॉट यहां पर ओपन के अंदर कर लिया गया है. फ्रॉम द स्पॉट then 4 Thrives drop on the map of Erangel till the end. जब वो आखिरी प्लेयर यहाँ पर टीम वार्गे का स्पॉट किया जाएगा, शायद से उनको यहाँ पर डाउन कर दिया जाएगा और उसके साथ में चिकन डिनर अपने नाम पे किया जाएगा. टीम 4 Thrives लेके जाएगी इस चिकन डिनर को. एज यहाँ पर कितना बेहतरीन चिकन डिनर, बेहतरीन तरीके से इजाफा. एंड दिस इज द टीम फ्रॉम पाकिस्तान प्लेइंग ब्यूटीफुली. What a game this has been, and what a pickup this has been from the Rondo. The change of gears, they're coming in by 4 Thrives. And WARGYE, I mean, I do feel a little sad once again. You know, they had it in the bag, if you ask me. They definitely had it. With the man advantage, they could have played it out better. But towards the end, DRS getting taken down there too. This is gonna help them, you know, get some of that confidence back. They've needed it for quite a bit now. 4 Thrives. Now they will, you know, be rejuvenated once again with this chicken dinner going into Miramar. But before that, we will take a quick look at the match highlights here, Infano. Let me take a breath, to be honest. Let me gather the oxygen in my body again, because the matches from Rondo to Erangel, it was insane. Just imagine what's going to be happening on the map of Miramar, to be honest. And to the audience watching out there, अगर आप लोगों ने अभी तक यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए जल्दी से आके सब्सक्राइब करिए, क्योंकि 4 Thrives यहाँ पर लेके गई एक बेहतरीन चिकन डिनर. Erangel के मुकाबले के ऊपर coordination to everything was damn perfect. It was perfection in coming from that team. And मैं बोलूँगा बेहतरीन यहाँ पर पेस को अपने आप को अक्यूमुलेट किया. देखिए यहाँ पे ज्यादा एग्रेस भी नहीं किया गया था. उनको पता है कि यहाँ पर आज के दिन के अंदर ये जो चिकन डिनर्स हैं इन लोगों के लिए कितने ज्यादा लाजमी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे. एंड इसी के साथ में मैं बोलूँगा बेहतरीन परफॉर्मेंस यहाँ पे टीम 4 Thrives ने करेगा. बट किलर वाइटी, द स्प्रे वाज गुड. दिस स्प्रे it was also on point edge. I mean, all of these players, they were playing out of their minds, and they were really good with the gunplay there, especially 4 Thrives. I mean, you can see they didn't really have a lot of elimination to show for pretty early, but then as the game progressed, they did come out on top. Not just with chicken dinner, but also with 10 eliminations for like IQQ, T24, and Noki. Noki, unfortunately, was not able to do anything into this one. 0 eliminations, 0 knocks, but Falak with 4, IQQ with 3, and T24 with 3. They're picking up the numbers, and IQQ once again to 5 knocks and 702 damage. This player is going places for sure. I mean, absolutely, man. And मैं
इन 4 प्लेयर्स की मतलब तारीफ कितनी भी करे उतनी कम है, क्योंकि वी आर स्पीचलेस राइट नाउ। एंड स्पेशली मैं बात करूँ IQ की, उन्होंने अपनी M416 के साथ में जितनी ज्यादा ओपनिंग्स निकाल के दी हैं, कैपिटलाइज उतना ही ज्यादा T24 OP और फलक ने किया है। हालांकि यहाँ पर नौकी बहुत ही पहले एलिमिनेट हो गए थे, बट बाद बाकी तीनों प्लेयर्स ने यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा बेहतरीन रिदम और सिम्फनी के अंदर खेला। एज IQ ने यहाँ पर बहुत सारी ओपनिंग निकाली एंड दे कैपिटलाइज इट ऑन परफेक्टली। नजर डालते हमारे MVP के ऊपर, अभी के लिए यहाँ पर किला वाइट ही 5 एलिमिनेशन पॉइंट्स एंड 5 नॉकआउट के साथ में यहाँ पर MVP बनते हुए। इसके बाद में हम लोग एक बार नजर डालेंगे हमारे टॉप 4 प्लेयर्स के ऊपर भी। बट राइट नाउ एज टीम 4 थ्राइव्स, दे प्लेड immensely and I feel like टीम 4 थ्राइव्स के तीनों खिलाड़ी आ सकते हैं, या फिर DRX के कुछ खिलाड़ी हो सकते हैं जो MVP या फिर टॉप 4 के अंदर आ सकते हैं। Probably, you're definitely right about that. But the way things started off, right? I don't understand. FN getting taken on that early was I don't know, man. It just feels wrong for them. As we take a look at the top 4 players, we have Falak in second position with 762 damage and 4 eliminations. Sites Outlaw will come in 4 eliminations, 433 damage dealt, and then we have HKG Synth. 4 eliminations and 405 damage. These are the top 4 players. And now as we head on to top 4 teams or teams to watch, as you may say, 4 tribes are definitely going to be someone who you need to keep an eye out for. And if you ask me, going into Miramar, I would say Team Flash and DRS. But since it's a new iteration of players at the moment, you need to keep an eye out for DRS for sure. But it's going to be 4 tries with 10 eliminations, Sites with 8, WARGYE on 10 eliminations too, HKG with 7 eliminations are going to be your teams to watch as we head down to the next match on the map of Miramar. Yep, exactly. नेक्स्ट मैच होगा यहाँ पर मिरामार का, और देखते हैं यहाँ पर हमारे तीसरे मैच के अंदर आज के दिन के अंदर कौन सी टीम लेके जाएगी विनर चिकन डिनर। बट अभी के लिए यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं हमारी टीम्स टू वॉच आउट नेक्स्ट मैच के अंदर, जहाँ पर 3 पाकिस्तानी टीम्स और 1 टीम हांगकांग की तरफ से। इट्स गोना बी टीम हांगकांग, बट टीम 4 थ्राइव्स, टीम साइट्स एंड टीम वॉरगाई insane level of performance. But edge after this we'll be having a look on the match summary and on the brief on the previous match what exactly happened, and I feel like we saw a lot of grenade eliminations. Match summary: 65 total eliminations, 4 grenade eliminations, 2-way drops looted, 1 vehicle elimination, 5,201 healing done. We had 337 meter is the longest elimination there at that range by Maul on the side of Boom. And this was the match summary there coming in. Now we'll take a look at the match standings, but we head on to the overall standing to see the changes there on the overall. I'm pretty sure everyone was expecting VOIN to make some changes to maybe beat the team. What is that team at the bottom? Okay, we'll have to wait for it. My memory is not helping me right now as we take a look at the match standings. 20 points for 4 tribes. Even though they did get the chicken dinner, they're only 4 points away from WARGYE, who were also on 10 eliminations with 16 points now. DRS on 13, Sight on 11. We have Boom with 8 points along with HKG. NS with 6 points, 4 points for SIA. SKYFORCE on 3 along with T2K. RQ with 1 point, Flash, Team Secret, DRX, and 52 Esports. All of them are on 1-2. BTR, FN, and VOIN, unfortunately, on 0 points. Now, going back to the topic, where I felt like, VOIN could actually surpass the team that was struggling. I believe it was 11, coming in from Group Red. They were only like 1-2 points away, maybe like 5 points away. And especially after getting the chicken dinner, I thought VOIN might actually, get that, be the first team jumping the number 2 page. We'll have to wait and watch if there's going to be any teams in the number 2 spot from Group Green. At the moment, DK, FN, RQ, DX, SCY, HORAA Esports, T2K, PANDUM, and SKYFORCE are going to be your, teams in the top 9 at the moment. Absolutely, these teams, they're in the green zone, they're in the comfort zone, so nothing to fuss about, to be honest. And team sites, insane level of performance. यहाँ पर अभी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमारी टॉप 5 टीम्स उन लोगों ने यहाँ पर क्रॉस कर दिए हैं। 5 टीम्स ने 100 पॉइंट्स का थ्रेशोल्ड एंड मार्कर। टीम साइट्स, टीम द ज़ेवियर्स एंड टीम आर्क, टीम एफएन एंड टीम डीके विल बी द टीम जो यहाँ पर क्रॉस करेंगे 100 पॉइंट का मार्कर। And good performance. HORAA Esports, T2K Esports, Team PANDUM, and Team SKYFORCE. They need the consistency. They are showing the consistency. So good performance coming in from all these top 9 teams. All they have to do is
all they have to do is just focus on being in the top 18. That's all. Definitely right about that. Focusing on the top 18, top 16 is going to be their primary concern at the moment. And Four Tribes already making their way to the top 18. They're going to be one of the few teams, well, actually the first team from Group Green to make their way into the number 2 page of the overall rankings, which means now the side of 11 are not just in a tough spot. They're pushed down to page number 3 in just 2 games. Four Tribes, they've accumulated the amount of points that Team 11 took 2 days, by the way, to accumulate. And that tells you something. Team 11, coming into the next 2 days of matches for them, they will have to come in swinging. Otherwise, I mean, there's no more phase 4, man. I mean, there's not even phases left. Well, probably chapter 4 for them. Yep. And let's just have a look on the third pages, because Team 11, they had a huge jump. I guess not not a huge jump. They were on the 18th, so they're going to get on the third page. I'm so sorry. They're having 28 points right now. It's Team 11. They're struggling a lot. And now we can see Team WARGYE, Team VOIN Esports, Team SCYTES, DRX Gaming SIT Esports, Team Boom Esports, Team NS, and Team 52 Esports. They're not having a good time, to be honest, but still, they only played 2 matches. But especially Boom Esports, NS, Team 52 Esports, they were able to accumulate fewer points into the previous one. They're not having a good time, Ajay. Three points for 52. Non-Chim. 6 eliminations. I thought they were picking up the pace. But 6 eliminations is good, but they would have loved to get more points in terms of position placement. So, hoping to see more of them coming into the next few matches. Maybe the perfect balance they can find. They can put up some numbers there and get them onto a good spot. Talking about the overall MVP and the good spots. Well, Godless now finally surpassed One Young, and he's going to be your overall MVP number 1 spot. 26 eliminations, 5,786 damage, 15 minutes and 23 seconds of survival time, 33 knockouts. And then One Young down to 2. Fire on the side of RIQ down to 3 now. Chips on 4th position as No Fear 911 on the side of HORAA Esports. He is down to 5th position, still holding on to his ground there. But I think there are going to be some changes soon, very, very soon, here on the overall MVP. Yep. And the overall MVPs is looking good, to be honest, Edge. And DK Chips, he performed really well. All these Korean players and teams, they are also performing really good. But No Fear, he gotta be in fear, to be honest, right now, because he's having 24 elimination, and any player can come on top and exchange his spot. But Wong Yong right now, he's going to get replaced, as we were talking about. Godless 79 unlocking his whole potential with 26 elimination and 33 knockouts. Edge, next match is gonna be Miramar. I feel like we will be witnessing a mix of everything, a balanced gameplay. But what do you think, Edge? What are your expectations from the upcoming van? Do you think that we can witness those 4v4 battles from the start itself, and then a very slow circle, a very slow-paced game at the end of the game? That's been the situation usually, and we can just see APG just getting the 101. I mean, the 101st vote there. Also, we got just push down there in terms of the votes there coming in. Once again, ladies and gentlemen, this is the number of votes that you guys have pulled in. All you need to do to vote for your favorite team is type in hashtag your favorite team's team tag into the chat. And what it does is it helps the team qualify to the grand finals regardless of the position of the overall. Top 2 teams in this list with the highest number of votes will be qualifying to the grand finals regardless of the position of the overall, regardless of what how many points that they accumulate in the playoffs. Usually it's Four Tribes and DRS, and looks like it might just be them yet again. Exactly. Four Tribes and DRS fans, they're looking good. And look at that. I was talking about that thing only. It क्योंकि आज के दिन के अंदर Four Tribes की टीम यहाँ पर हम लोग को खेलते हुए देखने को मिल जाएगी. And उनके players and especially उनके fans, not players, actually उनके fans यहाँ पर कितने ज़्यादा votes accumulate करके गए थे. उन लोगों के पास में at least 6 से 7 हज़ार
votes एक ही गेम के अंदर यहाँ पर आए, and DRS fans and Force Rise fans, they will always keep on voting for them only. But हम लोग यहाँ पर 2 मैचेस विटनेस कर चुके हैं. आज के दिन का हमारा रहेगा एक आखिरी matchup. Not actually the last matchup, but it's going to be Miramar for sure. I mean, one of those Miramars. And let's see क्या scenarios यहाँ पर आते हैं. And I'm super excited to see DRX especially, how they're going to perform on the map of Miramar, because I feel like it somewhere around whenever we see all these Korean teams, यहाँ पर Miramar के मैच के ऊपर उनकी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन कमांड रहती है. Whenever we are always talking about the map of Miramar, I feel like DRX is one of the teams that I always look forward to. देखते हैं ग्रुप ग्रीन के अंदर भी यहाँ पर हमारी ऐसी बहुत सारी टीम्स रहेंगी जिनका यहाँ पर मिरामार बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है. मैं बात करूँ वार्गे के बारे में, मेरे को लगता है कि वार्गे का यहाँ पर उस टीम का यहाँ पर मिरामार is really strong rather than on the map of Erangel and Rondo. What do you think? I mean, DRS, as you said, definitely, as I already did mention, DRS is going to be the one team that I'm looking out for as well here on the map. I usually do tend towards fast too, but the new attritional players is still probably going to take a little bit of more time for them to, find a foot in the game. At the moment, they're struggling. But apart from that, we've also seen Fortives do really well coming in. We still are waiting to see how DRX will be performing in this one. And I think a lot of these, audiences and me personally are going to be waiting to see how they perform here, because that is one team that we have not seen in the on the map of Miramar and Nongshim as well. Hopefully, they perform a bit better than they did in the map of Rondo and Erangel, picking up the pace there with 3 in the first and the 6 in the second. And now, if they can get 12 points in Miramar, then I'd say it's gradual improvement there. And exactly, there will be some of those gradual improvements. But ladies and gentlemen, and the audience watching out there, this is going to be Asia Pac vs Shakhtar third. Their qualifiers phase third and match number 15. Third day it's gonna be. And देखते हैं यहाँ पर इस मिरामार के मुकाबले के ऊपर कौन सी टीम लेके जाएगी चिकन डिनर को. एंड देखिए, मैच शुरू होने से पहले आप लोगों से एक दरख्वास्त रहेगी, रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप लोगों ने अभी तक यहाँ पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए जल्दी से आके 141 esports को सब्सक्राइब करिए, बिकॉज द चैनल इज रियली क्लोज टू 45k सब्सक्राइबर्स एंड एक एलीट गोल रहने जा रहा है हमारा 50k subscribers. We already reached 40. So go and subscribe right now. But let's just have a look onto the game, onto the mini map, because हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं Los Leones flight path के आसपास, and it's going to be the biggest city of the map. Picado, it's going to be the heart of the map. Then Petron, St. Martin, Power Grid, Montenovo, Post, Stratafields, La Cobria, Water Treatment, Cruz the Valley. कुछ ऐसे रीजन रहेंगे जहाँ पर टीम्स उतरने का ट्राई करेंगे, एंड यहाँ पर एक रेडियस के अंदर है इस फ्लाइट पाथ के आसपास, सो इजीली वहां पर ग्लाइडिंग करके पहुंच सकते हैं. बट मैं बोलूंगा यहाँ पर तोरे अमूदा, एलजार, कैंपर मिलिटार, कुछ ऐसे रीजन रहेंगे जहां पर प्लेयर्स को जाने में थोड़ी बहुत दिक्कतें रहेंगी. बहुत ही ज्यादा लंबा ग्लाइड चैट से उन लोगों को करना पड़ सकता है. बट अभी के लिए हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं इम्पाला. दैट इज गोइंग टू बी अ प्लेस दैट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, क्योंकि इम्पाला के ऊपर भी हम लोगों ने 2 फाइट्स देखी है. बट एक बार इस जोन देखिए, द जोन इज लुकिंग गुड टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि नॉर्थ साइड की तरफ इस जोन है पूरा का पूरा शिफ्ट होता हुआ. मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं इस जोन वाटर ट्रीटमेंट क्रूज द वेल रीजन में फिनिश ऑफ हो सकता है एंड सर्कल्स के अंदर. Yeah, I mean the circle going towards the up north region of the map. It is definitely not going to be having any of the water bodies which I was hoping for, at least here on the map of Miramar. But let's see, as we already head down to Hacienda del Petron where DRS are headed. They will be safe at the moment, no real casualties there. But T2K in the heat of Maharani. Well, that was a very quick elimination there coming in. Team Secret, they'll be happy. T2K on the other hand, I don't know if that's a misplay, because he was isolated there for a second and taken down in the blink of an eye. Very quick, but very important frag for the side of Team Secret. And now T2K, already jumping with just 3 players, have lost 1, which means they're down to 2. It's a 4v2. Team Secret might be looking for 2 more. That's true. 18 teams and 70
खिलाड़ी अभी भी यहाँ पर मैच के अंदर 2 ही मिनट्स हुए हैं, बट टीम टूटे को ई-स्पोर्ट्स उन लोगों के लिए यहाँ पर दिक्कतें बहुत ज़्यादा बनती हुई क्योंकि 3 प्लेयर्स के साथ में यहाँ पर उतरे थे एंड एक प्लेयर को यहाँ पर खामियाजा उन लोगों को भुगतना पड़ा, जिसकी वजह से मैं बोलूँगा शायद से टीटो के ई-स्पोर्ट्स दिक्कतें बन सकती है उस टीम के लिए। एंड यहाँ पे जो 4v4 बैटल्स है जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्लो डाउन होती हुई मेरे को लगा था शायद से हम मिरामार के मुकाबले के ऊपर एक हाई पेस्ड गेम प्ले देख सकते हैं, बट अभी के लिए यहाँ पे फाइट्स दे आर गोइंग टू हेल डाउन अ लिटिल बिट। टीम सीक्रेट्स रोंडो के मुकाबले के ऊपर हालांकि वो जो चिकन डिनर है उनके हाथ में आते ही आते रह गया एंड वो चिकन डिनर मेरे को लग रहा था कहीं ना कहीं शायद से आ सकता है इनके हाथों में, बट एज दे चोक्ड अप एंड दे एक्चुअली लॉस्ट देयर चिकन डिनर। टीम सीक्रेट वो गलती दोबारा से नहीं दोहराएंगे एंड ट्राई करेंगे यहाँ पर और भी ज्यादा एलिमिनेशन पॉइंट्स लेने के बाद में चिकन डिनर अपने हाथ में लेके जाए, नजाकत से यहाँ पर इस मैच के अंदर खेलें। खामियाजा कोई भी प्लेयर का यहाँ पर नहीं भुगतना चाहिए, बेहतरीन तरीके से अजय को डाउन किया जाएगा एंड टीटू के ई-स्पोर्ट्स को आखिरी खिलाड़ी जिंदा रहेगा जो रहेगा इग्निस एंड आई डोंट थिंक सो एच टीम सीक्रेट्स ये भूखे शिकारियों के जैसे आगे बढ़ते हुए टीम सीक्रेट्स का वो ये जो खिलाड़ी है इग्निस के आसपास एंड शायद से स्पॉट करेंगे एंड फाइट भी बहुत ही जल्द स्टार्ट हो जाएगी। एज व्हाट डू यू थिंक, कैन ही एक्चुअली पिक अप अ 1v4? आई डोंट थिंक सो मैन, इट्स गोना बी इजी। The thing is, शायद से information leak and no, he's really low to the HP, knockout यहाँ पे नहीं आ सकता and Ignis शायद से एक नॉकआउट ले सकते हैं, फिनिश ऑफ कर सकते हैं प्लेयर को। टीम सीक्रेट्स का वो जो खिलाड़ी है, he is not in a better situation. Gotta be cautious. T2K, Ignis, the only one standing. Team Secret might be able to take down T2K, and this probably is going to be the first squad wipe. Ignis drops one though. Will he be able to capitalize? Does have a Uzi in the hand, but it's not going to be enough. The other weapons reign supreme, and T2K are gone. First one to be eliminated here on the map of Miramar. 3 eliminations into the account of Team Secret. Now, starting off on a decent note, Team Secret, they'll be up to 19 points. 3 teams already in these 2 groups have already, successfully gotten those 100 plus points. FN, I believe RQ, and SCYTES. So all 3 teams have been first things first. Congratulations, but now what matters is the discipline. What matters is the gap that they will be building up to. That is the most important factor. They will be done with 18 games by the end of today, 24 by the end of tomorrow, which means they'll be done with all of these matches, all of their matches. So they will have to just wait and watch and hope that their points are not going to be surpassed by other teams here in Group Red or Group Green. So for that, all the teams in Group Blue, they will need immense amount of points and total confidence for sure. जी हाँ बिल्कुल, टीम 4 थ्राइव्स हमारी स्क्रीन के ऊपर एंड IQ, I have never seen IQ driving a vehicle on the map of Miramar, क्योंकि हमेशा या तो वो ऊंट पकड़ेंगे या तो कोई घोड़ा पकड़ लेंगे और वही चलाते रहेंगे. But IQ, I have to say, I've never seen him driving a vehicle. Edge, I mean, maybe I do have some memory loss, but have you ever seen IQ driving a vehicle? I personally don't recall either. I think he has his priorities set there. I think he enjoys an occasional ride here and there. And plus, I mean, camels on the hog. that is the case. They're really, yeah. I mean, it's actually really fun. In the midst of all this, BTR are finding people on the side of VOIN. They find 2 and take them down as well. जी हाँ बिल्कुल, टीम BTR बेहतरीन तरीके से यहाँ पर 2 एलिमिनेशन पॉइंट्स का इजाफा करेंगे एंड चंद प्लेयर्स को दूर दराज के इलाकों से स्प्रेज लेके एंड डाउन करेंगे. वॉइन ई-स्पोर्ट्स के खिलाड़ी लोग जस्ट अगेंस्ट है. जो इंडोनेशियन टीम है, एक और इंडोनेशियन टीम के अगेंस्ट क्लैश ली तो थी, बट वॉइन ई-स्पोर्ट्स के वो जो 2 आखिरी खिलाड़ी है कहाँ पर है और किस इलाके में जिंदा है वो एक बार हम जरूर देखेंगे. बट अभी के लिए हम देख सकते हैं टीम साइट्स के प्लेयर्स बूम ई-स्पोर्ट्स के अगेंस्ट. सो यहाँ पर फाइट स्टार्ट हो चुके हैं. स्पेशली मैं बोलूँगा ये जो जोन है ना क्लोज इन हो रहा है एंड ये जो फाइट्स यहाँ पर रोटेशन क्लैशेस की फाइट्स यहाँ पे चलती हुई 2004 with his mini 14 in his hand, शॉट्स यहाँ पे लेने का ट्राई किया. यहाँ पे कुछ शॉट्स के कंडीशन आएंगे बट बूम ई-स्पोर्ट्स क्लोज रेंज फाइट्स टीम साइट्स के अगेंस्ट एंड वो जो पाकिस्तानी टीम है शायद से उनको थोड़ा बहुत खामियाजा भुगतना पड़ सकता है. बट टीम FN अपने डिस्टेंस को क्लोज इन करेगी. यहाँ पर आ जाएगी ये एक फाइट
अगेंस्ट बूम ई स्पोर्ट्स के, सो बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। कभी भी ये जो फाइट है यहाँ पर इनिशिएट हो सके बूम ई स्पोर्ट्स देखिए साइट्स के अगेंस्ट यहाँ पर किलफीड के अंदर बार बार एक्टिवेशन आएगा। एएसआई ई स्पोर्ट्स टीम 52 को सपोर्ट करेंगे। जो रोटेशन क्लैशेस है यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं। मैं वही बात कर रहा था, शुरुआत में अगर हम लोग को फाइट नहीं देखने को मिलेगी तो एंड के सर्कल्स में या फिर रोटेशन क्लैशेस में हम लोग को मजीद फाइट्स देखने को मिलेंगी। एंड टीम 4 स्ट्राइक्स भी यहाँ पर इस फाइट के अंदर आती हुई ग्रेवयार्ड एंड सेंट मार्टिन के इलाके में बेहतरीन स्प्रे प्रीतम की तरफ से, बट पीछे से टीम 52 को वो जो खिलाड़ी है प्रीतम के ऊपर नॉकआउट करेगा। क्या स्लैमन करेगी टीम 52? एंड शायद से जी हाँ बिल्कुल स्लैमन आएगा एज। They're coming in hard, they're coming in quick as well. SI8, Prism's already gone. Will they be able to go for more is the question at 50 esports. They understand this. They realize that one player is down already, and Prism, I think, is going to be bidding farewell to his team. Probably. We got to be careful. We're going to wait and watch. The grenades are going to be coming in, and that's okay. Oh, they do drop a bullet into the face of Prism. K2, he understands this situation and immediately takes down Agent 47. And K2 is burning down to his knees now. Unfortunately, it's Zone Molotov. Okay, that is an unfortunate turn of events for them. It's K2. He will get taken down. I don't think the elimination point has been given away though. Let me just confirm that. Yeah, the elimination point will not be going in the favor of 52 esports. So I'm not really sure if it's intentional anymore. But if it is, then yeah, well played. If it's not, then still well played because the point is has not gone into their account as DRS will go for a squad wipe here on the side of SKYFORCE. जी हाँ बिल्कुल, डीआरएस गेमिंग बेहतरीन तरीके से यहाँ पर टीम स्काई फोर्सेस को बाहर करेंगे। स्काई फोर्सेस आज के दिन के अंदर यहाँ पर थोड़ा बहुत स्ट्रगल करते हुए, देखिए कल के दिन के अंदर टॉप 5 के अंदर स्काई फोर्सेस ने अपना स्पॉट बनाया था, बट आज के दिन के अंदर हम यहाँ पर देख रहे हैं स्काई फोर्सेस टॉप 5 से उतरती हुई और 7वें स्पॉट के ऊपर। एंड फोर्थ अभी के लिए यहाँ पर स्पॉट किया जाएगा आईक्यू की तरफ से। बेहतरीन स्प्रे कंफर्मेशन यहाँ पर उस प्लेयर का आएगा। पेंगुइन एक ही फलक यहाँ पर मिड टू लॉन्ग रेंज के अंदर वो जो फाइट है उस M416 से यहाँ पर करते हुए एंड दूर दराज से टीम 4 ट्राइब्स अभी के लिए यहाँ पर फाइट लेगी। ज्यादा एलिमिनेशन पॉइंट्स में बोलूंगा अभी तक यहाँ पर टीम 4 ट्राइब्स के पास है तो नहीं, बट आप यहाँ पर देख सकते हो एज कि अभी भी ओवरऑल स्टैंडिंग्स के अंदर टॉप 10 के अंदर टीम 4 ट्राइब्स अपना स्पॉट लेके जाएगी। 29 पॉइंट्स या फिर 28 पॉइंट्स यहाँ पर टीम 4 ट्राइब्स के पास में अभी तक रहेंगे। जैसे ही 60 पॉइंट से ऊपर क्रॉसिंग करेंगे एज, मैं बोलूंगा फर्स्ट पेज के अंदर उन लोग यहाँ पर एंट्री हो जाएगी। बूम ई-स्पोर्ट्स एक और इंडोनेशियन टीम को स्पॉट करेंगे। ये रहेगी टीम आरक्यू एक 4-4 बैटल के अंदर एंड इसके साथ में पैराग्रास स्प्रे यहाँ पर उनको बचाते हुए केयरफुल रहना पड़ेगा। बट बूम ई-स्पोर्ट्स के कीपर के ऊपर कुछ और आएंगे, ये भी कुछ और आएंगे डाउन यहाँ पर उनको किया जाएगा। इट्स नॉट लुकिंग गुड, यमी, इट इज लुकिंग बैड, द सिनेरियोस इज गुड for the opponent team. It's going to be RRQ, but team 4 tries हमारी स्ट्रिंग के ऊपर and we are going to divert our attention on this team क्योंकि यहाँ पर 2 elimination points लेने के बाद में IQ2 डाउन हो चुके हैं। क्या यहाँ पर कोई एक और प्लेयर रहेंगे? जी हाँ बिल्कुल, इसके साथ में टीम 52 को बाहर करते हुए इस गेम से एलिमिनेशन यहाँ पर उन लोगों को पाएगा। बट फलक जरूर डाउन हुए थे, बट वो जो आखिरी बुलेट की कनेक्शन थी उसे एक ही बिल्कुल लगेगी एंड टीम 52 को करते हुए बाहर। तो 2 इंडोनेशियन टीम्स है फाइट में आती हुई। BLUG esports versus RRQ. Let's see who's having that edge now. I mean, the grenade there after he went down was phenomenal, but at the moment we'll be taking a look at Boom trying to take down the players inside of IQ. Lipa uses the vehicle because it close the distance between him and Yummy will be making him pay at the moment. Pagos Genfos, one standing on the side of IQ, holding on to the ground. Yes, Yummy's trying his best to maybe go for a play. He's gonna get taken down though. Kibo hits the deck too. Now Boom all of a sudden it all comes down to Maul. In a situation where he has to go for a 1v2, maybe even more if the revival comes in, it will be a 1v3. But at the moment, we are diverting now towards VOIN and BTR, and I think VOIN, that's going to be the end, the final nail in the coffin there. As BTR, they will lose one in the middle of all that, but they will take it. They'll get 4 eliminations on the other hand. Absolutely. बूम ई-स्पोर्ट्स जैसे हम लोगों ने अपना कैमरा डायरेक्शन चेंज किया एंड स्पेक्टेट किया बूम ई-स्पोर्ट्स को, we saw the sprays incoming एंड यहाँ से इसके साथ में बूम ई-स्पोर्ट्स बाहर होते हुए। टीम फ्लैश हालांकि यहाँ पर उनका भी किलफीड के अंदर एक्टिवेशन आता हुआ है एंड वो भी यहाँ पर फाइट लेंगे टीम सीक्रेट्स के अगेंस्ट। बट अभी के लिए हम लोग यहाँ पर नजर डालेंगे एक बार एफएल शॉ के ऊपर। कोई भी यहाँ पर मैं बोलूंगा इन लोगों के पास में एलिमिनेशन पॉइंट्स नहीं रहेंगे। डोमिनेशन यहाँ पर टीम सीक्रेट्स का वो खिलाड़ी दिखाता हुआ बेहतरीन परफॉर्मेंस यहाँ पर हर एक प्लेयर दिखा रहा है आज। बट टीम एफएन अभी के लिए दिक्कत है शायद से इन लोगों के लिए बन सकती है, बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। Secret.
On the other hand, they will be taking a bit of damage there. They've already lost one player, on the verge of losing another if they don't go for the revival quick. But Team Flash, in the midst of all this, is going to get eliminated too. In position number 13. Team Secret still holding on. Lolwu and Trang, the only one standing right now. Yeah. Ooh, Team Secrets. Did they eliminate? Yeah, absolutely. RRQ out of the equation, out of the match. And Team Secrets एक ही प्लेयर का खामियाजा, बट वेट, SCYTES वो खिलाड़ी यहाँ पर आएगा, बेहतरीन ग्रेनेड यहाँ पर डालेंगे, एंड क्या एक 1v3 हो पाएगा या फिर नहीं? लॉलवू सोलोमन स्टैंडिंग फर्स्ट एड यहाँ पे पॉप करे, दैट इज गोइंग टू बी अ स्मोक, दैट इज गोइंग टू बी अ स्मोक, बाहर निकलेंगे एंड यहाँ पर SCYTES होती हुई एलिमिनेट, 2 एलिमिनेशन के साथ में 11वें पायदान के ऊपर. बट अगर मैं बोलूंगा वो स्मोक नहीं डालते या फिर डायरेक्टली पुशिंग करने की दरख्वास्त रहती तो हो सकता था वो फाइट उनके हाथ में जा सकती थी. बट T24 ओपी का खामियाजा आता हुआ टीम फोर्स ड्राइव्स की तरफ से 2 प्लेयर्स यहां पर जिंदा. टीम सीक्रेट्स के अगेंस्ट शायद से जो फाइट है इनिशिएट हुई है टीम फोर्स ड्राइव्स के पेंगुइन एके फलक टीम HKG के ऊपर शॉट्स लेंगे मिड टू लॉन्ग रेंज की जो फाइट रहेगी वाटर ट्रीटमेंट के आसपास इनिशिएट. बट हुजैफा हमारी स्ट्रेंथ के ऊपर पिछले गेम के अंदर यहां पर हुजैफा नहीं खेलते हुए देखने को मिले थे, एंड हुजैफा एंड फलक द डेडली डुओ, कैन दे एक्चुअली पुल अप द चिकन इन द इट्स पॉसिबल येट like impossible kind of situation as well. But Uzaifa, yeah, absolutely, he was on the camel and body पूरी exposed रहेगी and DRS के players ने यहाँ पर बेहतरीन स्प्रे लिया and Uzaifa को यहाँ पर डाउन किया जाएगा. अभी के लिए यहाँ पर हम लोग को देखने मिल जाएगी फलक द सोलमन स्टार्टिंग फ्रॉम द साइड ऑफ 4 ट्राइब्स, क्या यहाँ पर Uzaifa को रिवाइव करके उस खिलाड़ी को अपने पैरों पर दोबारा से खड़े कर पाएंगे या फिर नहीं, क्योंकि टीम 4 ट्राइब्स बहुत ही ज्यादा नाजुक सिचुएशन के अंदर. इस नाजुक लम्हे से क्या 4 ट्राइब्स उभर पाएगी या फिर नहीं? 4 Tribes, 1 player now. He has to go for the revival and go for a more, as DRS are doing decent. 5 eliminations with 15 minutes on the clock. 10 teams here, 33 players still in the server, and DRS the consistency in terms of the map is shown once again. They will have move up to 7 eliminations as they take down the big ones. The Chicken's Curse once again acting up. 3 eliminations, 31 total points now for 4 tribes. Going into the 3rd game of the day for them. But we will wait to see if DRS can actually capitalize and maybe take down every other squad as well. They're on the verge of getting that 100-point marker for them as well, as they will get themselves to a different position, reposition themselves to a higher ground to have that advantage over multiple teams at the moment. FN Sejong and WARGYE, this could be a fight. At the moment, WARGYE feeling the heat. The feeling the heat, absolutely. FN now एक एलिमिनेशन के साथ में इजाफा करेंगे इस मैच के अंदर और एलिमिनेशन पॉइंट्स लेने पड़ेंगे. बट मौला बेहतरीन नॉकआउट क्रेजी के ऊपर एंड क्रेजी परफॉर्मेंस यहाँ पर दिखाते हुए इसी के साथ में FN फाइनल स्पॉट यहाँ पे प्लेयर्स को तो किया जाएगा. जो पाकिस्तानी टीम है बेहतरीन तरीके से रिटेलिएशन करेंगे, रिट्रीट करने को कोई भी यहाँ पे चांस नहीं रहेगा. बट FN एक रिटेलिएशन के अंदर नॉकआउट एक ट्रेड यहाँ पे निकाला गया था, एंड ट्रेड्स आई से इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट. बट टीम साइट्स पीछे से यहाँ पर आएगी एंड टीम साइट्स ने भी यहाँ पर थर्ड पार्टी के सिनेरियोस बिल्ड अप करेंगे. DRS गेमिंग वर्सेस DRX गेमिंग. यहाँ पर नेपाली जायंट्स and Korean giants, both of the teams are coming into the fight as well. But the biggest FN, they are in a very bad situation. Team WARGYE आगे की तरफ बढ़ते हुए डायरेक्टली यहाँ पे पुशिंग करेंगे. जी हाँ, इसी के साथ में WARGYE बेहतरीन नॉकआउट डाकू यहाँ पे निकालेंगे. एक और नॉकआउट, बेहतरीन जंप शॉट यहाँ पर आता हुआ रेंज की तरफ से FN के फाइनल, और इसके साथ में गोस्ट रहेंगे 2 मैन स्टैंडिंग टीम WARGYE के अगेंस्ट. इसी के साथ में WARGYE अभी के लिए they are playing like hunters. They want to hunt their prey right now. बट हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं टीम WARGYE क्या एलिमिनेट हो गई. जी हाँ, इसी के साथ में WARGYE थोड़ा बहुत ओवर एग्रेस जरूर करी थी, बट कहीं ना कहीं अपर हैंड का एडवांटेज था एज, बट उस एडवांटेज को कैपिटलाइज ना कर पाए. और इसी के साथ में लॉबी तक का रास्ता यहाँ पे टीम WARGYE को दिखाएंगे. इसी के साथ में द टीम इज गॉन. टीम FN having 4 elimination points to walk with finally. Team WARGYE are gone unfortunately with 0 points, so this is not a great game once again for them. HKG are looking good to maybe get more points here. 1 elimination is all they have, but they've also lost 1 player.
Yeah. DRS, wait a second. How did they get eliminated here? Okay, that was DRS unfortunate. game. I actually thought DRS was on the verge of getting a chicken dinner into this one. But that is not the case. They actually get eliminated, but they do have 8 elimination points. They're in the top 7 though, but that's it. We're here now, top 6 players, top 16, and 21 players still in the server. Top 6 teams and 21 players in the server. Still alive. But how long? यहाँ पर आखिर तक मैं बोलूँगा जितने ज़्यादा प्लेयर्स के साथ में आप जिंदा रहते हो उतने ज़्यादा आपके पास में चांसेस रहते हैं चिकन डिनर निकालने के लिए. देखिए एक्सेप्शनल केसेस हम लोगों ने देखे हैं प्लेऑफ्स क्वालिफायर्स के अंदर फेज 3 के अंदर जहाँ पर आप लोग के पास में भले ही एडवांटेज हो मैन एडवांटेज बट कहीं ना कहीं कभी कभार आप लोग चोक कर देते हैं चिकन डिनर आपके हाथ से फिसलते हुए देखने को मिलता है. हम लोग बात कर रहे हैं होरा ई-स्पोर्ट्स टीम पैंडम पहले दिन के अंदर यहाँ पर वो जो चिकन डिनर थे कहीं ना कहीं अपने हाथों में नहीं लेके जा पाए थे. बट अभी के लिए ये रहेगा हमारा आज का तीसरा दिन. की टीम यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर इसके साथ में यहाँ पर स्पॉट किया जाएगा HKG के प्लेयर्स को स्प्रे यहाँ पे लिए जाएंगे. टॉप 5 के अंदर यहाँ पे जो टीम्स हैं वहाँ पे उसमें से सिर्फ और सिर्फ 2 टीम्स अंदर रहेंगी. टीम BTR एंड टीम FN. HKG टीम सीक्रेट्स DRX गेमिंग एंड टीम NS यहाँ पर रहेंगे सेकंड या फिर थर्ड पेज के ऊपर जो स्ट्रगल करते हुए. सो इन टीम्स के लिए चिकन डिनर यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा. हालांकि यहाँ पे टीम BTR एंड टीम FN देयर इन द कंफर्ट जोन ऑफ द फर्स्ट पेज एज. Right now, TRX on our screen with one elimination to work with. That's all it. TRX. I mean, we were waiting to see how they would perform here on the map of Miramar, and unfortunately, this is. I mean, it's not bad yet. 4 players standing, 1 elimination. We'll see how things turn out. It's not over yet. HKG. 2 eliminations. They're on the verge of getting a couple more, but with only 3 players standing, they've got to be careful. They got to be really careful. Team HKG. 3 players के साथ में क्या यहाँ पर अपनी एनिमी टीम्स को एलिमिनेट कर पाएंगे या फिर नहीं. देखिए द क्वेश्चन इज गोना बी अ ह्यूज क्वेश्चन बट DRX ग्रेनेड्स यहाँ पे स्पैम करते जाएंगे. HKG का ये जो खिलाड़ी है ज़ेरो इनकी परफॉर्मेंस यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन पिछले दिनों के अंदर है. मैं बोलूँगा जो पोजीशनिंग है अभी वो भी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है. जो ग्रेनेड है प्रॉमिसिंग जो ग्रेनेड है नॉकआउट लेके जा सकता है. रिट्रालिएशन के नॉकआउट अंदर आएगा HKG का आखिरी खिलाड़ी. एंड आई गेस दे आर गॉन टू द क्रिस्प. Ouch. I mean, we were just talking about them once again, man. I mean, this has to hurt. HKG going down to just one more, going down to just 1 player now with 2 eliminations coming in. This is turning out to be a not so great match for them once again in terms of position placement. Okay, never mind. In terms of that as well, it's not good. They're gone in 6th position. We're down to top 5. FN, Nongshim, DRX, PTR and Team Secret. There's going to be a fight between DRX and PTR here, looks like it. And DRX are holding on to their ground at the moment. They've lost 1. They don't even have a lot of eliminations to show for in this one. And I think if this is the first Miramar, I think we can excuse DRX, right? I think they're just once again getting the feel of the lobby at the moment, trying to understand how everyone's trying to perform here. True, team BTR and we are down to our top 5 teams. इसी के साथ में यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं टीम BTR के पास में क्यों वो नहीं देखने को मिलेंगे एंड खामियाजा उनको भुगतना पड़ा है. बट बिगली DRX एंड SNFN उन लोगों के पास में रहेंगे 4 प्लेयर्स. टीम BTR एंड टीम सीक्रेट्स ऐसी 2 टीम रहेंगी जिनके पास में कोई भी एक और प्लेयर नहीं है. 3 मैन स्टैंडिंग के साथ में यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ते हुए देखते किस तरीके से स्ट्रैटेजीज को यूज करते हैं. वो फाइट्स के अंदर बेहतरीन ग्रेनेड यहाँ पर फेडलेस की तरफ से मुंह पे जाकर फटेगा. इसके साथ में फेडलेस आगे की तरफ बढ़ेंगे. टीम BTR रिटेलिएशन में बहुत ज्यादा बेहतरीन DRX के ऊपर यहाँ पर कहर मचाते हुए बेहतरीन स्प्रे का उस कारल के साथ में
K49 हाथ में ऑटो पे जो चल रही है गन, बहुत ही ज्यादा इंसेन। पर अभी के लिए यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं 2004 स्क्रीन के ऊपर एनएसी के साथ में टीम टीआरएक्स को करते हुए बाहर एलिमिनेट होगी 5वें पायदान के ऊपर। And of course, it's gonna be Team PTR eliminating Team TRX, and we are down to a top 4 teams edge. Let's just see which team will be making this chicken dinner happen, because this match is getting intense and intense every moment. TRX gone too. Pretty unfortunate for them in terms of elimination points. Even position, not that great. For top 5, decent enough, but still it won't be enough to give them a boost on the overall standings at the moment. 10 eliminations for Team Secret, and looks like they might just be the ones coming out on top. One last player standing for the side of FN. Nongshim have 4. BTR have 3. And FN, they're on the verge of losing everyone. Just one player standing as as the last player now survives. Team Secret, they will lose Lolvu too. It's a 1v1 situation between Frank and Final. Yeah, and Team Secrets देखते ही देखते टीम यहाँ से बाहर होते हुए डोमिनेशन भले कर रहे थे, बट इसके साथ में टीम सीक्रेट्स के खिलाड़ी होते हुए बाहर। एफएन का एक आखिरी खिलाड़ी जिंदा रहेगा। 2 प्लेयर्स यहाँ पे लॉबी तक रास्ता पकड़ते हुए, एक प्लेयर यहाँ पे ब्लीड करता हुआ नॉकआउट सिचुएशन के अंदर। एंड अभी के लिए यहाँ पे दूर दराज से कुछ टीम्स और भी ज्यादा क्लोजिंग करेंगे। टीम बीटीआर वर्सेस नॉन्गशिम रेड फोर्सेस, ये जो एक और कोरियन टीम है इंडोनेशियन की, इनके अगेंस्ट फेडल इसको डाउन करेंगे। स्टोर के बेहतरीन शॉट 2004 इनकी भी पोजीशनिंग रिवील इंटेल एंड इंफॉर्मेशन हाथ में रहेगी। रीड यहाँ पे प्लेयर को किया जाएगा। आखिरी प्लेयर यहाँ पे क्या क्लच कर पाएंगे या फिर नहीं, लगता तो नहीं है, और इसके साथ में बाहर हो जाएंगे। एंड नॉन्गशिम रेड फोर्सेस, ये जो कोरियन टीम है, शायद से आज के दिन के अंदर अपना पहला चिकन डिनर एशिया बाल वो अपने 3rd के अंदर लेके जाएंगे आज। Might just be on the verge of getting a decent game after all. 4 players standing against 2 on the side of FN. The players are now being scouted. They are spotted. FN on the verge of getting eliminated here, but maybe not yet. Final maybe has something to say about this. He will be able to get one. Can he turn it around? He needs to work harder, as he will go for the elimination points. He understands the situation. But yes. Oh. 1v2. 1v3 actually. Ghost. Solo man sang and he's gone. And there we have it. They're taking the first winner with the chicken dinner of the day. What a great performance it was. And finally they are here coming up with a bang. Especially all these Korean teams. They are playing great edge. And finally we can see what a great chicken dinner happening from the side of Team FN. This was indeed needed. An edge. What a great matchup it was. And we are done. But Miramar will be having a look on the match highlights. But it was a great matchup. It is a great end once again coming in, and Nongshim finally picking up some numbers for themselves, and those were very crucial. That chicken dinner is helping them. It's important, and now with that confidence that they have, probably the second cycle of maps is going to be better for them coming in, because the first 2 matches were not so great, but the last one, that is a Miramar, this one, the match highlight that we have on our screen right now. This was a better situation for them. Indeed, that was a better situation. Boom Esports, they also had a really good fight, I'd say. But now we can see Team BTR. They performed really well, man. Team BTR, they were yet too close, yet too far to make that chicken dinner happen. But especially Team Secrets, they also performed really good. And Team Secrets, man, this fight against Team ESPORTS, that was really close. I felt like somewhere around that Team Secrets, they might actually get eliminated. We can see a great 1v3 from the side of ESPORTS player, but it did not happen. In Team BTR, they performed really good and eliminated DRX. Somewhere around DRX, they also performed really good. But the map of Miramar for DRX, it was really slow.
एंड चिकन डिनर्स यहाँ पर DRX की तरफ से नहीं आएंगे। एंड इसी के साथ में यहाँ पर आखिरी नॉन्गशिम रेड फोर्सेस का बेहतरीन नॉकआउट एंड शाहजहां, ये था उन लोगों का विनिंग मोमेंट एंड बेहतरीन परफॉर्मेंस यहाँ पर हर टीम ने दिखाई, हर प्लेयर ने दिखाई। ये जो मैच हाईलाइट्स हैं यहाँ पर ऑडियंस को एक छोटा सा ब्रीफ देंगे कि कैसी परफॉर्मेंस यहाँ पर हम लोगों ने पिछले मैच के अंदर देखी। एंड जो भी ऑडियंस अभी यहाँ पर ज्वाइन कर रही है, प्लीज जाइए जल्दी से आके चैनल को सब्सक्राइब करिए, बिकॉज वी आर रियली क्लोज टू हिट 45k subscribers. So go right now and subscribe the channel. But let's just have a look on the team stats of Team NS Non-String Rift Forces. Because यहाँ पर ये टीम लेके जाएगी 6 elimination points and 16 points in total with chicken dinner. राइट सो मैं बोलूंगा एक बहुत ही ज्यादा डिसेंट परफॉर्मेंस। एंड मिरामार का मैच इन लोगों के लिए यहाँ पर इट टर्न्ड आउट टू बी अ डिसेंट वन। ज्यादा मैं बोलूंगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं हम लोग को देखने को मिली, इट वाज जस्ट अ वेरी डिसेंट वन, बट गुड परफॉर्मेंस ओवरऑल एंड इट वाज इंडीड नीडेड, क्योंकि इस टीम ने यहाँ पर शायद से आज का इनका पहला दिन है जब ये लोग खेल रहे हैं। आज के दिन के अंदर चिकन डिनर लेके जाएंगे, कॉन्फिडेंस भी यहाँ पर बरकरार बखूबी तरीके से इनके ऊपर बना रहेगा। एंड अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पर इन्होंने दिखाई आज के दिन के अंदर एंड बेहतरीन यहाँ पर प्लेयर्स और खिलाड़ियों ने खेला। इसके बाद एक बार हम लोग नजर डालेंगे हमारे MVP के ऊपर एंड BTR कैंट लेके जाएंगे MVP का खिताब विद 5 एलिमिनेशन एंड 3 नॉकआउट्स। बेहतरीन परफॉर्मेंस यहाँ पर इन्होंने भी दिखाई एंड बेहतरीन परफॉर्मेंस यहाँ पर सभी प्लेयर्स ने भी दिखाई थी BTR की। बट वो जो चिकन डिनर था, लग तो रहा था शायद से टीम BTR लेके जा सकती है, लग तो रहा था कि इंडोनेशियन टीम चिकन डिनर लेके जा सकती है, बट वो चीज यहाँ पर अभी तक के लिए हमको होती हुई नहीं देखने को मिली। मैन आई हैव टू से इट वाज रियली गुड मैच। नजर डालते हैं हमारे टॉप 4 प्लेयर्स के ऊपर, क्योंकि हम लोग को देखने को मिल जाएंगे टीम सीक्रेट्स के तरंग विद 5 एलिमिनेशन फाइनल फ्रॉम द साइड ऑफ टीम FN। ही विल बी टेकिंग 4 एलिमिनेशन एंड नाउ we can see Team Secret Slow. He is also there taking more and more elimination, and he will be taking 4 eliminations simultaneously as well. So good performance overall it was. But इसके बाद में हम लोग एक बारी देखेंगे teams to watch out next match के अंदर, and कहीं ना कहीं हम लोग को BTR भी देखने को मिलेगी। टीम सीक्रेट्स could be also a team, but टीम FN तो होगी उन्होंने चिकन डिनर लिया था पिछले मैच के अंदर। देखते हैं यहाँ पर कितनी कौन कौन सी टीम हम लोग को टीम्स टू वॉच आउट के अंदर देखने को मिलेंगी। एंड लेट्स जस्ट हैव अ लुक ऑनटू द टीम्स टू वॉच आउट। ये होगी हमारी टीम सीक्रेट्स, टीम DRS गेमिंग फ्रॉम नेपाल, टीम PTR फ्रॉम इंडोनेशिया एंड टीम FN शाओशांग फ्रॉम द साइड ऑफ कोरिया। ग्रेट परफॉर्मेंस ऑल दीज 4 टीम्स एंड ऑल द प्लेयर्स ऑफ दोस टीम्स। देखते हैं नेक्स्ट मैच के अंदर जो रहेगा रोंडो का मुकाबला, उसके अंदर यहाँ पर चिकन डिनर आ पता है या फिर नहीं। एंड स्पेशली देखिए कुछ टीम्स का यहाँ पर अगर इरांगल स्ट्रॉन्ग नहीं है, मिरामार स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो रोंडो का मुकाबला ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। देखिए आज के दिन के अंदर यहाँ पर भले ही टीम्स यहाँ पर कुछ टीम्स चिकन डिनर ना ले पाई रोंडो के मुकाबले के ऊपर, नेक्स्ट मैच के अंदर पूरा ट्राई करेंगे, दिल ट्राई द लेवल बेस्ट टू पिक अप दैट चिकन डिनर। हालांकि एक बार एक दफा हम लोग नजर डालेंगे और आगे बढ़ाएंगे यहाँ पर हमारे मैच समरी के ऊपर, क्योंकि 67 टोटल एलिमिनेशन हम लोगों को देखने को मिले। 4 ग्रेनेड एलिमिनेशन, एक एयर ड्रॉप जो था वो लूटा गया था, वो BTR नहीं लूटा था, बिकॉज़ दे वर हैविंग दैट MK47 टू वर्क विद। 8000 से ज्यादा यहाँ पर हीलिंग्स को पैच ऑफ किया गया था पिछले मैच के अंदर। एंड JKMJ लेके जाएंगे यहाँ पर लॉन्गेस्ट एलिमिनेशन प्रीवियस मैच के अंदर जो था मिरामार का मुकाबला। मिरामार का मुकाबला टीम सीक्रेट्स के लिए डिड नॉट टर्न आउट टू बी द बेस्ट वन, बट आईड से इट वाज अ डिसेंट वन। मैच रैंकिंग्स के ऊपर नजर डाले हम लोग, यहाँ पर एनएस के पास में रहेंगे यहाँ पर 16 एलिमिनेशन पॉइंट्स, एक्चुअली टोटल पॉइंट्स नॉट एक्चुअली एलिमिनेशन पॉइंट्स। 6 एलिमिनेशन पॉइंट्स रहेंगे यार, 10 पॉइंट्स चिकन डिनर पोजीशनिंग के लिए। टीम सीक्रेट्स लेके जाएगी यहाँ पर 12 एलिमिनेशन पॉइंट्स, उसके साथ में 16 टोटल पॉइंट्स उनके पास में रहेंगे। BTR के पास में रहेंगे 15, टीम FN के पास में रहेंगे 12, DRS के पास में रहेंगे 9। From the spot from 6 to 11, DRX, RQ, Boom Esports, Team HKG, Team Fourth Drives, Team 52 Esports into the mid phase के अंदर यहाँ पर eliminate हुए थे। But हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं from the 12th spot to the 18th spot, all these teams they got eliminated way too early, and यहाँ पर इन लोगों के जो elimination points थे कहीं ना कहीं distribute हुए थे lobby के अंदर, इन सर्वर के अंदर, and they're gone। नजर डालते हैं हम लोग यहाँ पर ओवरऑल रैंकिंग्स के अंदर, क्योंकि जो भी टीम्स यहाँ पर अभी तक फर्स्ट पेज पर हैं ओवरऑल रैंकिंग्स में, उन लोगों को यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। दे आर हैविंग अ रियली रियली गुड टाइम। स्पेशली यहाँ पर जो भी टीम्स यहाँ पर फर्स्ट पेज में रहेंगी, I'd say they are in the green zone, so they don't have to worry about anything, and they're just enjoying that comfort zone right now.
the comfort zone. Indeed, these teams are going to be in a situation where they don't really have to worry about a lot of the changes coming up at the moment. But the teams in the middle order and the teams at the very bottom, right now, those are the teams that need some checking up to do. I mean, you can see D plus K is still sitting on that number one spot, even though FNRQ, BTR, and Sites are still playing today. 3 matches down, and they're still not even close. I mean, yeah, fine, sure, 8 points, but still difference. Yep, they will be having the difference, and especially team 11 यहाँ पर हम उन लोगों के बारे में बात करें, so उन लोगों की परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं मैं बोलूँगा ज़्यादा बेहतरीन तो नहीं थी, and team 11 they did really choke up a lot into the previous day, right? and ज़्यादा बेहतरीन परफॉर्मेंस यहाँ पर टीम उस टीम ने नहीं दिखाई, बट देखते हैं आज के दिन के अंदर यहाँ पर वो टीम कैसे खेलती है, एंड कुछ इजाफा यहाँ पर हम लोग को देखने को मिलेगा या फिर नहीं. And Edge, man, oh man, I mean, every team is just putting up a show for us. Every team is performing really, really good. But Edge, what do you think? It is the map of Rondo, which team might actually pick up a chicken dinner? Because यहाँ पर आज के दिन के अंदर जिस तरीके से हमने एनालाइज किया, जो फ्लो हम लोग को देखने को मिला है टीम्स का, आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट मैच के अंदर कौन सी टीम चिकन डिनर लेके जा सकती है? I think it's about time someone like T2K, maybe BTR, can actually come out on top and take it. I mean, Sites has been really good as well. They're on the verge of getting some really good numbers, and I think they have a really good chance to maybe turn the tide around and get a chicken dinner for themselves going into the next cycle of maps here. Rondo, Erangel, Miramar yet again. As we take a look at the second page on the overall rankings, we have Pandum on 10th position, SKYFORCE on 11th, Flash on 12th, HKG on 13th, All Three goes on 14th, 2K on 15th, BLUG on 16th, APG on 17th, and Team Secret on 18th position. Now jumping into the second page as well. जी हाँ बिल्कुल, द जंपिंग अप टू द सेकंड पेज एज वेल, एंड थर्ड पेज जो रहेगा यहाँ पर टीम्स को थोड़ा बहुत मैं बोलूँगा दिक्कतें बन सकती हैं उन टीम्स के लिए, अगर उन लोगों ने आगे आने वाले मैचेस के अंदर अच्छा परफॉर्म नहीं किया या फिर डिसेंट परफॉर्मेंस नहीं दिखाई. मैं बोलूँगा उन टीम्स के लिए यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें बन सकती हैं. सो इट्स बेटर टू परफॉर्म और एल्स एज मे बी हो सकता है एशिया बाइलवर्स चैप्टर थर्ड उन लोग के हाथों से स्लिप हो सकता है, ग्रैंड फाइनल्स तक का रास्ता, ग्रैंड फाइनल्स का की टिकट उनको नहीं मिलेगी, एंड एलिमिनेशन उन लोग का हो सकता है, क्वालिफिकेशन यहाँ पर हम लोग को उस टीम का नहीं देखने को मिलेगा. सो देखते हैं यहाँ पर टीम्स कैसे परफॉर्म करती है, बट स्पेशली टीम्स ऑन द थर्ड पेज स्ट्रगलिंग द मोस्ट. It's important for them to perform now. It's a do and die situation for them, Edge. It is a do or die situation for sure. But there's still time if you're in Group Green, of course. But Group Blue, if anyone of you guys are in Phase 2 and Phase 3, you probably need to work a little harder and turn the tide for yourself. Get the momentum in your favor. Otherwise, as Inferno said, it's the pressure's building up, and I mean, any of these teams, they might break anytime soon. Exactly. Let's just have a look on the overall MVP. And Godless will be taking 26 elimination and 33 knockouts. No, I'd say changes whatsoever in the overall MVP right now, and everything is looking so damn promising from the side of Godless, and especially यहाँ पर सभी लोग मैं बोलूँगा स्काईफोर्सेस की तरफ से बेहतरीन परफॉर्म करते, बट गॉडलेस राइट नाउ ही इज जस्ट परफॉर्मिंग आउटस्टैंडिंग, एंड द Xavier's Wong Yong, RQ Firen, Fatalist, Chips from the side of DK will be joining the top 5 MVP as well. And I guess HORAA esports के Sleepy, he has been, it was actually No Fear जिनको यहाँ पर डिथ्रोन कर दिया जाएगा, एंड ओवरऑल MVP के अंदर यहाँ पर उनका जो टाइटल है वो छीन लिया जाएगा फेडलेस की तरफ से. Well, the overall MVP, I mean, it's still Godless on the side of Skyforce, so he's happy with this. Both tribes, on the other hand, 12,000 oh wow, I was going to say damage, but then 12,000 plus votes coming in, pulled in by you guys watching at home or from wherever on YouTube. And well, all you need to do to vote for your favorite team is type in hashtag team tag into the chat, and there will be a vote counted up against that team, and the team with the top number of votes, the top 2 teams with the highest number of votes
will be moving to the grand finals, regardless of the position on the overall, in terms of position, in terms of points. It doesn't matter. They will make it to the grand finals. And then, top 16, other than them, will be moving forward too. एग्जैक्टली देखिए यहाँ पर जो वोट्स है एक्यूमुलेट किए हैं फोर्थ ट्राइब्स के फैंस और डीआरएस के फैंस ने, जो वोटिंग यहाँ पर हेल्प करेगी इन टीम्स को, एक्चुअली दो ही टीम्स को, जो दो हमारी फैन फेवरेट टीम रहेगी वो टॉप 18 के अंदर क्वालिफाई करेंगे, एंड आगे आने वाले समय के अंदर वो जो टीम्स हैं उनको क्वालिफिकेशन वोट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर होगा। तो जाइए जल्दी से आके वोट करिए। वोटिंग सिस्टम यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ईजी रहेगा। आपको लिखना है एक्सक्लेमेशन मार्क यूट्यूब कमेंट चैट सेक्शन के अंदर, राइट, चैट जो लाइव चैट है उसके अंदर आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो हैशटैग, उसके साथ में यहाँ पर आप लोग को लिखना है टीम टैग। अगर आप मान के चलिए, अगर आप लोग FN शोयांग को सपोर्ट करना चाहते हो उस टीम को, सो आप लोगों को हैशटैग FN लिखना है, एक बार सेंड कर देना, दैट्स ऑल। आप लोगों का जो वोट है उस टीम के लिए यहाँ पर काउंट हो जाएगा एंड यहाँ पर वो वोट जो है शो करेगा। सो जाइए जल्दी से आके वोट करिए यहाँ पर अपनी फेवरेट टीम को। बट अभी के लिए यहाँ पर DRS के फैंस एंड फोर्थ ट्राइब्स के फैंस, दे आर सपोर्टिंग दैट टीम द मोस्ट। They've always been the unhinged the fans here for the side of four tribes, and there's a reason why they've always been selected as the fan favorites, and also it's also in their performance, right? I mean, there's a reason why people like them. Is the fact that they actually do play out of their mind. They have incredible performances in recent times, and like keeping it forward. And DRS, once again, same thing could be said about them. But there is still room for improvement for both of these squads. I mean, exactly. There's room for improvement. Everyone, be it squad, be it any player watching right now on our stream, right? And to the audience watching out there, अगर आप लोगों ने अभी तक यहाँ पर 141 esports के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए, अभी जाके सब्सक्राइब करिए। एंड क्योंकि हमारा चैनल है बहुत ज्यादा 45k सब्सक्राइबर्स के, तो जाइए अभी जाके सब्सक्राइब करिए। एंड 50k सब्सक्राइबर्स भी कराने हैं, तो अभी जाके सब्सक्राइब करिए एंड सपोर्ट करिए यहाँ पर 141 esports के चैनल को, बिकॉज वी विल बी ब्रिंगिंग अप more and more tournaments for you all into the upcoming days. Let's just have a look on the map rotation. Yeah. I mean, we've already had three different winners from three different regions too. So now going into the next cycle of maps, right? We will be probably looking forward to different winners coming in. What do you think? Do you think a repeated winner or a different winner too? Different winner, man. I need those spices, right? I need those spicier matches incoming, and then I need those intense battle. So I stick with the question of the answer. It's gonna be different winner. But ladies and gentlemen, it's gonna be Asia Battle Chapter 3rd, Phase 3rd, Playoffs Qualifiers, and match number 16. And Rondo, it's gonna be a cycle को दोबारा से हम लोग इनिशिएट करेंगे। देखते हैं इस मैच के ऊपर कौन सी टीम लेके जाएगी चिकन डिनर और कौन सी टीम बनेगी विजेता, क्योंकि रोंडो का मुकाबला आपका पेस सेट करेगा आगे आने वाले मैचेस के अंदर, आगे आने वाले दिन के अंदर। But look at the flight path, man. It's looking interesting because the teams needs to go from the east to west. They can also go gliding easily. Teams to go from the south to north, they can also glide anywhere. It's a really good flight path, to be honest. Multi-flight paths are always fun to watch. Now waiting for the circle to come into play to see where we're going to be leaning towards the end of the game. Once again, New York's factory is going to be the hotspot for a lot of these fights. Pretty early into the game, that is, of course. And we've seen a lot of these circles yesterday leaning towards the New York's factory test track area. So hopefully something similar today. But we'll have to wait and watch for that. We do have to wait and watch for that, but DRS versus Team WARGYE fight यहाँ पे स्टार्ट होगी। बेहतरीन नॉकआउट यहाँ पे स्लाइड गोल के ऊपर M416 का कहर मचता जा रहा है। और अभी के लिए यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं टीम 52, ये जो फाइट है, ये जो राइवलरी, इट्स नेवर गोना बी स्टॉपिंग इन एज। टीम WARGYE एंड टीम 52, मैं ऑफिशियली बोल सकता हूँ ये जो दोनों टीम्स है ना, ये सेम फाइट दिखाती है टीम फ्लैश एंड होरा esports के जैसे, क्योंकि बीट रोटेशन क्लैशेस, बीट 44 early engagements, early skirmishes, Team WARGYE and Team 52, somewhere around they always keep on fighting with each other.
Team 52 has always been one of those teams that is just charging a WARGYE at this point. Ever since that 1v4 by Agent 47. Look at this teamwork, actually. Wow. That was something. That was brilliant to watch. Rudy Esports now getting some quick elimination points there, which means WARGYE now on the verge of getting eliminated. They will have to be careful. They will probably go for the recall. 52 with 4 players standing, 3 eliminations already in their name, and they have not had a good day here. 8 points is what they're able to accumulate in 3 matches. Actually, just 5. The 3 included these eliminations too. So 5 in 3 matches, and if they perform similar way, they probably will get only 10 in 3 matches in the end of the day. So that is not what the players on the side of 52 are probably looking out for. They need more, and they desperately need them right now. Of course, they're desperate for those elimination points incoming, but Penguin, aka फलक, यहाँ पर हमारी स्क्रीन के ऊपर न्यूयॉर्क फैक्ट्री टेस्ट ट्रैक के इलाके के आसपास दूर दराज से यहाँ पर कुछ प्लेयर्स जरूर आ सकते हैं, बट T24 ओपी अभी के लिए हमारी स्क्रीन के ऊपर 2 एलिमिनेशन पॉइंट्स यहाँ पर फलक ने अपनी टीम के लिए यहाँ पर ला के दिए, which is really good, right? बट इसके साथ में फलक शायद से एक और प्लेयर को नॉकआउट करेंगे, DRX प्लेयर को यहाँ पर नॉकआउट किया जाएगा। मेन बिल्डिंग के ऊपर यहाँ पर कहर मचा चुकी टीम 4 थ्राइव्स अभी के लिए तीसरा एलिमिनेशन पॉइंट यहाँ पर फलक लेके जाएंगे। बेहतरीन परफॉर्मेंस यहाँ पर टीम 4 थ्राइव्स की आएगी। SCYTES स्पोर्ट्स के पैंथर एक ग्रेनेड स्काई फोर्सेस के ऊपर राइवलरी चलती हुई यहाँ पर टीम SCYTES स्पोर्ट्स स्काई फोर्सेस की भी अभी के लिए, बट टीम 4 थ्राइव्स यहाँ पर फलक T24 OP IQQ एंड हुज़ैफा के साथ खेलते हुए डोमिनेशन शुरुआती कुछ चंद मिनट्स के अंदर यहाँ पर हम लोग को देखने मिल जाएगी फलक की तरफ से। Pretty early. Beautiful start for Falak, and if the momentum is in his favor, he might be able to drop 10 by himself all alone. SKYFORCE, on the other hand, are gone. I do not really know how, but they just got taken down completely, and it is ASI 8, I believe, since I see a domination coming in from Panther. ASI are going to be happy with this. 3 eliminations for them, and all 3 by Panther, I believe. BTR, on the other hand, are now facing the likes of 52 Esports, who were confident taking down the players on the side of WARGYE, who are also up to 4 players now thanks to recall system. BTR, on the other hand, they got to be cautious. 52 Esports, they're really good in this situation, in this part of the map too. Team 52 Esports, they are actually really good, but Team BTR ये 4 एलिमिनेशन पहले बाद में एक और एलिमिनेशन के पॉइंट पे नाम और बेहतरीन 1v2 आता हुआ फेडलेस की तरफ से। he is just fearless right now, बेहतरीन तरीके से पुशिंग करेंगे, इसके साथ में 2 एलिमिनेशन पॉइंट अपने नाम किएंगे और उसके साथ में यहाँ पर रिकॉल टावर भी रहेगा उनके पास में। 3 एलिमिनेशन पॉइंट लेने के बाद में टीम 4 थ्राइव्स अभी के लिए यहाँ पर इजाफा नहीं है इस गेम के अंदर। न्यूयॉर्क फैक्ट्री के अंदर हम लोग देखने को मिल जाएगी टीम NS नॉन रेड फोर्सेस एज। ये जो 4v4 फाइट यहाँ पे बहुत ही ज्यादा स्ट्रेच हो चुकी है। कब यहाँ पर ओपनिंग मिलेगी, कब कौन सी टीम यहाँ पर ओपनिंग लेके जाएगी, एन अपॉर्चुनिटी मिलेगी स्ट्राइक निकालने के लिए, बट फलक द मैन विल गोल्डन हैंड, विल ही गो फॉर द नॉकआउट, विल ही फाइंड अ नॉकआउट? नो। हुज़ैफा एक और ग्रेनेड, ये ग्रेनेड अच्छा लग रहा है, शायद से नॉकआउट लेके जा सकता है। पैनिक रूम के अंदर वो प्लेयर्स कैसे सर्वाइव करें मैं एक बार देखना चाहूंगा। एनएस का भी POV मोलोटॉव यहाँ पे जाएगी, प्लेयर्स को यहाँ पे पता है बेहतरीन नॉकआउट यहाँ पे हुज़ैफा की तरफ से। पेंगुइन का यहाँ पर यानी फलक का यहाँ पर एक रिटालिएशन नॉकआउट आएगा। हुज़ैफा क्या यहाँ पे रिवाइवल कर पाएंगे या फिर नहीं? जी हाँ बिल्कुल, बट इसके साथ में यहाँ पर प्लेयर को डाउन करेंगे एंड फलक को सीधा फिनिश ऑफ भी कर दिया जाएगा। वो थ्राइव्स, ये जो फाइट है एनएस के अगेंस्ट बहुत ही ज्यादा इंटेंस, गेट को क्लोज करेंगे, कभी खोलेंगे कभी कुछ करेंगे। आगे की तरफ बढ़ते एक 1v1 बैटल के अंदर हुज़ैफा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड देयर वी हैव इट। हुज़ैफा बेहतरीन नॉकआउट लेके जाएंगे, प्री फायर के साथ में बेहतरीन स्प्रे। ही इज जस्ट अ बेस अनलीश इन द बैटल ग्राउंड। ओह मैन, दैट वाज purely good. Edge, the pre-fire, it worked out beautifully. But SCYTES Esports, is that the team coming in the New York factory? It was, I mean, the first elimination coming in, the second, to be honest, with the shotgun was impressive. But then the pre-fire, that is just too good. That is cherry on top. That was insane. They're coming in, and Falak Bello is back on his feet thanks to the recall coming up immediately. So now 6 elimination for 4 tribes, and looks like they're on the, on the verge of getting themselves another decent game here on the map of Rondo. It's been a while since we've seen that, and hopefully this time around 4 tribes
will once again be the kings of this map. Talking about kings, we will also have to take a look at Team Secret because they've also performed really well on the map of Rondo. And hopefully, they can also pick up the pace. In the meanwhile, both tribes, it looks like they might be able to get a couple more eliminations here on the rooftop. They might get those couple of elimination points. But Team 4-3, मैं वही बात कर रहा था. देखिए ये साइड कीस्पोर्ट्स यहाँ पर फाइट के अंदर आ चुकी है. फलक का यहाँ पर रिकॉल पूरा हो चुका है. So he is not having any sort of recalls to work for in the future. But अभी के लिए यहाँ पर नॉकआउट लेकर ट्राई करेंगे. IQQ यहाँ पर एक प्लेयर को डाउन कराया जाएगा. हुज़ैफा he's just burning. And first aid भी अप्लाई हो जाएगी. And ASIT esports are with VN Team Flash tops. Edge, I guess Team Flash, they're back with their original roster. They are indeed. I mean, Noki was here up until now, but then I think we are back with Uzaifa for now into this one. Second cycle. Let's see how it turns out. Flash also coming in with everyone. Yep. I think they've seen that both tribes are trying their their players out as well, building in that synergy. And Flash were like, you know what? Maybe we will also bring in our main roster and get on top of everyone. And once again, it's been a while since Flash have actually accumulated points, some actual points, to be honest. I understand they're trying out a different one. They're hoping for they're trying to get the other roster some experience, but this one is important. The points, they can't be, falling off the top 16, top 18. Yeah. And to the people and audience watching out there, देखिए अगर आप लोगों ने अभी तक यहाँ पे 141 esports का चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए जल्दी से आके सब्सक्राइब करिए. एंड जो भी यहाँ पर ऑडियंस अभी यहाँ पर गिव अवे के बारे में पूछ रही है, देखिए गाइज यहाँ पर गिव अवेज नहीं है अभी के लिए क्योंकि आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को. जैसे 45 के सब्सक्राइबर्स से ज़्यादा हमारे चैनल पर सब्सक्राइब होंगे तो शायद से हम लोग दोबारा से जो गिव अवेज है उनको इनिशिएट करेंगे. तो जाइए पहले जाके सब्सक्राइब करिए अभी हमारे चैनल को. इफ यू गाइज वांट दोस गिव अवेज, इफ यू गाइज वांट टू विन दोस एक्साइटिंग सरप्राइजेस फ्रॉम साइड ऑफ 141 esports एंड सपोर्ट करिए उनको भी क्योंकि उनकी वजह से ही हम लोग यहाँ पर इस एशिया बैंडविड्थ चैप्टर 3 को देख पाए, चैप्टर 2 को देख पाए. एंड बिकॉज ऑफ देम ओनली वी आर एबल टू विटनेस दीज अमेजिंग टीम्स टू प्ले हियर एंड पुटिंग अप अ शो फॉर अस, स्ट्रैटेजीज दिखाते हुए एंड अपने आप को यहाँ पर प्रेजेंट करते हुए जिस तरीके से यहाँ पर खेलते अपनी कंट्रीज को रिप्रेजेंट करते हुए. सो जाइए जल्दी से आकर सब्सक्राइब करिए. ह्यूज शाउट आउट टू 141 esports टू पुटिंग अप थिंग्स फॉर अस एंड गिविंग द अपॉर्चुनिटी टू अस एज वेल. बट लेट्स जस्ट कम बैक टू द गेम हियर बिकॉज टीम BTR DRS के अगेंस्ट एंड दूर दराज से शायद से शॉट्स आ सकते हैं. इजाफा यहाँ पर टीम DRS ने भी यहाँ बेहतरीन किया है आज के दिन के अंदर एंड अच्छी परफॉर्मेंस मैं बोलूंगा टीम BTR ने भी दिखाई है. दोनों ही टीम्स यहाँ पे बेहतरीन खेल दी हैं. हर एक टीम ने यहाँ पर एक अच्छा गेम खेला है. But DRS and team BTR, Edge, what do you think? Which team you think might actually win this 4v4 if they actually pick up that fight? BTR probably, because of the experience that they bring in. I would say BTR should be the one coming out on top with how things are going. But since we already see an elimination coming up, I'm hoping there's recall. Yeah, there is still recall coming in here. Stage 2. Circle, which means there's still a lot of time for a lot of these players to go for that recall situation. So things are still looking on the rise for most of these teams and most of these players. 6 eliminations for BTR. Federal's leading the chart at the moment, and he's also one of the contenders now in the overall MVP. We've seen his face. They're now making its way towards top 4, I believe. Top 5, is he? And already top 4? So a lot of these players are going to be looking out for Federals for sure. As RIQ, they're taking down the players inside of DRX. जी हाँ बिल्कुल. अभी के लिए 4 tries, नो एलिमिनेशन लेने के बाद में इजाफा करते हुए गेम के अंदर मिनी मैप के ऊपर एक बार नजर डालते हैं कहां पर इन लोगों की पोजीशन रहेगी और कहां पर होल्ड करने का ट्राई किया जा रहा है टीम 4 ट्राइब्स की तरफ से. अभी के लिए यहाँ पे शायद से वार्गे के अगेंस्ट कभी भी फाइट यहाँ पे जो स्टार्ट हो चुकी है. DRX actually from the side of Korea, they are also coming up. Edge यहाँ पर वार्गे
Team 4 Thrives ke against, DRX 4 Thrives ke against, gatekeeping scenarios. There are a lot of things going to be happening. Crossfire conditions, third parties. This is the beauty of the map of Rondo. क्योंकि इतना ज़्यादा chaos हम लोग को देखने को मिलता है. देखिए एक बारी आप 17 टीम्स और मजीद प्लेयर्स लॉबी के अंदर जिंदा 65 freaking players. So आप यहाँ पे एक बारी सोचिए कि कितना ज़्यादा chaos हम लोग को इस गेम के अंदर देखने को मिल सकता है. जोन भी यहाँ पे स्टार्टिंग हो चुका है. 2 मिनट के अंदर यहाँ पे जोन भी कोलैप्स कर जाएगा और जोन का दूसरा शिफ्ट हम लोग को देखने को मिलेगा. तीसरा जोन के अंदर जो रोटेशन क्लैशेस अब यहाँ पे स्टार्ट होंगी. अब यहाँ पे टीम फाइट के अंदर आएगी. टीम बीटीआर के फेटलिस्ट आगे की तरफ यहाँ पे गाड़ी से स्पॉट करेंगे. प्लेयर्स को स्काउट करने का यहाँ पे ट्राई किया रहा है. इंटेल इन्फॉर्मेशन रहेगी बिल्कुल. पीछे से यहाँ पे इन लोगों को मैं बैठूंगा. बैक एंड क्लियर है. यहाँ पर फ्रंट एंड के ऊपर जो टीम तैनात है TRX इनका नाम रहेगा. कोरिया से आती है ये टीम. इजाफा यहाँ पर आज के दिन के अंदर बहुत ही ज्यादा बेहतरीन खामियाजा अभी तक यहाँ पर टीम बीटीआर को कोई भी भुगतना नहीं पड़ा है किसी भी खिलाड़ी के नाम का. सो बीटीआर कैसा परफॉर्मेंस यहाँ पर दिखाएंगे, क्या स्ट्रैटेजी यहाँ पर दिखाएंगे इस 4v4 बैटल के अंदर, एंड कौन सबसे पहले ओपनिंग निकालता है. एज इन द फाइट्स ऑफ ओपनिंग, इन द फाइट्स ऑफ 4v4 फाइट्स, आई फील लाइक ओपनिंग इज रियली इंपॉर्टेंट. गैदरिंग दैट फर्स्ट नॉकआउट, capturing that first opportunity to strike in and then slam in, I feel like that is going to be the key success for those teams. Well, I mean, if you make the first move, you probably are going to be, you know, either making it or breaking it, right? You need to be cautious. You need to make those calculations coming up. And right now, State Street Circle, T2K, they're holding on to their position for that play on the side of VOIN. Oh, Foxy. He's not going to be peeking whatsoever. He's holding on as well. Those grenades might be dealing a bit of damage. No, not really. As we now divert our attention towards 4 tribes once again. Nongshim is in the vicinity and Penguin hits the deck. 4 eliminations for Huzaifa and Penguin. That is Falak, of course. T24 coming up with 9 good points for 4 tribes. And they're thriving for more as Igneous. He gets taken down. The point goes towards the player on the side of VOIN. It's Foxy as FN. Whoa. FN is third partying this. Ooh, Side stars in with an amazing spray incoming with an AUG with a 4x. Insane level of performance. But team Sides, देखिए मैं बोलूंगा ये टीम और भी ज्यादा शार्प हो रही है. अभी के लिए यहाँ पर जो टीम है जिस तरीके से खेलना स्टार्ट किया था यहाँ पर पहले दिन से, उसके बाद में इन लोगों की परफॉर्मेंस और भी ज्यादा बेहतरीन होती हुई हर दिन के अंदर यहाँ पर अपनी स्ट्रैटेजीज को और भी ज्यादा शार्प किया, इंप्रूव किया, इवॉल्व किया. यही यहाँ पर टीम्स को करना होता है, अपनी स्ट्रैटेजीज और कोऑर्डिनेशन को और भी ज्यादा शार्पली तरीके से इंप्रूव करे. बट IQ डाउन होते हुए पेंगुइन का हम लोगों ने यहाँ पर देखा था. अब Falak Penguin again and again क्योंकि यहाँ पर you know it's a good name after all. So अभी के लिए यहाँ पे Falak को भी डाउन किया गया था, but अभी के लिए हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं FN Shaw Young crazy एक बेहतरीन ग्रेनेड शायद से. जी हाँ बिल्कुल. टीम HKG they are not in a good spot. Team Sites in the meantime यहाँ से होते हुए eliminated and this marks an elimination for the whole team. Huzaifa बेहतरीन नॉकआउट यहाँ पे लेके जाएंगे शाका के ऊपर. हम लोगों ने स्पेकुलेट किया था कि टीम 4 tribes and टीम वारगे के बीच में जो फाइट यहाँ पर कभी भी स्टार्ट हो सकती है, बट HKG बेहतरीन ग्रेनेड यहाँ पर FN के प्लेयर ने किया और इसके साथ में हुज़ैफा यहाँ पर देखने को मिल जाएगा. IQ बहुत ज्यादा लो चुके HP के ऊपर. टीम BTR वर्सेस DRX फाइट यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है. मैं यही बात कर रहा था. अब यहाँ पर हम लोग चौथे जोन के ऊपर इजाफा करेंगे. सो बहुत ज्यादा रोटेशन क्लैशेस हम लोग को देखने को मिल सकते हैं. मैन मैन व्हाट इज एक्जेक्टली हैपनिंग ऑन द मैप रोंडो राइट नाउ. इतनी ज्यादा फाइट DRX यहाँ पे BTR के अगेंस्ट टीम वारगे अगेंस्ट टीम 4 tribes. यहाँ पर बहुत सारे एरा, बहुत सारे आर्क यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है एज, एंड यहाँ पर फेटल इज डाउन. उनके खामियाजा यहाँ पर हम लोग को बताता पड़ा कि वो कभी डोमिनेशन अपनी टीम 52 का प्लेस दिखाते हुए. इट इज जस्ट टोटल chaos incoming. Rondo is turning out to be a massacre right now. It is turning out to be a massacre indeed. Yeah, right. Ooh, almost running over that player. 2004 will be able to drop one. TRA, the MVP, on the side of DRS, but BTR, the third party coming in from RIQ and DRX. Both of them will be able to take BTR down in 14th position with 6 eliminations. Now, things are looking scary. But DRX now immediately facing the heat coming in from the side of Nongshim. They will be able to secure a point or two here in terms of elimination, but will they be going for more? That is a question. DRX now with only QXZ, the last man standing against what, 34 players in the server. Whoa, Ghost with the H1K. He was reigning supreme, but उसके साथ में यहाँ पर उनको डाउन किया जाएगा. FN के क्रेजी यहाँ पर सोलो में स्टार्टिंग में रहेंगे. एक प्लेयर यहाँ पर ब्लीड करते हुआ 2 प्लेयर्स का खामियाजा और शायद से कयामत बिखेरना चाह रहे थे FN के खिलाड़ी, बट दूर दराज से
सीधा ही स्लैम किया और RRQ के प्लेयर्स उसी सेम कंपाउंड को होल्ड कर रहे थे। अभी के लिए यहाँ पर क्रेजी, मेरे को नहीं लगता कि वो जो रिवाइवल है, वो जो रिवाइवल का दरकार है, वो जो आगाज है यहाँ पर हो सकता है टीम FN। ध्यान देना पड़ेगा, केयरफुल रहना पड़ेगा, तो शायद से जीत सकते हैं इस गेम को। कवर प्लेयर का यहाँ पर यूज किया जाएगा, 2 कवर यहाँ पर इन लोगों को ओपन रीजन के अंदर मिल जाएंगे, व्हिच इज रियली गुड। बट टीम RRQ, क्या ये अकेला खिलाड़ी उस RRQ के अगेंस्ट फाइट लेना चाह रहा है? एंड आई गेस दैट्स द थिंग वी कैन विटनेस। बट टीम फ्लैश वर्सेस टीम वॉइन esports, यहाँ पर इन लोगों की भी टकराव यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। बेहतरीन परफॉर्मेंस यहाँ पर टीम फ्लैश ने दिखाई तो थी दोनों ही फेजेस के अंदर, ग्रैंड फाइनल्स के अंदर, और विजय हासिल करके गए थे। विजेता यहाँ पर बने थे दोनों ही फेज 1 एंड फेज 2 के। फेज नंबर 3 मैं देखना चाहूंगा उनकी स्टोरी लाइन क्या होगी, क्योंकि येट इज जस्ट सम अनदर मैचेस फॉर टीम फ्लैश राइट नाउ। बट FN, वो जो खिलाड़ी है पूरा ब्लीड करता हुआ, मुझे नहीं लगता कि वो जो रिवाइवल यहाँ पर कंप्लीट हो सकता है उस खिलाड़ी का एज। The revival is probably not going to be coming into play. But I believe we did see another elimination coming in, and another one too. ASI 8 are gone. Position number 12. They will be able to accumulate 4 points, and that's about it. 90-minute mark about ahead. 11 teams, 31 players still in the server. You can see the bandages being thrown now, and they'll be happy with this. 4 tries with 4 players still standing. 14 eliminations. They are probably looking to, break as many records as possible here today. And this probably could be one of the matches with high number of eliminations for the side of 40. जी हाँ बिल्कुल, इट्स वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट नंबर। एंड हम लोग वही बात करते हैं अगर 4 थ्राइव्स के बारे में स्पेकुलेट करते हैं कि रोंडो का मुकाबला है, सो 4 थ्राइव्स यहाँ पर इजीली एक चिकन डिनर को लेके जाते हैं एंड बेहतरीन एलिमिनेशन पॉइंट्स अपने हाथ में लेके जाते हैं। बट एक बार हम लोग नजर डालते बूम esports के ऊपर, कुछ स्मोक ग्रेनेड्स और स्मोक स्क्रीन यहाँ पर अपने आगे बनाए जा रहे हैं, एक आर्टिफिशियल कवर बनाने का ट्राई कर रहे हैं। बट अभी तक यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं वॉर्गे फाइट के अंदर आ रही थी, इसके साथ में काफी ऐसा लोगों को भुगतना पड़ेगा। यहाँ पर मैच से बाहर होती टीम वॉर्गे, एलिमिनेशन का किताब यहाँ पर लोगों को मिलता हुआ। अभी के लिए यहाँ पर टॉप 10 टीम 27 प्लेयर यहाँ पर लॉबी के अंदर, पीछे से DRS की टीम यहाँ पर बूम esports के ऊपर स्पॉट करेगी। बट टीम सीक्रेट्स के अगेंस्ट यू टू फाइट है, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बेहतरीन बनती हुई बूम esports के खिलाड़ी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बेहतरीन रहेंगे, करेंगे, यूटिलिटीज बहुत ही ज्यादा बेहतरीन। बट पीछे से टीम फ्लैश यहाँ पर करती हुई थर्ड पार्टी प्रॉक्सिमिटी विसिनिटी के अंदर, दिक्कत यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बेहतरीन। बट अभी के लिए यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं टीम FN, टीम सीक्रेट यहाँ पर 2 टीम्स एक साथ यहाँ से एलिमिनेट होती हुई टॉप 8 टीम्स यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर। एंड हम जो दिक्कतें बोल रहे थे, जो मुश्किलात यहाँ पर टीम के ऊपर बन रही थी, उन लोगों के लिए तो मैं बोलूंगा बेहतरीन नहीं थी, वो जो टीम्स यहाँ पर थर्ड पार्टी कर रही थी उन लोगों के लिए बेहतरीन। DRX के SMZL दूर दराज के एरिया में, उस इलाके में यहाँ पर DRS की टीम बहुत ही ज्यादा मुश्किलात की सिचुएशंस में, थर्ड पार्टी यहाँ पर लोगों के ऊपर भी आ सकती है। IQ को डाउन किया गया और सीधा का सीधा फिनिश ऑफ भी किया जाएगा। 15 एलिमिनेशन यहाँ पर टीम 4 थ्राइव्स के पास में, 7 तो एलिमिनेशन यहाँ पर फलक लेके जाएंगे। एंड अभी यहाँ पर देख सकते हैं टीम 4 थ्राइव्स के 3 शेर जिंदा, एक प्लेयर यहाँ पर, एक खिलाड़ी भले डाउन हुआ था शायद से तोड़ बाहर कोई लॉबी तक। बट टीम 4 थ्राइव्स और बस शांत, पैसिव, DRX लोग जस्ट अगेंस्ट एंड बहुत सारी टीम्स इन लोग जस्ट आसपास। देखिए केयरफुल रहना पड़ेगा, एक भी गलती हुई दूर दराज से यहाँ पर कोई भी शॉट्स आए तो टीम 4 थ्राइव्स कभी भी एलिमिनेशन आ सकता है। और मैं बोलूंगा टीम 4 थ्राइव्स की पोजीशनिंग ही खराब नहीं है, DRX गेमिंग उनकी भी पोजीशनिंग खराब एंड ड्रैग फोर्सेस को करते हुए एलिमिनेट। डोमिनेशन यहाँ पर XMPLZ दिखाए जाएंगे, NS यहाँ से होती हुई बाहर, टॉप 6 टीम्स एंड 18 प्लेयर्स लॉबी के अंदर जिंदा। 15 एलिमिनेशन के बाद में यहाँ पर कोई भी इजाफा एलिमिनेशन पॉइंट्स के अंदर आया नहीं है। कवर प्लेयर्स को ओपन के अंदर यूज किया गया है। यूटिलिटीज के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करें तो जायफा के पास रहेंगे 2 ग्रेनेड, एक ग्रेनेड अब बचा रहेगा, एक ग्रेनेड यहाँ पर दागा गया है उस खिलाड़ी के ऊपर। खामियाजा सिर्फ एक प्लेयर का, टीम फ्लैश। देखिए अगर अपने ओरिजिनल रोस्टर के अंदर आए और टीम फ्लैश यहाँ पर आखिर तक नहीं जिंदा तो वो कैसी टीम फ्लैश दे कमिंग अप एंड रेनिंग सुप्रीम। बट DRS के प्लेयर्स यहाँ पे 2 प्लेयर्स को डाउन करेंगे टीम फ्लैश को, एंड वो जो टीम 4 प्लेयर्स के साथ में जिंदा थी, they're surviving barely with 2 प्लेयर्स। 4 थ्राइव्स के खिलाड़ी की इंटेल इंफॉर्मेशन लीक होती हुई, DRX द टीम फ्रॉम कोरिया वर्सेस पाकिस्तान। कौन सी टीम यहां पर किसको एलिमिनेट करेगी? टीम RRQ। देखिए इस फाइट के अंदर टीम RRQ
वो भी अपना दबदबा बना सकते हैं। बेहतरीन स्प्रे यहाँ पर T24 ओपी की तरफ से, और ये जो फाइट है इसकी कमांड, इसकी लगाम शायद से लगा सकते हैं फोर्थ के खिलाड़ी, क्योंकि क्यों से यहाँ पर रहेंगे सोलो मैन स्टार्टिंग एंड टीम फोर्थ यही है मौका। लोहा है गरम, मार दीजिए हथौड़ा और कर दीजिए इस थर्ड पार्टी को, लेकिन शायद से यहाँ पर हुज़ैफा को डाउन किया जाएगा। एंड टीम RRQ, मैं वही बात कर रहा था, टीम फोर्थ जोन के बाहर RRQ ग्रेट कीपिंग सिनेरियो को थर्ड पार्टी को टूवी अब फोर्थ को ना, हालांकि यहाँ पर टीम DRX के ऊपर भी नजर डालनी पड़ेगी, टीम RRQ के ऊपर भी नजर डालनी पड़ेगी। उनका एक ओपनिंग मिलनी चाहिए, एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, तभी शायद से उनके परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतरीन आ सकती है। T24 OP, those are some accurate sprays incoming. Team Fourth यहाँ पर अब टीम RRQ के अगेंस्ट यहाँ पर फाइट के अंदर आज भी 17 एलिमिनेशंस का पायदान यहाँ पर लेके जाएंगे। टॉप 5 के अंदर आ चुके हैं, 14 प्लेयर सर्वर के अंदर जिंदा, 22 मिनट तक का गेम यहाँ पर पूरा हो चुका है। डोमिनेशन यहाँ पर ऑफ कोर्स आना था, और मैं बोलूंगा अगर टाइटल आप लोग बेस्ट प्ले का भी दे सको तो T24 ओपो के लिए दे दीजिए। तीनों के तीनों खिलाड़ी यहाँ पर एक ही व्हीकल के अंदर, क्या स्लैमिंग करने की दरकार। टीम RRQ यहाँ पर स्प्रे लेती हुई, शायद से टीम फोर्थ दिक्कत यहाँ पर बन सकती है। हुज़ैफा, ही इज नॉट हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ रिसोर्सेज टू वर्क विद, और यहाँ पर DRS का आखिरी खिलाड़ी लुक द सामने, टीम फ्लैश यहाँ पर इंटेल मिलेगी, यहाँ पर टीम DRS को भी एलिमिनेट करते हुए हुज़ैफा डाउन हो चुके हैं। रिवाइव यहाँ पर आना चाहिए, बट फलक यहाँ पर 8 एलिमिनेशन के साथ में आगे तरफ, तो टीम फ्लैश के लिए यहाँ पर 12 एलिमिनेशन के पास में ही, एंड टीम फोर्थ ज़ूनो का स्पॉट कर लिया जाएगा। फलक का स्पॉट किया, ज़्यूस यहाँ पर 4x यूज करते हुए, इस्तेमाल करते हुए बेहतरीन तरीके से आप उस पे ले रहे हैं। दिस इज टर्निंग आउट टू बी अ मैसेकर। यही मैच हम कास्टर्स को चाहिए था, यही मैच हमारी ऑडियंस को चाहिए था, एंड ऑडियंस वाचिंग आउट इन द स्ट्रीम राइट नाउ। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके 141 esports के चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इससे ज्यादा बेहतरीन मैचेस मुझे नहीं लगता आप लोगों को देखने को मिलेंगे। बट टीम फ्लैश अब अगले स्प्रेस इन लोगों के ऊपर आते हुए, टीम फ्लैश दे आर फोर्स्ड टू reckon टू बी आउट ऑफ द जोन राइट नाउ, क्योंकि जोन इनके 5 मीटर अंदर, और वो जो गाड़ी इन्होंने ओपन के अंदर फोड़ी थी वो शायद से एक अच्छा ओपन का कवर उनको लिए नहीं बना के जाएगी। खामियाजा टीम फ्लैश को भुगतना पड़ सकता है। 3 प्लेयर्स यहाँ पर भले ही जिंदा हो, मजीद प्लेयर्स अभी भी लॉबी के अंदर जिंदा, एंड यहाँ पर T24 OP, he has been spotted. T2K esports अपने 4x को खोल के दागेंगे कुछ शॉट्स को। T24 OP शायद से इंटेल नहीं है उसके खिलाड़ी की, T24 OP ओपन के अंदर आते हुए, बट शायद से वो जो अपॉर्चुनिटी थी उसको यहाँ पर कैपिटलाइज नहीं कर पाए। टीम फोर्थ everything is looking good for that one, but टीम RRQ मैं बोलूंगा उनकी जो चांसेस है, उनकी जो अपॉर्चुनिटीज है वो शायद से बेटर लग रहे हैं इस मैच के अंदर चिकन डिनर ले जाने के लिए। ये जो कुछ मिड सेक्शन था इस गेम का, वन ऑफ द मोस्ट इंटेंस बैटल। इसी के साथ में T24 OP FL बोस को यहाँ पे डाउन करेंगे, बेहतरीन तरीके से यहाँ पे नॉकआउट निकाला। और ये जो राइवलरी है टीम फोर्थ और टीम फ्लैश की फेज सेकंड के ग्रैंड फाइनल्स प्लेऑफ्स क्वालिफायर से ले तक अब तक यहाँ पे देखने को मिलेगी। बट वेट, लैपर यहाँ पर जायन को स्पॉट आउट नहीं कर पाए थे, लैपर का यहाँ पे नॉकआउट आता हुआ। टीम RRQ दे कैन नॉट फोर्स इवन अ सिंगल प्लेयर टू गेट डाउन, बट अभी के लिए यहाँ पर टीम RRQ को खामियाजा भुगतना पड़ा। एक अपॉर्चुनिटी ओपनिंग मिल सकती है, एक प्लेयर डाउन, क्या यहाँ पर रिवाइवल हो पाएगा या फिर नहीं? That is the question. Everyone holding on. RQ will get that player back up. Fourth Tribes still surviving with 2. Flash with 1. TDK are gone now. Yeah, he's out of there too. RQ looking like the favorites at the moment. Looks like another Indonesian team will take Rondo home yet again here in day number 3. At the moment, Salak trying to spot out the players. Zyvan, the only one standing on side of Flash. How long will he be able to keep his position and also go for fights? We'll have to wait and watch. It's very low though. Good damage being dealt by the grenade. Leopard now cooking up another one. He's very, very low. And he will not be able to go for that connection, but that grenade might be enough. And Zyvan, he will be forced into that Molotov and he's going to get taken down. And now Falak will be dropped immediately. It all comes down to T24. Last man standing here for the side of 4 Tribes. This could have been a double chicken dinner. This could have been an insane 30-pointer game. But instead, it feels like RIQ might just be the one getting a chicken dinner for themselves. A 1v4, T24 out in the open. Nothing he can do. Numbers overwhelming. Bullets raining. Players getting taken down. 4 Tribes come in second as RIQ. With 4 players standing. A flawless winner chicken dinner towards the end here on the map of Rondo.
Ooh, again, it's all emotion. It's all emotion reckoning everywhere. A great matchup on the map of Rondo. 4 thrives really close yet to fight, but RIQ अपने एडवांटेज को नाक होते हुए आगे की तरफ बढ़े और चिकन डिनर अपने हित लेके गए, अपने नाम लेके गए. बेहतरीन मैच हम लोगों ने यहाँ पर देखा रोंडो के मुकाबले के ऊपर एज. Rondo turned out to be good for a lot of these teams, especially 4 tribes. I mean, 20 eliminations is an insane number. That was a good game coming in for 4 tribes. As Team 52, you can see on the match highlights, they started off well. I really liked the tag team coming in there. And 52, unfortunate situation there. Federals was in a great spot. You see that the bait there coming in, faking the one side, coming in the other, was pretty phenomenal. And here, Huzaifa with this. Look at this. This was good with the shotgun. But then what happened after this was just better. The pre-fire was so good. Nongshim. I mean, unfortunate turn of events. But regardless, the 4 tribes are going to be really happy. And I believe they might just be the one coming on top in terms of points here in the match standings. We will have to wait and watch. But for now, we will, be looking at 4 tribes making their way to somewhere around 15, somewhere around 14 on the overall standings because of the, the amount of points that are going to be accumulated. They have already accumulated into this one. That's true. And FN Shojang on our screens, and they actually performed really good, I'd say. But कहीं ना कहीं यहाँ पर मैं बोलूँगा थोड़ा बहुत चोक करते हुए, एंड वो जो 4v4 बैटल्स के अंदर इजाफा था वो बेहतरीन यहाँ पर नहीं बना. बट अभी के लिए हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं DRX यहाँ पर थोड़े बहुत गंदे सिनारियोस के अंदर थी टीम 4 ट्राइब्स में. हालांकि बोलूँगा ये बेहतरीन स्लैमन था, एंड इसके साथ में यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ते एफएल के जेविन को स्पॉट नहीं किया गया था एफएल के, जिसकी वजह से यहाँ पे शायद से जो प्लेयर का एलिमिनेशन था वो थोड़ा स्लो डाउन हुआ था. बट इसके साथ में यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं वो था विनिंग मोमेंट RRQ का, एंड बेहतरीन परफॉर्मेंस. बट लेट्स जस्ट हैव अ लुक ऑन द टीम स्टार्ट्स ऑफ विनिंग टीम, क्योंकि टीम RRQ लेके गई थी इस बेहतरीन विनर चिकन डिनर को अपने हाथ, एंड लैपर लेके जाएंगे सबसे ज्यादा एलिमिनेशन पॉइंट्स. एंड आई गेस एच MVP के अंदर हम लोग को फलक देखने को मिलेंगे. Probably he has to. I mean, him and Uzaifa both of these players, they put up one hell of a show here for all of us. And they're definitely going to be one of the contenders for the MVP. If not the MVP, though, they'll definitely be in the top 4. As we take a look at the winner chicken dinner team stats, we have Firen with 1 total elimination, Genfos with 3, 4 for Lapper, and Pregos with 2. That's a total of 10, I believe, in overall. So 10%, that's 20 points. Thanks to Chicken Dinner RQ. 4 tribes though, 20 eliminations itself. That speaks volumes. That's true. And I just want to have a look that कि यहाँ पर टॉप 4 प्लेयर्स के अंदर कौन से प्लेयर्स हम लोग को देखने को मिलेंगे. एंड मेरे को लग रहा है कि 4 ट्राइब्स के एटलीस्ट हम लोग को 2 प्लेयर्स देखने को मिलेंगे एज टॉप 4 प्लेयर्स के अंदर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. एंड वी कैन सी फलक. आई डिड स्पेकुलेट दैट ही विल बी द MVP with 9 elimination and 8 knockouts edge. Great play coming up. 26 minutes of survival time, and he was the reason 4 Tribe performed the way that they did. Started off right off the bat from New York's factory towards the end there too. Falak is going to be the MVP coming in. 1300 plus damage, 351 heal, 8 knocks, 4 assists. A survival time of 26 minutes and 5 seconds. 9 eliminations in total. And well, him and Huzaifa are going to be top 2. And there it is, of course. 7 eliminations, 671 damage. I mean, damage dealt by Falak is unmatched by anyone. No one's even close to that. Zeus on the side of Flash, though, and Zyvin have made it to the top 4 as well. Once again, welcome back to the players, of course, coming in. The main roster, 645 damage, 6 eliminations for Zeus. Zyvin with 4 eliminations, 955. He did try his best towards the end, but he did only manage to come in towards the top 3. The top 4 teams on our screen. It's going to be 4 Tribes, RQ, Team Flash, and DRS Gaming. And 4 Tribes, look at the elimination points they're having. They're having 20 freaking elimination. That is not a small number.
22 smokes were used, 13 grenades were spammed out, and 8 Molotovs. They were playing for Flores lava game right now. 8 Molotovs? That is insane, man. I mean, insane amount of utilities being thrown by all of these players and all of these teams, of course. So here we have another team coming out on top with the winner chicken dinner, which means we pretty much don't have a repeated winner just yet. Two more matches. Do you think maybe these two matches will give us a repeated winner? Because now, I mean, Four Tribes were on the verge of getting it for themselves. Exactly. I mean, he will be taking the longest elimination to the previous one, and good performance overall. And this is going to be a typical match summary on our screens. But Edge, the match rankings will be telling us a huge brief into the previous one. I just want to have a look at how many points were accumulated from the side of team DRX, from the side of team Four Tribes. I guess they're having 20 eliminations, so somewhere around 26 points they will be capitalizing. But I want to have a look at how many points Team Flash accumulated. So it's going to be a huge, I'd say, gap. But let's see, Team Flash, I'm looking forward to the other points now. Being in the top 16, being in the top 18 is probably the go-to goal for all of these teams. And if Four Tribes just perform like this, I mean, they don't even need to, play for 4 days, 2-3 days, maybe decent enough for them, as they will be coming out on top with 26 total points, 20 points for RIQ, 17 for Flash, 11 for DRS, T2K on 7 along with DRX and WARGYE, BTR on 6, 5 for Nonchim and 52 Esports, 4 for FN, VOIN, Team Secret and ASI 8, Boom with 3 points along with SCYTES, SKG on 2, SKYFORCE with just 1. Yeah, and this is going to be the match rankings right now. And overall, we can say they will be taking 26 points. RQ will be taking 20, and the teams on the 2nd to 18th spot, they got eliminated way too early. So they're the best performance coming in. But hopefully, they will be making a comeback. But Edge overall standings will be looking up different, and because especially Flash did take 17 points, so it will be making a huge changes, that is for sure. It is. There's definitely going to be a jump and a lot of changes towards the middle order. The second page, of course. First page, though, I think maybe a little up and down here and there, and that's about it. I don't think there are going to be any changes on towards the top players. Maybe RQ will surpass DK now. Yep, there it is. RQ have now surpassed D plus Kia with 5 point difference. 122 points for D plus Kia, 127 for RQ. FN, third position, BTR, DRS, SCYTES, D Xavier, HORAA, Esports, and T2K are your top 9. These are the teams. They are in the, I'd say, good situation. They are very comfortable with everything they're doing right now. And RRQ will be dethroning those two Korean teams and will be taking 127 points. And we can see 6 teams, actually 7 teams, will be crossing the mark of 100 points, and they will be crossing the threshold of 100 points, which is really good. So setting up a benchmark. And I cannot see any Team Flash here. So Edge, finally we can see Team Flash playing here. So let's see, can they actually come up and cross that 100 point marker or not? And I guess they need only 25 points now. 15, you mean? They're on 85. So they're not that far away, Team Flash. PANDUM, on the other hand, 89 points for them. And Team SKYFORCE, they're up to 90 now. 69 points for HKG. 4 Tribes on 57, 54 points for all three. Go Ares, 2K on 16 position, BLUG on 17, APG on 18. So 4 Tribes are making some big moves here. They're up to 14th position. I told you this. With the 26 bomber there, it is pretty scary for them. And for them, I mean the teams in the second order, of course, the second page of the overall rankings. Because now 4 Tribes already infiltrated this. 19 Team Secret, WARGYE, Nongshim, VOIN, DRX, 11, Boom, ASI 52 Esports are your 19 to 27 position. But I mean, if you're Team 11, I don't know, man. The next 2 days are going to be very crucial, and probably they have to play out of their minds to even have a chance to make it to the top 16, top 18. That's true. The teams on the third page struggling the most, and especially
I'd say 11 DRX, Boom Esports, Suicide Esports, and Dream 52. They are struggling the most, so hopefully they make a comeback into the upcoming one. And Edge, next match, it's gonna be Erangel. What are your expectations? Because I feel like we will be looking forward to a slow-paced Erangel. Because with I mean, see, here's the thing. I think we are once again jumping in with Flash's main roster. So I think Flash vs HORAA, it's about time. I think it might be coming up again. So that is probably the one I'm looking out for to see if that's going to be the case. Because if it is, then well, I'm pretty sure the audience is going to love it. We are going to love it, and we'll have to see if Flash or HORAA will be the one coming out on top between both of these teams towards yes, Diana. Exactly, man. I mean, that fight I'm looking forward to, and let's see which team will be coming on top and making a huge move into the day. But let's just have a look on the overall MVP because Fadeless, damn, he just dethroned Wang Yong as well, Godless as well, and Fadeless will be the MVP with 26 elimination points, and we can see 29 knockouts as well. Federals have somehow managed to just bombard his way towards the top. BTR, Federals, 26 eliminations, 29 knockouts. Godless pushed down to third as Firen is now in second position. One Young is down to fourth. Chips in fifth position. I mean, there are some new names coming in from the previous matchup, but that's it. A little ups and downs here. Firen stepping up still, we still have Chips in the top five. He's not even played today's matches. That's 4 matches done and he's still there. Let's see if there's going to be any change in the fifth position, maybe in the fourth position as well. I mean, One Young's not playing today too, so there's a good chance both of these players could be replaced today. Moving on tomorrow, we'll probably will have them back on the overall MVP, but for now they might get replaced in the meanwhile. Yeah, and let's see which team or I'd say player will be coming up in the overall MVP as well and making a change. But let's just have a look on the fan favorite team, and even to the audience, I don't even have to tell them कि कैसे यहाँ पर आप अपनी favorite team को vote कर सकते हो and कैसे आप अपने players को support कर सकते हो. All you have to do is just type hashtag with the team tag, right? So आप लोग यहाँ पर एक बारी hashtag लिखिए. उसके बाद में अगर आप लोग को यहाँ पर टीम T2 के esports को सपोर्ट करना है सो हैशटैग T2 के लिख के यहाँ पर सेंड कर दीजिए. टीम फ्लैश को सपोर्ट करना है सो हैशटैग FL लिखिए. एंड दैट्स ऑल. इट्स रियली सिंपल टू सपोर्ट योर टीम. तो जाइए जल्दी से आके वोट करिए क्योंकि 2 ऐसी टॉप टीम्स रहेंगी जो क्वालिफाई करेंगी फैन फेवरेट वोट्स की वजह से. Hashtag your favorite team tag. That's all you need to do to type in the chat, and you will be voting for your favorite team, registering 1 vote per chat. So keep that in mind. And the top 2 teams, as Inferno said, will be moving on to the grand finals. Very important, by the way. Making it to the grand finals is what everyone's hoping for. That top 18, top 16, and then fighting for that number 1 spot in the grand finals. That is the most important stuff. It's Flash that have been able to secure 2 championship victories now already in phase 1 and phase 2. Can phase 3 be theirs as well, or will we see new champions this time around? I mean, that could be a possibility. We can see some of the new champions coming in, and I mean, I don't know if Team Flash is able to make 3 wins consecutively, it's not gonna be a legendary thing anymore. It's gonna be a legacy then. They are taking that legacy Nisha was chapter 3 throughout the first day. So imagine it if Team Flash is able to take 3 wins. It shows that how dangerous of the players they are. It does. That is the most scary part. They've been performing really well, even in playoffs. I mean, up until I think day 1, they were already in the number 1 spot. Day 2, they did fall off, but day 3, now that is, we don't really see the main roster coming in. Exactly why they kind of fell off towards the end of day 2, and it's understandable, right? They already know how to play in this lobby. They know exactly what they need to do. Even in this game, you can see they came back and they already did drop in few numbers, 15, 14, I believe, which is a decent position
to be in, especially after not playing for a bit. So overall, Flash are definitely going to be an animal. But I also think D plus Kia coming up along with FN, things might get scary for the other teams here because of the Korean region. Exactly. I mean, we want to see the some of the new teams jumping in and showing up great. And after this, we'll be having a look at the, I'd say, map rotation. But teams and I mean, especially audience do know that what is going to be the map rotation. We witness 6 matches per day and 3 maps. And next map, it's gonna be Erangel. And we did talk about our expectations as well, that we might actually see and speculate some of those. I guess fast-paced gameplays. But let's see what will be the case of scenario there on the map of Erangel, because it's gonna be a nostalgic one because we all started a journey of PUBG Mobile on the map of Erangel itself, Edge. That is true. I mean, all of us pretty much just grabbed our phones, jumped in, looked at Pochinki, and was like, "Oh, you know what? This is where I'm going to spend most of my life now." At least us. It's been a while. It's been a really long while. But now, looking at these teams, it is going to be nostalgic. But at the same time, we have seen these teams pull up something incredibly new. Even though the map is old, they always come up with new tactics, new, play styles here. I mean, new strategies being shown on the map of Erangel. But let's see if there's going to be, what's going to be the case here. If there's going to be a difference of strategy, if there's going to be a straight up gunfight or a textbook map here on Erangel, as we will be looking at the last 2 maps here left in the day, Erangel and Miramar, ladies and gentlemen. Absolutely, man. This is going to be a second last map of our day, and let's see which team will be picking up the pace and taking that winner chicken dinner. It's really important for every team to be really careful and cautious, because every one of them, every player, every team is hunting, and they are hunting for that chicken dinner. And I'd not say hunting, actually they are hungry, to be honest, for those chicken dinners. So 4 matches, 4 different winners. Edge, what do you think? 2 more matches, repetitive winners or different winners? I think different winners. I have a feeling that today is going to be one of those days where we will witness maybe from the same region a couple of them, but I still feel like different winners in terms of teams. All right. Let's see. That is going to be the case or not. But I feel like we are going to be witnessing those different winners. But ladies and gentlemen, and boys and girls watching out there, it's gonna be Erangel, and it's gonna be the 5th match of our day. You're welcome. It's gonna be Asia Balwas Chapter 3rd, and it's gonna be Phase 3rd playoffs. And let's see what will be the case, and I will be having a look on to the flight path. And the flight path is looking so damn interesting, क्योंकि ये जो flight path पे जॉर्ज पूल से स्टार्ट करेगी, यस्नाया से क्रॉस होती हुई यहाँ पर एंड करेगी in the region of somewhere around Lipovka, Kamishki के बीच में ही, but बिल्कुल straight flight path, not even cutting diagonally, बिल्कुल straight नॉर्थ साइड की तरफ यहाँ पर ज़्यादा लीन कर रही है. सो मैं बोलूँगा जिन टीम्स को यहाँ पर मिलिट्री बेस, नोवोरिपनॉय, फेरिफेयर, मिल्टा जाना है, उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा बड़ा एक लंबा ग्लाइड करना पड़ेगा. मैं देखना चाहूँगा कि यहाँ पर कुछ टीम्स है, जैसे कि हम लोगों को पता है कि नोवोरिपनॉय के ऊपर टीम्स उतरती, कुछ कोरियन टीम्स उतरती हैं, एंड फेरिफेयर के ऊपर तो टीम 4 थ्राइव्स ही उतरती है, मिल्टा के ऊपर टीम TRS एंड RRQ का हम लोग को क्लैश देखने को मिल जाता है. सो उधर वहाँ पर क्या सिनेरियोज बिल्डअप करते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर इतना ज़्यादा लंबा ग्लाइड करना पड़ेगा. सो कोई एक प्लान भी है उन लोगों के पास में, या फिर ग्लाइड करेंगे, व्हीकल्स ढूंढेंगे एंड उसी के साथ में यहाँ पर अपने आप को गेम में इजाफा करेंगे. सो यस्नाया के ऊपर हालांकि यहाँ पर हम लोग को फ्लैश वर्सेस हॉरा ईस्पोर्ट्स नहीं देखने को मिला, बिकॉज हॉरा ईस्पोर्ट्स आर नॉट इन द लॉबी राइट नाउ, एंड टीम सीक्रेट्स यहाँ पर फाइट के अंदर आ जाएगी. एंड देखिए हमारी टीम HKG, देखते क्या सिनेरियोस यहाँ पे बिल्ड होगा. स्पॉट यहाँ पे प्लेयर को किया, यहाँ पे डाउन किया जाएगा, एंड वी कैन सी टीम सीक्रेट्स यहाँ पर अभी के लिए पहला एलिमिनेशन लोग पास में. Pretty early too. 18 teams, 71 now. It's the first elimination we saw. SKG losing 1 and Team Secret, they might be losing more. Team Secret,
at the moment. With that first one coming into their account, they'll feel really happy and confident going into the next few ones too. Team Secret. Two, I mean, just one new player, but I believe we've seen two new faces here on the side today. Hoping to see them more in action, but for now, we will wait and watch if this is going to be a third party or a fourth party coming in towards Georgopol region. Aside Esports, on the other hand, we'll be looking to take down the players on side of T2K, who are putting the screws to them, though. Aside will lose one Panther, who had the domination in the last matchup. Can he be revived? No recalls here, so anyone that gets taken down will stay, taken down. SI8, wait a second. I see AMZ breathe them now. Interesting change in name there, but we'll talk about that later on. That's probably for the conspiracy theory experts to decode that for us. SI8. Crypto, beautiful shot there onto Maharani. The UMP reigning supreme. And T2K. They are getting down and they are gone in position number 18. The first team to get eliminated. Unfortunately, we not even be able to accumulate 100. They're on the verge of it. They were 97. With this one, they'll get 98, but that's it. Team Secret now surviving and diverting their attention to the players inside of Hong Kong team. It's just one. Zhao. Probably gonna get taken down. Maybe not yet. He will deal a bit of damage. And he's gonna get taken down. And Sin right now, since he's the only one standing, but I don't think he's in the server at the moment. He is disconnected. So I think with that, the end of HKG is coming into play. Four minutes in. Stage 1 circle coming in. 4 minutes. The circle will close. BTR? What a tough spot they're in right now. As Boom Esports, they might be able to confirm this. Kibo stops one and hits the deck, and I just get immediately taken down here. Kibo and Yemi trying to deal some damage as Kibo gets the finish on to Kent. BTR are in the worst of getting eliminated because all of them are in waters, and Boom are not gonna let this freebies go. Keru is also now joining the party, shooting bullets towards the players inside of BTR. There are two more in the water. They didn't realize that. Or will they let them go? The answer is, well, they will not be letting go of them whatsoever. BTR is gone, and no real I mean, there was no chance of retaliation too. 59 players, 16 teams. FN Sejong, another team that started off really well on day number 1. Day number 2, not really that good, but they did end it on a decent note towards, coming up to 2nd position. Now going into the last, 3rd day here, we'll have to wait and watch if they're going to be coming up strong. They are in the 2nd position in between both of these groups at the moment. 118 points for themselves. They will need more and more and more. They will need a good game to end the day on, for sure. But oh my lord, what a grenade. 50 of esports with a beautiful grenade there onto one of the players inside of DRS. It's XMPL, the young gun getting taken down. Killer YT, Cyclone Frag are the only one standing right now. And I think the higher advantage is going to help Killer YT. Who is an AUG player actually? I thought he was going to pull out a mini 14 or something. But for now, DRS Gaming. They do have the high ground advantage over multiple teams here. On. They will drop one more. Lolvu gets taken down completely by Eurorong.
Two eliminations now for the side of FN Sejong, and they are holding on strong. They're holding on to their compounds too, not letting go of any situation. Not letting go of any casualties or any prey that they might find and get as many points as possible. It's going to be very important. I mean, they're on third day already here for the playoffs. You need 200 points to be cremated. More like cemented. As the circle goes towards a military base, we're looking at a water zone. Very big water zone too. Huh. Now this is going to be interesting. The bridge camps are going to be coming in play for sure. But at the moment, Team Flash still with the main roster. No Yasnaya region, but they will be holding on towards the players on side of ASI8, who might just be able to take down Zyven, who's bleeding at the moment. Cannot let this one go through. ASI8 Panthers back on his feet, so they're up to 3 players now, as they did lose one in the meanwhile. Zyven will be revived. He'll be back to Panther now, going in for the retreat. I believe both of these teams are outside the zone, so the damage will be, will be kept on dealing, thanks to the circle there, thanks to the blue zone coming in. SI8 right now are being chased. Zyven has to go for the heal immediately, and he will. He did get taken down twice there, thanks unfortunately for the to the play zone there. Second one, as DRS Frag gets taken down. Cypher and Killer YT are the only ones standing now on their side. There was no Repnoy. They will also be on the move anytime soon. Tops now. Gotta be careful using that smoke as a bait, pulling the teammate out. As they side Crypto, he gets taken down. FN, they take out Team Secret. 4 eliminations, no casualties here for the side of Team FN Sejong. They'll be happy with this. They will probably be looking to take the #1 spot away from RQ. And I believe they've also surpassed D plus here. I believe one more point is what they need, and they will be successfully surpassing them on the overall. RQ. Well, they will be accumulating more points, so FN I've got to work a little harder to surpass RQ at the moment. SKYFORCE are losing players left, right, and center. The only one standing right now is probably Sancha. Regardless, too. Didn't really keep an eye on who that was. But DRX, with only 1 elimination, 1 casualty, things are not looking good for them, too. Trey, Oxy, and QXZZZZ. All of these team players, all these teammates. No, there's only one goal for them: survive as long as possible. Look at the part of the map where they are. They're towards prison. How are they planning to get themselves back into the get them into the circle first? The military base is where we are headed towards. Water, a lot of water bodies. DRS Killer YT, he actually gets taken down by his own Molly. I don't know if it's intentional or what. It feels like it is intentional. So the elimination point will not be given to someone else. He's going to get taken out. 12 teams now, 41 players. 11-minute mark about ahead. There is calm before the storm here on the map of Erangel. We're heading towards water as well, so it's only convenient that it is calm before the storm. You know how soothing it gets before something's about to be destructive. Yeah, that's exactly how I mean how it feels with the water side with the water circle involved. RQ, Team FN, the ones leading the charts right now, 1 and 2 position respectively, in terms of these two groups. Well, 39 players, 12 teams, and looking at the way things are going here, Inferno, I mean, I'm not really sure
who's going to be the one coming out on top, because right now it feels like everyone except maybe SKYFORCE has a really good chance to take it through. I mean, exactly. Right now, VOIN esports. Now, we can see them having not a lot of elimination points to work with. And to the audience watching out there, I'm looking at the chat section. आप सभी लोग यहाँ पर chat के अंदर enjoy करते हैं, interact करते हैं, which is really good to look forward to. So, मैं आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा. देखिए, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके अभी 141 esports के चैनल को सब्सक्राइब करिए. एंड वी नीड ओनली 300 मोर सब्सक्राइबर्स. सो जाइए जाके सब्सक्राइब करिए चैनल को. एंड हम लोग यहाँ पर पहुँच जाएंगे 45k सब्सक्राइबर्स के थ्रेशोल्ड के ऊपर. सो जाइए जल्दी से सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हमारा एक अल्टीमेट गोल होने जा रहा है टू रीच 50k सब्सक्राइबर्स बिफोर दिस टूर्नामेंट. सो जाइए सब्सक्राइब करिए एंड आप ही लोग यहाँ पर सपोर्ट कर सकते हो. एंड कीप ऑन सपोर्टिंग 141 esports. देखिए, as an organization, as a business, 141 esports is doing an immense level of job, putting up a great tournament for us. 141 esports यहाँ पर एक बार चैप्टर 2, फिर उसके बाद में यहाँ पर ऑडियंस का सुना चैप्टर 3 भी लेके आए. सो अप्रिशिएट करिए एंड सब्सक्राइब करिए एंड कीप ऑन ग्रोइंग विद अस ऑल टुगेदर. एक बार हम लोग यहाँ पे मैच के ऊपर दोबारा से एक दफ़ा नज़र डालते हैं, क्योंकि DRX गेमिंग यहाँ पर फाइट होती हुई इन लोग के अगेंस्ट. एंड इसी के साथ में टीम वार्गे बेहतरीन तरीके से एलिमिनेट करेंगे DRX को बाहर तक का रास्ता दिखाया जाएगा, लॉबी तक का रास्ता दिखाया जाएगा नॉन फोर्सेस स्क्रीन के ऊपर. एंड यहाँ पर उन लोग के पास में पहला ही एलिमिनेशन रहेगा, बट हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं एक्चुअली 3 टीम्स का आगमन देखने को मिल जाएगा, एक्चुअली 2 ही टीम्स का. इसी के साथ में यहाँ पर टीम 52 भी होती हुई बाहर. एलिमिनेशन यहाँ पर इस टीम का भी आएगा. एंड बेहतरीन परफॉर्मेंस यहाँ पर हर एक टीम, हर एक प्लेयर करते हुए. It's something that we needed, we did expect in coming. एंड यहाँ पर VOIN esports कोई भी एलिमिनेशन पॉइंट्स नहीं है इन लोगों के पास में. सो एलिमिनेशन पॉइंट्स दे नीड टू गैदर दोस पॉइंट्स. बेहतरीन एक ग्रेनेड यहाँ पर जाता हुआ, ग्रेनेड यहाँ पर शायद से कनेक्ट हो सकता था, बट नो कनेक्शंस व्हाटसोएवर हैपेंड देयर. स्काईफोर्सेस अभी के लिए यहाँ पर अर्नव अपने ऊपर फर्स्ट एड का पैशन करते हुए एक नॉकआउट या दूसरा नॉकआउट, नो नॉट इवन अ सिंगल नॉकआउट. एंड स्काईफोर्सेस होती हुई इस गेम से भी बाहर. चलिए देखिए ऑडियंस, आप सभी लोगों के साथ भी मेरे को पता ही है. देखिए, मैं स्पेशली आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ जब हम लोग मिड फेज के अंदर रहते हैं, मिड फेज गेम के अंदर रहते हैं. एंड आई कीप ऑन इंटरेक्टिव विद द ऑडियंस एज वेल, बिकॉज आई लव देम. यू गाइस कीप ऑन सपोर्टिंग एंड वी विल कीप ऑन सपोर्टिंग यू एज वेल. सो चलिए, मेरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए, इस लॉबी के अंदर आप लोगों का कौन सा फेवरेट प्लेयर है? मेरे को एक बार जरा कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना. देखिए, हम लोग यहाँ पर टीम के बारे में बात नहीं कर रहे, राइट? वी आर आस्किंग कि आप लोगों का यहाँ पर फेवरेट प्लेयर कौन सा है इस लॉबी के अंदर. सो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. जाइए जल्दी से आके उस प्लेयर का नाम स्पैम करिए एंड उस प्लेयर का सपोर्ट दिखाइए. एंड लेट्स सी हु इज गोइंग टू बी योर फेवरेट प्लेयर. एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द चैट सेक्शन, राइट? सो हम लोग यहाँ पर एक दफ़ा नज़र डालते हैं हमारे गेम के ऊपर. देखिए, बूम esports के खिलाड़ी यहाँ पर शायद से बहुत ही जल्द एक फाइट पिकअप कर सकते हैं टीम फ्लैश के अगेंस्ट. एंड टीम फ्लैश अभी के लिए यहाँ पर कितने खिलाड़ियों के साथ में है? उन लोगों के पास में भी यहाँ पर मजीद खिलाड़ी जिंदा, चारों खिलाड़ी यहाँ पर अभी देखने को मिल जाएंगे. सो बेहतरीन लेवल ऑफ परफॉर्मेंस यहाँ पर ये लोग भी दिखाएंगे. बट द थिंग इज, टीम फ्लैश देखिए स्ट्रगल कर रहे हैं, मैं बोलूँगा, क्योंकि यहाँ पर इससे पहले हम लोगों ने टीम फ्लैश का ओरिजिनल रोस्टर खेलते हुए नहीं देखने को मिला था. जो ओरिजिनल 4 OG प्लेयर्स है टीम फ्लैश के, वो नहीं खेलते हुए देखने को मिले थे. तो अभी के लिए यहाँ पर टीम फ्लैश वर्सेस टीम फुल थ्राइव्स. हो सकता है हुज़ैफा यहाँ पर वाटर रोटेशन करने का चाह रहे थे, शायद से उस वाटर रोटेशन के अंदर ही गॉट कॉट ऑफ गार्ड. एंड यहाँ पर टीम फुल थ्राइव्स के सिर्फ 2 ही खिलाड़ी अभी के लिए जिंदा. एंड वाली बात रहेगी, क्या सिनेरियोज यहाँ पर इस टीम के लिए बनेंगे. देखिए, खामियाजा तो हालांकि भुगतना पड़ा है. दूर दराज से यहाँ पर हुज़ैफा के ऊपर भी शॉट्स आए थे, डाउन वहाँ पर किया गया था. एंड सिर्फ 2 ही प्लेयर्स यहाँ पर जिंदा रहेंगे टीम फुल थ्राइव्स के साइड्स की टीम हमारी स्क्रीन के ऊपर. एंड यहाँ पर एक बार आप जोन देखें तो वाटर बॉडीज का भी आगमन रहेगा जोन के अंदर. एंड यहाँ पर अभी के लिए VOIN esports being in the very center of the map, which is good. बट आप यहाँ पर टीम्स की पोजीशनिंग देखिए. अगर VOIN esports सेंटर में है, सो ये लोग बनेंगे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन. एंड सभी टीम्स, अगर इन लोग पता चले कि सेंटर के अंदर कोई टीम होल्ड कर रही है, मैं बोलूंगा यहाँ पे सेंटर अगर आप लोग कंपाउंड के अंदर होल्ड कर रहे हैं, which could be really good, but still तभी आप लोग आपके ऊपर स्लैमिंग आ सकते हैं. VOIN esports
ऐसे कि अगर यहाँ पर एज टू एज खेलते तो शायद से बेटर सिनेरियोस लोगों के लिए यहाँ पर बिल्डअप हो सकते थे, बट अभी के लिए यहाँ पर टीम आर की हमारी स्क्रीन के ऊपर पैराग्रॉस देखने को मिल जाएंगे, जेनफोर्स हमारी स्क्रीन के ऊपर है। अभी के लिए यहाँ पर कोई भी एलिमिनेशन पॉइंट्स लोगों को यहाँ पर नहीं देखने मिलेगी। एंड इसके साथ में एफएन शाहजहां के अगेंस्ट ये जो टकराव है स्टार्ट हो चुकी है। मुश्किलात के अंदर शायद से टीम्स आ सकती है, बट लैपर का ये जो खामियाजा उस टीम को भुगतना पड़ा है वो कहीं ना कहीं शायद से खटकेगा। एंड देखिए टीम फ्लैश के जेवन बेहतरीन स्प्रेज यहाँ पर दागते हुए ई स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों के ऊपर दूर दराज से ये जो स्प्रेज आ रही थी ई स्पोर्ट्स के ऊपर, दिक्कतें इन लोगों के लिए बन सकती है। बेहतरीन तरीके से ज़्यूज़ ने एयूजी से एक और स्प्रे लिया, डाउन यहाँ पे प्लेयर को किया जाएगा। एंड टीम बूम ई स्पोर्ट्स उन लोगों का शायद से एक और प्लेयर डाउन होगा। शायद से कीबो फ्लैश के जेवन को स्पॉट करेंगे, पूरा यहाँ पे फिनिश ऑफ कर सकते हैं या फिर नहीं। बूम ई स्पोर्ट्स शायद से जी हाँ बिल्कुल कीबो एक प्लेयर को नॉकआउट करेंगे, सीधा का सीधा फिनिश ऑफ भी कर देंगे। सो बूम ई स्पोर्ट्स दिस इज नॉट लुकिंग गुड। कीबो ग्रेनेड यहाँ पर आएगा एंड शायद से बूम ई स्पोर्ट्स दे आर गॉन एंड डस्टर फ्रॉम द मैच इज नॉट लुकिंग गुड। इसी के साथ में लोग होते हुए मैच से बाहर एंड लॉबी तक का रास्ता यहां पर उनको दिखाया जाएगा। टीम साइट्स अभी के लिए यहां पर टीम फ्लैश साथ एलिमिनेशन के साथ में आगमन बेहतरीन यहां पर होता जाएगा। इसी के साथ में IQQ इन पोस्ट 16 की कहर मचाएंगे। इसी के साथ में यहां पर एक नॉकआउट लेने की दरकार तो थी, बट टीम फ्लैश के अगेंस्ट जो फाइट यहां पे इनिशिएट हो सकती है कभी भी। पेंगुइन AKA इट्स गोना बी फलक, ए गाड़ी टक्कर ना मारो। बट अभी के लिए यहाँ पर देखते हैं टीम फोर्स ड्राइव्स दोनों खिलाड़ी यहाँ पर थोड़े बहुत गंदे सिनेरियोस में मैं बोलूंगा है। एंड दोनों के पास में अपना खुद का व्हीकल है, सो दिक्कतें शायद से नहीं बनेंगी। बट द थिंग इज कि कैसे यहाँ पर इनिशिएट करते हैं जोन के अंदर, कैसे जोन के अंदर आके एडवांटेज लेते हैं। टीम फ्लैश लोग जस्ट अगेंस्ट रहेंगे, गेट कीपिंग के सिनेरियोस यहाँ पर रहेंगे। टीम साइड्स के दो खिलाड़ी मैं बोलूंगा इनकी पोजीशन अच्छी तो है, पर जोन के अंदर जाना पड़ेगा। हवर कार है इनके पास में, साइड्स क्या यहाँ पर स्प्रे लिया जाएगा, वो हवर कार इट्स अबाउट टू गेट बर्स्टेड ऑफ, बट एनएस के खिलाड़ी के ऊपर शायद से वो जो ग्रेनेड शैक के अंदर जाएगा एक बेहतरीन नॉकआउट लेके जा सकता है। दिस इज लुकिंग अ प्रॉमिसिंग ग्रेनेड, बट नो दैट वाज सो अनफॉर्चुनेट। मैंने भी नहीं सोचा था कि शायद से उनके अगेंस्ट ये चीज होगी। टीम फ्लैश के ज़्यूस, टॉप्स, बोज, एवरीवन इज हैविंग अ स्पॉट ऑन टीम फोर थ्राइव्स राइट नाउ। प्लेऑफ्स क्वालिफायर्स का तीसरा दिन, आगमन बेहतरीन, आगाज बेहतरीन, बट टीम फोर थ्राइव्स का ये जो 5वां मैच है अभी तक यहाँ पर एलिमिनेशन पॉइंट्स का खाता खुला नहीं है। ज़्यूस लोग जो सामने पेंगुइन AK फलक यहाँ पर स्काउट कर रहे हैं, इंटेल गैदर करने का ट्राई कर रहे हैं। एंड थोड़ा बजे से इंटेल गैदर हो जाएगा मैं बोलूंगा, उसके बाद में जल्दी ही फाइट यहाँ पे इनिशिएट करेंगे। उस IQQ यहाँ पर बैठे रहेंगे, बट फलक ही गोट बी रियली केयरफुल। ये शायद से दिक्कत बन सकती है, मुश्किलात में आ सकते हैं फलक। भले यहाँ पे स्काउट करने का ट्राई करे, इंटेल गैदर करने का ट्राई करे, बट टीम फ्लैश शायद से उनका जो पेशेंस है वो टूटता हुआ, और टीम फोर थ्राइव्स के अगेंस्ट कभी भी ये फाइट स्टार्ट हो सकती है। एंड क्या यहाँ पर करना चाह रहे हैं, ओपन के अंदर अपने व्हीकल को घुमाते हुए दे कुड बी द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। हर एक टीम यहाँ पे इनके ऊपर स्प्रे लेगी, कंपाउंड के ऊपर टीम वन इस पहले से होल्ड करेगी एंड कंपाउंड के ऊपर डायरेक्टली स्लैमिंग हाथ में रहेगी एस्ट्रल के। फलक यहाँ पे जाएंगे, विंडो से वॉल्ट करेंगे, यहाँ पर बैठेंगे वाइन इस को खिलाड़ी को यहाँ पे कोई भी पता नहीं है। पहला नॉकआउट यहाँ पर आएगा, फलक ही इज रियली लोड एचपी, एक 1v2 के अंदर दोबारा से वॉल्ट करेंगे एंड शायद से फर्स्ट एड कॉपी करने का ट्राई करेंगे, बट आई गेस ही इज गोइंग टू गेट एलिमिनेटेड। ही इज रियली लोडेड एचपी एंड हाथ में रहेगी एस्ट्रल के, बट स्टिल यहां से होते हुए एलिमिनेट वोइन esports के खिलाड़ी यहां पर तो खरा एलिमिनेट। बट क्या सिनेरियो था, क्या स्ट्रैटेजी यहां पर इंप्लीमेंट करने का ट्राई कर रहे थे, मेरे को वो एटलीस्ट समझ नहीं आया, क्योंकि डायरेक्टली स्लैम यहां पर कंपाउंड के ऊपर किया, तब भी यहां पर डोमन स्टैंडिंग थे। ऑलराइट, आई गेस मैं बोलूंगा यहां पर कुछ नया ट्राई करने का ट्राई कर रहे थे जो शायद से उन लोगों के अगेंस्ट गया एंड it did not turn out to be the best case scenario. But still, दो प्लेयर्स के साथ में यहाँ पर कंपाउंड के ऊपर स्लैमिंग करना मेरे को कहीं थोड़ा सा हर्टफुल लगा एंड डाउटफुल लगा। बट देखते हैं यहाँ पर आगे आने वाले मैचेस के अंदर टीम फोर थ्राइव्स कैसा खेलती है। इस वाले मैच के अंदर तो आगाज मैं बोलूँगा ज़्यादा बेहतरीन हो नहीं पाया, बट पिछला मैच रोंडो का मुकाबला बेहतरीन तरीके से उन्होंने खेला था। 20 एलिमिनेशन पॉइंट्स लगे गए थे, मजीद प्लेयर्स को यहाँ पर डाउन किया था एंड बेहतरीन परफॉर्मेंस यहाँ पर पिछले मैच के अंदर उन्होंने दिखाई थी एंड दे परफॉर्म रियली वेल। देखते हैं अभी यहाँ पर इस मैच के अंदर यहाँ पर ये जो बाकी की टॉप 3 टीम्स है, कौन सी टीम लेके जाएगी इस चिकन डिनर को और अपने नाम करके जाएगी। देखिए अभी के लिए यहाँ पर आरक्यू टीम फ्लैश एंड वोइन esports में एडवांटेज मेरे को लगता है कहीं ना कहीं टीम फ्लैश के पास में रहेगा। एक हायर रेट्स का एडवांटेज तो जरूर है, बट आरआरक्यू उनके पास में है यहाँ पर जोन का एडवांटेज। जो जोन का एडवांटेज है ये एक
मैं बोलूँगा बहुत ही ज़्यादा बड़ा एडवांटेज लाके जा सकता है आरआरक्यू को। बट जो अपर रिच का एडवांटेज यहाँ पर टीम टीम फ्लैश के पास है, ये भी इनके लिए एक बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन एडवांटेज हो सकता है। देखते हैं आप लोगों को क्या लगता है कि कौन सी टीम चिकन डिनर लेके जाएगी। मेरे को लगता है कहीं ना कहीं टीम फ्लैश कंसिस्टेंसी अच्छी लग रही है, कोऑर्डिनेशन बेहतरीन लग रहा है, रिदम अच्छा है, एंड मैं बोलूँगा वो जो सिम्फनी होती है ना, राइट, जो एक बेहतरीन तरीके से फ्लो में आप एक पूरा चिकन डिनर निकाल सकते हो, वो चीज़ यहाँ पर अभी हम लोगों को देखने को मिल जाएगी टीम फ्लैश के प्लेयर्स के साथ में। लेट्स सी, एनीथिंग इज पॉसिबल। एंड राइट नाउ वी कैन सी टीम फ्लैश के प्लेयर्स वोइन ई-स्पोर्ट्स के खिलाड़ी के आसपास रोटेट करते हुए। वोइन ई-स्पोर्ट्स के खिलाड़ी, दिस इज लुकिंग गुड। वोइन ई-स्पोर्ट्स के पास में एक बेहतरीन कंपाउंड भी है, इस कंपाउंड का एडवांटेज टीम फ्लैश। एक मोलोटॉव डाली गई है, वो मोलोटॉव कनेक्ट करेगी या फिर नहीं, वो देखने वाली चीज रहेगी। Wine Flash RQ on the verge of getting themselves another wine as well. So now Flash has to win this to give us a different chicken dinner winner. But with this zone, this probably could be one of the last circles here. Maybe next one's the end. But Zeus, he's going to get taken down. Put it to 5. It was a beautiful grenade in the face of him. Flash is now in a 2v3 situation. Wine Jade is going to get involved as well. Tops, got to be careful. Almost got taken down there. Pose. Trying to retaliate with the weapons there. We'll be doing a lot more damage. Foxy's wary is Zeta actually. He's gonna burn his own Molotov. And Wine, I think they may have just misplayed it completely on their own. And now Flash, Zeus is still bleeding. He's still not here on his feet yet. But Potato 5 is the only one standing on the side of Voin. And RIQ are here to join the party as well. This is going to be the end of the fight, end of the map here, ladies and gentlemen. RIQ third party in this, and I think that Molotov might be enough. The grenade actually will not be dealing any damage. Another second grenade being cooked. Potato 5 still surviving. Flash also alive with 3 players. RIQ in the vicinity now. Exactly, and Team RQ no elimination यहाँ पर लोग पास में वोइन ई-स्पोर्ट्स के खिलाड़ी होते हुए बाहर इस गेम से लॉबी तक का रास्ता उनका दिखाया जाएगा। RQ के पैराग्राफ ऑन एंड फायर बिग सोलमन स्टैंडिंग, एंड देखते हैं यहाँ पे क्या सिनेरियोस रहेंगे। एंड फायरन क्या यहाँ पर एक 1v3 कर पाएंगे या फिर नहीं टीम फ्लैश के अगेंस्ट। एंड आई डिड प्रेडिक्ट यहाँ पर उन लोगों का चिकन डिनर आ सकता है, एंड आई गेस टीम फ्लैश विल मेक द थिंग हैपन। Zeus is really low on the HP. 1 versus 3. They turn the tide around. Team Flash on the verge, coming back with the main roster, coming back with full force, and now RQ Byron. I mean, he does have a lot of force himself. He's about to pull off a 1v3 maybe, as now RQ down to a 1v1 is Zeus and Flash. Zeus, can he keep the hope? Can he keep the hope alive here for a chicken dinner for different teams? Or RQ, will this be a repeat of history? Will this be a second chicken dinner for them in today? Zeus holding on. He knows exactly where the player is. He knows exactly where the player is. And well, he will be quick enough for the trigger to pull it. And I believe it is them coming out on top. Team Flash with the winner chicken. Yep, great performance. It was absolutely dominant, and it was just insane. Man, oh man, that was a match to witness. And as we are done with all our 5 matches, and it was insanely good. Everyone performed really, really well. And after this, we'll be heading towards to our last match, which is going to be our 8th, or actually last match of our day, which is going to be our 6th match, and it's going to be Miramar Edge. But this match, Erangel, it turned out to be a massacre for the teams. So let's just have a look on to our match highlights. Yeah, I mean, if you take a look at the match highlights, you will understand what went down here pretty early into the game. You can see SI8 getting taken down immediately, retaliating towards the players inside of T2K. A very important play there, and this was kind of unfortunate. BTR just caught off guard in the water there. Boom, those were free picks for them. And then Team Flash, their domination started pretty early too. They were coming on strong, and then with the roster that they have, right? They know that they're capable of putting off chicken dinner 6 times if they are given the chance to. I know once again it's a little too much, but if given the chance, they would probably get it. And towards the end as well, towards the end circles, Flash was always on point with the aim and the positioning. Exactly, SKYFORCE
and they were having 3 eliminations to work with, but it did not turn out to be a great one. Huzaifa, he was spotted in the open scenarios and he was down. RQ, they also performed really good, but now we can see Team Flash right now. They did capitalize 3 elimination, but Edge Team Flash, the performance was really good, especially how they eliminated Boom Esports. It was on point, it was good. And 4 Thrives, somewhere around they were surviving with 2 players, so it was really hard to make that chicken dinner happen, but I'd say a decent performance coming in from that team. I mean, everyone tried their best on the side of 4 Tribes too. They did try out towards the end, trying to take down the players and firing towards the end with a 1 versus 3 almost. That was pretty. That would have been pretty sick if it came into play. But Bose had other plans. Zeus actually had other plans in mind. He was the last one standing, and this Molotov unfortunate turn of events. Zeta, I think he misclicked there, and you can see Pagos. He was the last one to put the final in the coffin with side of VOIN, and then immediately firing coming out in the open, catching him off guard. And you can see Zeus there with a beautiful pick towards the end, getting the winner chicken dinner. 7 eliminations for Zeus, 5 for Tops, 3 for Bose, and done for Zyvan. This time around, he did deal insane amount of damage though. Look at that, 375, but no eliminations to show for it. Exactly, this is going to be Team Flash making that chicken dinner and happening. Finally, we can see them coming and taking that one and dominating the lobby. Man, it was amazing, man. After all, Team Flash, they just totally owned 15 elimination and 25-point marker. Edge, we have seen them playing with a different level of roster, but when it's about like Win, Tops, Bose, and Zeus, they're on point, man. They are really accurate with all the things. They are really accurate with everything, whatever they do. That is true. Team Flash, it feels like they have a, at this point, it just feels like they have a cheat code to the game that no one else has. They figured it out. They know exactly how to take down these players and these teams in the lobby at the moment. Now, I think in the region, they probably are the best team. Now, once again, I wish them luck going into those worldwide tournaments, of course, coming in the international ones. I mean, it's not like this is not an international one, but I'm talking about BMGC. You know what I mean? Hopefully, this time around, 26, they will probably be at a better position later on. As Zeus will be the MVP, 7 eliminations, 763 damage, 2 assists, 24 minutes, and 46 seconds of survival time, 5 knocks, and 747 heal. Let's just have a look on the top 4 players in this match. In the previous match, Zeus, Firen, Tops, and Paragraphs from the side of Team Flash and RQ. There are 2 players of Team Flash and there are 2 players of Team RQ. This shows that all the Vietnamese teams and the Indonesian teams, they're performing really good. And especially when Team Flash joined with all the original rosters, we can see all of the players from the side of Team Flash performing really good. Team Flash, they've absolutely outdone themselves at the moment. RQ Firen towards the end almost made us all believe that he's going to pull it off. Pragos as well. It's been a while since I've seen his name in the overall, and he's there in the top 4 players, not in the overall MVP yet, because I do feel like he's going to be one of the contenders soon. But yeah, top 4 players are these: Zeus, Firen on the side of RQ, Tops on the side of Flash, and Pragos on the side of RQ too. As we take a look at the teams to watch, we're definitely going to be looking at Flash, RQ for sure. There you go, 15 elimination for Flash, 11 for RQ, 7 for FN, and Nongshim. I mean, today it's going decent for them. 3 eliminations, 3 points to start their day off, but after that, they have an average of 5 to 6 per game. I would love if they can just go up to maybe like 10 a game, but I will take 6. It's still better than 3. As we take a look at the match summary: 69 total eliminations, 5 grand eliminations, 2 airdrops looted, 1 vehicle elimination, 10,196 healing done, and Zeus with the longest elimination at 397 meters. This is going to be a typical match summary. 5 grenade eliminations incoming, and Zeus will be taking that longest elimination, which was really, really good. He was just hitting those bullseye from the long range scenarios and the mid range scenarios. But after this, let's just have a look at the match rankings, because we do know that Team Flash will be taking 25 points into the previous one. I just want to have a look at which team is coming in top 5
and into the overall rankings. I want to have a look on the second page of the overall rankings because we'll be having some changes there as well. Match rankings, you can see Team Flash leading the chart, of course, with 25 points. RIQ 17. 10 for Nongshim, FN on 10, VOIN on 8, Boom on 6, 4 for WARGYE, SI on 4, 3 for SKYFORCE, Team Secret on 3, DRX on 3 as well, along with 52 esports, 4 Tribes on 2, and Sight on 1 DRS, and T2K with 1 apiece as well. BTR and HKG, unfortunately, this was a disaster of a game. They will not be acquiring any points whatsoever. That's absolutely true. This is going to be the match rankings, and we are done with the match rankings. After this, we will be witnessing our overall rankings. And first page, the teams on the first page, they're having a good spot. No changes whatsoever there, I feel like, and they are in a good spot. But I just want to have a look at where Team Flashing heading towards to, because they are accumulating 25 points, which is really good edge. And now RQ and Team NS, I'd say a very decent performance. They were able to capitalize 17 and 10 points. But the overall standings on the screen, and Team Flash for a huge jump. They will be crossing 110 point marker and 100 point threshold. An insane level of performance. And Team Flash, insane performance into the previous one. And Team Sites, they also performed really good. The Xavier's, T2K esports, everyone, they're performing good. But I feel like it's Team HORAA esports. They were on the first page and they got dethroned into the second one. And now HORAA esports, they are not in the better spot. They are in the yellow zone, and some of the teams also from the first page to they're thrown to the second page. And HORAA esports, they're not having any matches today, so let's see how they perform. Top 9 teams. These teams can breathe a little easier, knowing that they have they have the best chance to make it to the top 16, top 18. But the other ones, overall rankings coming in now 10th to 18th position. HORAA esports on 10th, SKYFORCE on 11th, PANDUM on 12, HKG on 13, 4 Tribes on 14, All 3 Egos on 15, 2K on 16, BLUG on 17, APG on 18. These are your teams here in the top 18. Now, successfully qualifying to the grand finals. For now, we still have a long way from that grand finals. 3 more days of action left and 1 more map today. Nongshim in 19th position. Now, that is a very good position to be in. Look at that. 3, 6, 16, 5, 10. They'll take it. I mean, it's good. It's good. Team Secret, on the other hand, 39 points. WARGYE, 37, 36 for VOIN. DRX on 31, 28 for 11. Boom on 26, 24 for SI, 50 esports. Well, this is turning out to be an unfortunate day for them. 13 points is all they were able to accumulate into this one. As we talk about the overall MVP, it is almost, it is Firen who almost lost a 1v3 just now. Overall MVP, it's gonna be on our screens now, and BTR, Fatalist, RQ, everyone performing really well. And SKYFORCE has got less 79, 26 elimination points with 33 points. No changes whatsoever in the overall MVP so far. But it's all about the consistency edge. All these players in the overall MVP, it's about the consistency, and they're showing up good and strong. And after this, if I'm not wrong, we will be looking towards the votes. Yeah, absolutely. And 4 Thrives fans accumulating more than 50,000 votes, and DRS will be accumulating more than 11,000 votes. Yeah, the votes are coming in strong, and you can see the teams that are on top usually are the ones on top. 4 Thrives and DRS. 15,000, 11,000 each. And once again, if any of you are wondering what this is, these are the votes pulled in by you guys. So if you want to vote for your favorite team, all you need to do is type in hashtag team tag, your favorite team's tag, of course. So if you're voting for T2K, all you need to do is type in hashtag T2K in the chat, and one message, one vote will be counted against them. And the top 2 teams at the end of playoff, the last match, and before it's done, if the teams that have accumulated a number of votes, the top 2 teams will be moving to the grand finals regardless of their position on the overall standing. So, well, it's time for you guys to once again be the keyboard warrior for one last time here in chapter 3. This is phase 3, the final phase of chapter 3. So you have 3 days and 1 more game today
left to vote for your favorite team. So get to typing, get to voting, as we have Rondo, Erangel, Miramar, Rondo, Erangel done. Miramar is the only map that is left in the pool at the moment. True, this is going to be the map rotation, and this is going to be Miramar, and this is going to be the last, I'd say, map of our day, and it's going to be Miramar. It's one of my personal favorite maps, Edge, and it's going to be the last day of our map, and I just want to see those early 4v4 fights happening from the start itself, and I know it will be happening for sure. Edge, what do you think? What are your expectations from the next match? What are you speculating in future on the map of Miramar? Those early fights, those early battles from the start itself, because it's going to be the last day, last match actually, or do you predict those slow paced fights from the first round, or we can say first stage itself? What do you think? Oh, would we? I mean, is it? Wouldn't we love to see a team at the bottom, at the very bottom, to get a chicken dinner, like a 30-35 bomber? I think I think getting 30-35 towards the end of Miramar, towards the end of day, will give you a better confidence boost going into the next day. And not just that, it'll also help you sleep better today, of course. Group Green, first day for them. And if any of them makes it to the top on the last game, of course, I feel like that will be something to cheer for. And I'm hoping, because once again, I'm trying to be as optimistic as possible. So 30-35 by any of the teams that are very, very bottom probably is going to be my go-to pick here. I mean, absolutely. That might be the thing, but Edge, we saw 4 matches, 4 different winners. One, like we have seen 2 Indonesian teams taking that chicken dinner today, 1 Pakistani team, 1 Korean team, 1 Vietnamese team. So last match is gonna be maybe a different region, maybe a different team. Last match, last hope for the teams to make their comeback in top 18. Teams struggling on the 3rd page. It's a very important match for them. Oh, indeed. It is a very important match for a lot of these teams, the very, very bottom. Not just to end the day on a good note, but to make sure that, they have a really good chance to qualifying into the top 16, top 18 to make it to the grand finals. Hopefully, we get to see some amazing action here on the map of Miramar, and some long range, maybe sniper. Maybe now is the time, with Korean teams joining in as well. Maybe DRX or Non-Chim can maybe give us some sniper on sniper action. I mean, absolutely. And Miramar, as it is going to be the last one. देखते हैं यहाँ पर कौन से कंटेनर लेके जाएगा. एंड देखिए, अगर आप लोगों का इनिशिएशन अच्छा हुआ है आज के दिन के अंदर, सो क्यों ना आप लोग अपने दिन को भी अच्छे नोट पर खत्म करें एंड एक चिकन डिनर अपने नाम लेके जाए. बट लेडीज एंड जेंटलमैन, विदाउट एनी फर्दर अड्यूज, लेट्स जस्ट गो टू द लास्ट मैच ऑफ आवर डे, एंड इट्स गोना बी Miramar, and it is going to be the last match of our day. Ladies and gentlemen, boys and girls watching out there, it's going to be Asia Battle with Chapter 3rd, Match 6 of day number 3rd. It's going to be the final one. It's going to be the final blow. Starting with the region of Campo Militar and ending in the region of Montenegro. Campo Militar, Montenegro, which means San Martinez and the Del Pentron. Once again, probably the hotspot. We have already seen DRS go towards that area last time around. They've been really dominant too towards that part of the map. I kind of am looking forward to see how Flash is going to be performing here as well. 2 games, and the two games, they were really, really good. Going into the last one, will they be maintaining the same level of consistency into the last match here? Or will there be a difference of strategy, a difference of outcome towards the end? That's what I'm going to wait and watch. That's true. Picaro being the heart of the map, Losers, the biggest city, Hasanat and Patron, those luxuries villas. We know that DRS take a fight there against T2K esports sometimes, but let's see क्या वहाँ पर वो teams दोनों 4v4 early engagements and fights के अंदर आती है या फिर नहीं.
अभी के लिए यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कुछ ये जो बैटल्स है पिकाडो के रीजन के ऊपर बर्फ करेंगे या फिर नहीं, क्योंकि हमको पता है देखिए ऑल्टर ईगोस नहीं है। सो टीम 4 थ्राइव्स के लिए यहाँ पर शायद फाइट्स तो नहीं बन के आएंगे, बट देखिए कोरियन ड्रॉप्स का अभी तक यहाँ पर हम लोगों ने अच्छे तरीके से बोलेंगे एनालाइज नहीं किया कि कहाँ पे उतरती है, बिकॉज दे कीप ऑन चेंजिंग देयर ड्रॉप, बट लुक एट दिस जोन। this is going to be a massacre, man. Oh boy. Altona prison Ministel, sir. I don't think we expected this. I don't think anyone expected this. Zone 2 was the last game of the day too. SI8 jumping in with a couple of players that I haven't seen before. Did we witness them? Or did I not catch an eye up until now? Yep. And 4 threats के खिलाड़ी अभी के यहाँ पर T24 OP. He's down and he got bleeded on the way. अभी के लिए यहाँ पर RRQ के प्लेयर्स यहाँ पर फाइट के अंदर आएंगे, इसी के साथ में IQQ बेहतरीन एक नॉकआउट लैपर के ऊपर, लैपर को डायरेक्टली फिनिश ऑफ कर दिया जाएगा। RRQ के प्लेयर्स आई हैव नेवर सीन देम एक्चुअली मेकिंग अप अ स्पॉट हियर इन द रीजन ऑफ पिकाडो IQQ। आई फील लाइक यहाँ पर दूसरे प्लेयर के ऊपर एम ना करके जो नॉकआउट खिलाड़ी है उसको पूरा फिनिश ऑफ करना वाज द बेस्ट डिसीजन इनकमिंग, क्योंकि देखिए नॉकआउट तो शायद से आ ही सकता था क्योंकि बहुत ज़्यादा लो थे IQQ। सो क्यों ना उस प्लेयर को यहाँ पर डाउन किया जाए, पूरा फिनिश ऑफ किया जाए, आउट नंबर किया जाए। बेहतरीन स्प्रे यहाँ पर फलक की तरफ से इजीली यहाँ पर डाउन किया जाएगा। पेंगुइन अभी के यहाँ पर एक लेवल 1 का हेलमेट रहेगा एंड फायर इनको डाउन किया जाएगा हुज़ैफा की तरफ से। ये एक रहेगा डेडली डुओ एंड जेन फोर्सेस सोलोमन स्टैंडिंग। क्या यहाँ पर फलक के ऊपर स्प्रेज आए? हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पर स्प्रेज आएंगे। दो यहाँ पर बहुत ज्यादा हो चुके हैं, कोई भी वेस्ट नहीं है, सो वेस्ट मिल जाए तो बेहतरीन रह सकता है। बट पीछे से एक और टीम यहाँ पर आएगी एंड इट्स गोइंग टू बी बूम esports इफ आई एम नॉट रॉन्ग एज। एंड यहाँ पर इन दूर दराज के एरिया से टीम 4 थ्राइव्स एंड टीम RRQ को दिक्कतों में डाल सकती है। Definitely. I mean, could it be a tough spot for IQ, a 1v2 against 4 tribes? Scratch that and make it a 1v1 now. As Falak's the only one standing, Huzefa is gone in the blink of an eye like QBZ. It's fast. And he's going to drop him immediately. IQ now will not be getting the rebuttal onto the second player there. So there's only one left, and it's Falak. I mean, he does have the potential to go for even a chicken dinner, to be really honest. But the positioning, I'm not really sure. The utilities, I mean, it's going to take a while. The loot, they need more. The luck, is it on their side? Both tribes, maybe a little today. यप A-Side esports HKG के अगेंस्ट एंड ये जो 4v4 के दरकार है और ये जो टकराव है कभी भी यहाँ पर इनिशिएट हो सकती है। जी बिल्कुल, यहाँ पर पहला ओपन निकालने का ट्राई किया है मोंटेनोवो में यहाँ पर। एंड अभी के लिए देखिए लाजमी तरीके से प्लेयर्स जिंदा, मजीद प्लेयर्स यहाँ पर अभी के लिए, बट हम लोगों को पता है कि 17 टॉप टीम्स जिंदा तो हैं, बट A-Side esports एंड टीम HKG दोनों ही टीम्स ये जो अभी टकराव चल रही है दोनों के बीच में, एज कोई भी ओपनिंग अभी तक नहीं बन पाई है। Finding an opening, creating the opportunity is probably the key for most of these teams or most of these players. That's what they've been struggling to do so. And the SID both on the other hand, waiting for the perfect time to strike. HKG, they're closing in the distance though, as RIQ, GenForce. Why is he in a situation like this? I don't know. But he is. It's inevitable. And they might get eliminated too here after T2K. This might be the squad vibe coming in. GenForce missing his grenade there as well as the BIGETRON by Vitality are going in. Jason takes him down. RIQ gone. Falak survives that fight and he will hold on to his hats for now. But he's also the last man standing on side of 4 tribes, and they don't want to get taken out this early into the game. Definitely not. So if 2 eliminations, they will want to survive a little longer at least and get a few position placement points. And just as I say that, Falak will immediately
get taken down. Although they did, I mean, he did manage to get one extra elimination point towards the end, but still not enough. There's 3 points into this game. Yep, एसाइट esports कोई भी एलिमिनेशन पॉइंट्स के अंदर अभी तक इजाफा नहीं देखने को मिला है. देखिए और भी ज़्यादा एलिमिनेशन पॉइंट्स मिलेंगे तो बेटर रहेगा. मिरामार का मैप ये रहेगा अभी के लिए. एंड एचकेजी की टीम के अगेंस्ट ये जो टकराव चल रही है, मुश्किलात के अंदर टीम एचकेजी अभी तक हम लोग को देखने को मिली है एज, बट रिटालिएशन बेहतरीन तरीके से किया. एचकेजी के प्लेयर्स को यहाँ पर रिवाइव किया जाएगा, थोड़ा बहुत रिट्रीट करेंगे, रिटालिएट करेंगे. बट अभी के लिए मैं बोलूँगा इस फाइट को इग्नोर करें. जोन के अंदर यहाँ पर अपने एक शॉर्प मूव बना है. देखिए जोन के अंदर भले ही है बट स्टिल एक बेटर कंपाउंड यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं. एंड रोटेशन क्लैशेस के अंदर कुछ और हेयर एंड देयर हो और कुछ एलिमिनेशन पॉइंट्स अपने नाम करके जाए तो हो सकता है बेटर रहेगा. एंड आई वाज जस्ट लुकिंग एट द चैट राइट नाउ एंड कुछ ऑडियंस यहाँ पे पूछ रहे हैं हाउ यू गाइस कैन वोट फॉर योर फेवरेट टीम. देखिए यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सिंपल एंड ईजी स्टेप्स रहेंगे. यू गाइज हैव टू राइट अ हैशटैग एंड लाइव चैट के अंदर लिखना है, कमेंट्स के अंदर नहीं लिखना. लाइव चैट के अंदर जो अभी यूट्यूब के अंदर लाइव चैट चल रही है वहाँ पे आप लोग हैशटैग लिखिए एंड जिस भी टीम को आपको सपोर्ट करना है उसका एक बार टीम टैग लिख दीजिए. अगर मान के चलिए अगर आप लोग को टीम फोर स्ट्राइप्स को सपोर्ट करना है सो हैशटैग 40. इफ यू गाइज वांट टू सपोर्ट टीम वॉइन esports so hashtag VOIN. If you guys want to support boom esports then hashtag boom btr, hashtag btr. So same है hashtag with the team tag and then send it once. Do not make sure कि आप लोग डबल टाइम बाद ना लगे, एक ही बार लिखना so that वो जो है easily वोट जो है रजिस्टर हो जाएगा, right? So make sure to vote for your favorite team. and अगर आप लोग सोच रहे हो कि ये वोटिंग्स का क्या सिस्टम है एंड वोटिंग्स क्या सपोर्ट करती हैं टीम्स को, सो देखिए यहाँ पर हमारे पास में रहेंगी हमारी टॉप 18 टीम्स जो ग्रैंड फाइनल्स के अंदर लड़ेंगी, जिसमें से टॉप 16 टीम्स क्वालिफाई करेंगी अपने गन पावर की वजह से. टॉप 16 के अंदर रहेंगे तभी वो लोग क्वालिफाई रह पाएंगे. और बाद बाकी जो हमारी 2 टीम्स रहेंगी वो फैन फेवरेट का टाइटल लेके जाएंगे एंड फैन फेवरेट टीम्स बन के क्वालिफाई करेंगी. सो दिस इज इट. सो फैन फेवरेट टीम्स का एक छोटा सा सिस्टम है, वोटिंग सिस्टम है, तो जाइए जल्दी से आके अभी वोट करिए. Well said. And yeah, I mean, if you guys are still wondering, Inferno, well, just clear it out for you guys, and hopefully we get to see some tough competition this time. I mean, it's usually for Tribes and DRS, right? They are the fan favorite ones, and they're usually the ones coming out on top. And you already said it; they will be the same. It will be the same for phase 1, 2, 3, and well, phase 1 and 2. You're right. Phase 3, let's see. It feels like you're going to be right again because it feels like they are the ones coming out on top in terms of votes. With the fans coming in, you guys at home have the opportunity to send 2 teams to the grand finals directly. That is a lot of power. Do I call these people power? Well, going back into the game, 56 players, I'm sorry, 15 teams, and a 10-minute mark about ahead. Stage 2 circle will be coming into play in the next few seconds. Miramar is turning out to be one of those typical ones where you don't see any action happening for a really long time. Towards the mid part of the game, you will just see teams holding on to their position. FN, they've started off really, really well today. I mean, they're doing good in terms of numbers, 128 for themselves. They will definitely be one of the contenders for the grand finals. They're already picking up some pace, but they definitely need 150 plus, 160 maybe even to be on a safer side, because we've seen phase 2 playoffs, right? 250, 240, something like that. There were really high numbers there. Because anyone, I believe 121, 127 was the last number that did get qualified, the number of points. So 128 is what FN have right now, which is enough if you consider. I mean, if you take the past into play here, but you never really know. So maybe 150, 160 to stay safe. Just to say safe, एसाइट esports बिडन के अंदर आएगी. यहाँ पर वर्कआउट को सपोर्ट किया जाएगा. 2 प्लेयर्स एसाइट esports के अभी भी जिंदा, कब तक 2 प्लेयर्स और भी ज्यादा ब्लीड ऑफ होंगे. एंड सोलो मैन स्टैंडिंग यहाँ पर एसाइट esports का वो खिलाड़ी क्या क्लच ऑफ कर पाएगा. ये ग्रेनेड बहुत ही ज्यादा बेहतरीन ग्रेनेड इज लुकिंग गुड. क्या करेगा, थोड़ा बहुत डिफ्लेक्ट हुआ स्टेयरकेसेस के ऊपर. इसके साथ में यहाँ पर ग्रेनेड कनेक्शन नहीं लेके जाएगा. ही इज नॉट हैविंग एनी ग्रेनेड्स टू वर्क विद. यही टाइम है पुश कर देगा. अगर रिवाइवल हो गया तो शायद से दिक्कतें बन सकती है. आगे तक बढ़ते पीछे से आप शॉट्स आएंगे दूर दराज के प्लेयर से. बट एसाइट esports कैन एक्चुअली पुल इट ऑफ, कैन एक्चुअली क्लच इट ऑफ. हील यहाँ पे प्लेयर्स ने कर लिया है. एज इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू पुश इट राइट नाउ. स्मोक यहाँ पर है, इसी की वजह से एक जो आर्टिफिशियल कवर है, विजिबिलिटी यहाँ पर नहीं मिलेगी. पर आई गेस
पीछे से शॉट्स आएंगे एंड पेन का खिलाड़ी लेके जाएगा उस प्लेयर को. Striking at the right time. Domination coming into DRS. Smiley face is back, and well, he is here to cause havoc, and that he is already with 3 eliminations to his name. Trying now putting screws to the players inside of DRS. Cyclone hits the deck, and I think Cyclone might get taken down. They got to be careful here. Team Secret might be able to take down Frag at the moment. Luckily surviving. But 2 players on the side of Secret against 4, maybe 3, because that's what the numbers are at the moment that are on their feet. Cyclone's bleeding. Frag's really low. Juke in the smoke. Will be taking a bit of damage. Almost getting taken down. Frag's the only one standing. No, wait. Bill actually did get taken down. Trang was the one who dropped him. So now DRS in a 2v2 situation. In the meanwhile, SKYFORCE did get eliminated. Juke is very, very low. And Smiley Face, he's unable to find that frag. He's unable to pick up the damage there. Juke drops 1, drops 2 here, frag. He finally saves the day for DRS. But Team Secret, they were on the verge. It was a 1v2. They almost turned the tide around. DRS would have been eliminated there. But lucky for, thankfully for Frag, he was there at the right place at the right time with the SLK coming on top. Juke was very low, and that, I think, did help Frag to secure the 1v2. Exactly. Oh, DRX, 0 elimination points, nothing to work with. They need more and more. And इसी के साथ में प्लेयर्स को स्पॉट किया जाएगा. WARGYE के प्लेयर्स को यहाँ पे 2 प्लेयर्स को डाउन किया जाएगा. QZ यहाँ पे डाउन एक्चुअली हो चुके हैं. रिवाइव यहाँ पे हो पाएंगे या फिर नहीं वो देखने वाली चीज रहेगी. हाथ में रहेगी वेक्टर SMG, and he is using a vector. He is just reigning supreme. Wow, that was a satisfaction shot coming in at the end. And WARGYE यहाँ से होते हुए बाहर. DRX के players, they are surviving. But Edge, the player from DRX3, he is using a vector with that suppressor. That sounded so satisfactory. But a vector, no assault rifles. I mean, not even S12K, just vector. I haven't seen a player using vector after S12K meta or shotgun meta. It's pretty rare. The vectors are pretty rare, to be honest, but you only get to see it mostly on, Miramar here. And I think we are blessed to have that. Us witnessing that is amazing. I'm happy. Maybe some sniper action, and then I think my day is done. I can sleep in peace as well. Vector, I'm happy, sure, but yes, sniper would just make it that much better. As DRX are going to be making their way back into the circle, they're going to be careful. SCYTES will drop him out. TRE. Oh no. No. They will not be able to go for any revival here. DRX, they will lose 2 more players and Nongshim. Now, all they will do is survive at the moment, trying to take down players out of sight. One knock comes in, Ghost is very low, Ghost is down and out as well. Sight now on the verge of getting eliminated. There's only 1 more player standing, and he's not even close to any of the players to go for the revival. There's 1 more bleeding. And I think the player is right next to him, so the revival might come in. Or maybe not. He's gone. Yep, sights are gone. They are eliminated down to top 10 teams already. And सभी players यहाँ पे fight के अंदर आते हैं. मैंने यही थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं speculate किया था कि आखिरी match हो सकता है, तो हम लोग यहाँ पर बेहतरीन तरीके से initial level के ऊपर fights देख सकते हैं and fights हो सकती हैं. Team Group Blue versus Group Green, it turned out to be a massacre throughout the whole day. आज का जो आखिरी मैच है, देखते हैं कैसा टर्न आउट करता है. स्पॉट यहाँ पर टीम 52 के प्लेयर्स को गया. DRS गेमिंग 7 एलिमिनेशन के साथ में इजाफा करते हुए इस गेम के अंदर बेहतरीन परफॉर्मेंस यहाँ पर इस नेपाली भी टीम ने दिखाई आज के दिन के अंदर. Ten teams, 31 players now in the server. 15.5 minutes into the game, stage 4 circle coming to a close in the next 2.5 minutes, just a little less than that. As FN they will be in a position where they probably can go for more points. Maybe even chicken dinner. With 3 players standing, they're one of the top teams along with DRS. 7 eliminations into this. Flash at the moment, they're silent. No eliminations.
No eliminations whatsoever to work with. Ooh, DRS, they are spotted, Edge. They are spotted. And they are casualized, to be honest, and their intel and information. Right now, Team Flash Bros spotted the player. BTR Kent. Quickly यहाँ पर. And साथ ही eliminations के बाद में यहाँ पर DRS का इजाफा नहीं देखने को मिला है elimination points के अंदर. तो अभी के लिए यहाँ पर DRS frag को pick off किया जाएगा. Cyclone, XM Pills, and that player with the name, with the smiley emoji or whatever it is. They are surviving. But a big यहाँ पर TRS, they are looking in a bad situation. Flash के against यहाँ पर fight Zeus spot यहाँ पर किए जाएंगे. And Team Flash, they are surviving with good amount of players right now. But revival हो तो रहा है. जो grenade है बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, but it was not on point. Cyclone really tagged up there. Might get taken down too. 4 players surviving now for the side of DRS, but for how long? This could be a fight, and Esports and Flash, both of them are here. I mean, if I was anyone against Flash, I would definitely not want to be in this situation, especially against that roster. Especially with the way things are going for the last 2 games, ever since they came back into the game today. XMP, gotta be cautious, and I believe DRX is gone. Vinny was the last surviving player, and he's gonna get taken down. Top 9 teams now. With XMP now close in the distance. He's gonna get one actually. Up. Will hit the deck. Now Flash at the back foot. DRS might be able to capitalize, but there you go. The third party we were talking about comes in to Esports. Joining the party too, but DRS Gaming trying to put the screws to the players inside of Flash. It's a 2v1 situation. Smiley Face is the only one standing, and he will not be able to do anything else. He's gonna get taken down. DRS, 4 players gone in the blink of an eye. Flash, on the other hand, will have to go for the revival immediately because 52 is now in the vicinity. There are 4 players standing, and they're coming in hot. They're coming in hard, that is true. Team NS, Longshim Red Forces. What you guys are waiting for, go over those utilities, spam those grenades in that compound, and maybe also the और भी ज़्यादा nation points अपने नाम करेंगे. FN Shoujang and all these Korean teams will be making a cluster against that Indonesian team. They are stuck in the compound. VOIN Esports, not good. The grenades are raining supreme. And Zeta, he's also there. He's looking good. But the grenades coming in from the side of that team is looking promising. VOIN Esports अब तक आप सर्वाइव कर पाएंगे या फिर नहीं देखने वाली चीज होंगे. आज की तरफ बढ़ेंगे हाथ में गेस्ट्रोल के मोलोटोव जब आ गई ये एक और बेहतरीन नॉकआउट. एंड टीम VOIN Esports 3 खिलाड़ी यहाँ पर जिंदा, बट एथन इन लोगों को करना पड़ेगा. 3v2 नाउ. एक और ग्रेनेड क्रेजी की तरफ से शायद से लेके जा सकता है नॉकआउट. It is going to be a well cooked grenade, that is for sure, and he is down. Crazy. He's a Solomon stunning. Ooh. Oh. Standing there as HKG, they are gone. 7 position for them as Boom are gone in 6th. 5 now teams survive. Flash, Future Esports, BTR, VOIN, Nongshim. And looks like there is a really good chance that we will be witnessing a second chicken dinner by one of the teams. VOIN, Nongshim, Flash, all of these 3 teams have 1 apiece today. Future Esports, BTR, well, they don't have any. As Poxy gets taken down, VOIN will lose a player. They're on the back foot now with a disadvantage. They might get taken down. Nongshim, the man advantage is a perfect opportunity for them to strike, but I don't think they're going to be willing to go for this immediately as the revival is already going to come in. Nongshim now change their mind, going back into safety. Going back to safety, that is true. And now Team Flash. Ooh, that was an amazing shot coming in. Zeus. A 1v2? A 1v2? And yep, absolutely, he's going to be doing a 1v2. Agent 47, he's one of the best players of Team 52 right now. And Agent 47 was going to be a scenario क्योंकि हाथ में रहेगी AQBZ. Spot player को किया. Knockout करने की दरकार. And look at the sprays coming in. Top C. यहाँ पर एक गाड़ी उनकी हवा में थी. And शायद से सीट को चेंज किया गया था. Knockout उनका आएगा. Team 52 होते हुए बाहर इस गेम से. And Team Flash, the second chicken dinner of the day is loading, maybe. It looks like that's going to be the case. The revival has to come in though, and it will. They will have the utilities to work with, so the heal might be coming in, and they don't really have to worry about anything else at the moment. BTR 2, VOIN 3, Nenes 3. 50 Esports was their only obstacle, and well, they're gone. And now Flash clearly with the man advantage, and they do have the skill set to go for this double chicken dinner back to back too. To end things off, this is just going to be
once again, a domination from Team Flash if it happens. Stage 6 coming into play in the next 45 seconds. The circle will push out players inside of VOIN and Nongshim. So now whoever moves first will be praised for the team as Tops gets taken down. So Flash now have lost one player. Look at this. What is this? Flash? I am not really sure what's happening there, but those two eliminations are kind of weird. Exactly. And VOIN esports. Ooh, the grenade is good. But no, that was an overkill grenade, I'd say, in my opinion. Pushing in, spotted the player again. Nongshim Red Forces. This is the right moment to strike in. And I feel like to gather that chicken dinner. Spotted Potato को यहाँ पर डाउन किया बेहतरीन तरीके से यहाँ पर जोन गेम से बाहर करते हुए BTR Flash VOIN esports and Nongshim Red Forces ये रहेंगे हमारी कुछ 4 ऐसी टॉप टीम्स जो अभी तक छठवें जोन के अंदर जिंदा ओनो जेविन यहाँ पे इनको स्पॉट किया डाउन किया मोलोटॉव यहाँ पर बेहतरीन तरीके से यहाँ पर जाएगी उनके ऊपर बोज इज गोना बी द सोलो मैन स्टैंडिंग व्हाट इज गोना बी डूइंग इट्स गोना बी टीम BTR इट्स गोना बी Indonesia versus Vietnam. Both struggling to survive now in a situation where usually you would say that he is the one preferred to come out on top. Unfortunately, this time that won't be the case as Federals will drop him with the TBC. TBS actually. As Flash, they're gone. No back-to-back chicken dinner for them at least. Now BTR, the only team who has not gotten a chicken dinner today. VOIN and NS, they've already got one. So let's see if BTR can actually convert this run into a chicken dinner on the map of Miramar as we have 90 seconds before stage 6 collapses completely and stage 7 comes in. The drift will be important to keep an eye out for. BTR. Top 3 teams. It's gonna be 2 Indonesian teams and 1 last Korean team. Fadeless, he is taking 4. He will be taking 4 elimination for his team. That's silent. 8 eliminations. Can they actually make it to 10? Is the question edge. Kent and Fadeless, both of the team, I'd say both of the players from the side of BTR, they're actually really coordinative. But players, they're spotted. All the three teams, they know the positioning. They know where the players are hiding. So yes, the fights can strike in any moment. Definitely. I mean, stage 7 circle might just be the last one to come out. And, well, BTR is gone. So we are definitely looking at a repeated chicken dinner winner. Nongshim 3, VOIN 2. Stage 6 coming to a close in the next few seconds. Stage 7 circle will be the one that we'll be keeping an eye out for. And as you said, these players already know where exactly the players are. They have compromised their position long ago, and I think Potato 5 is spotted. Potato 5. I think he's been spotted by one of the players on the side of Nongshim. Now the information will be relayed. They'll be ready for this. And look at the cycle. Look at the circle. I'm sorry. It is in advantage, in favorable position for Nongshim. VOIN, they can make it to the edge of the circle, but they still have to be very, very cautious. Exactly, they gotta be really, really cautious. VOIN esports. Last 2 man standing. Who's gonna be making the first move? Who's gonna be making that opportunity and finding that opening? And I feel like we have seen 2v4, to be honest. VOIN esports, they do have the opportunity. They do have wise words, to be honest, to make that chicken dinner happen. But still, Nongshim right now, Nongshim Red Forces, they're in the better position. They are having a better chance to make the chicken dinner happening. Although having 9 elimination points. And he's dancing. Oh yeah, he's dancing. Hell yeah, brother. I mean, and okay, you don't have to okay. wipe that hard, to be honest. I mean, it was fun. It was fun to watch it. I like the confidence coming in from Nongshim there. Just out in the open, just dancing, chilling. Now, in a position to actually get the chicken dinner too. We'll wait and see how things turn out here. Still holding on. No utilities for VOIN? Is that true?
if they actually do not have any utilities, then I think this game is over. I don't even think VOIN has any chance, because they will need some sort of utilities, and I think Nongshim are done waiting. They don't even want to wait for the circle anymore. They're like, you know what? Screw this. We'll come in. We'll take the fight. We'll take the battle to them if they don't want to come out. They have the cover fire coming in as one player just rushed in. Jobin now up close and personal with the players as they will be affected by the zone. And Nongshim, the move, we were talking about it, right? The team that makes the move first is probably the one having the advantage. And Nongshim Red Force gave the green light and immediately, you know, showing the red light to the side of VOIN, and they will get taken down. That's a second chicken dinner for them, and they'll be really, really happy with their performance coming into this. I mean, that's true, man. Good performance it was indeed, and they performed really well. All the Korean teams, it was a good game today, and especially Nongshim Red Forces, after taking that chicken dinner, they will be having their confidence sky high. They are enjoying and celebrating with the Cloud9 situation. Let's just have a look at the match highlights before we end and wrap our day. Started off pretty decently once again. So, Force Drive, they once again are struggling here on the map of Miramar. I mean, the only map they're struggling right now is Miramar. I mean, Erangel, it feels like they do struggle a little, but I feel like they still have better performance on Erangel more than Miramar. So Miramar, they need to find another way to work things out because they're losing points here. Rondo, they probably are the best team, and Erangel, it's not terrible, but Miramar, it's just scary for the side of both tribes. So unfortunate situation, but you can see here DRS, they almost got taken down. If it wasn't a frag, Team Secret would have probably taken 4 players on the side of DRS down. That's true, and DRX, they were using those last, vectors, and it was really good to see, to be honest. And Nongshim Red Forces, they eliminated SCYTES as well, and that team, they got eliminated way too early, I'd say. I'd be top 12. They were able to capitalize, but then the movements coming in from the side of XMPLZ, it was so insane. He was 1 point. DRS, on the other hand, they got eliminated way too early, I'd say. But against Team Flash, they had a really good fight. FN as well. This was turning out to be a decent performance for them, up until they were taken down, of course. But they did accumulate, plenty amount of eliminations going into this. Crazy almost went crazy with that play towards the end, and Flash. I mean, up until here, I understand. But what was the last move? That is what I don't get it. They take down 52, which was good. And then Nongshim here in a situation like this, which was also scary. They did manage to get one more, I believe, here. There was a trade regardless. And then this move that happened, and then Bose was left alone. And that celebratory mode. Yeah, exactly, man. That was great. That was great to look forward to. And VOIN Esports, this was their elimination moment coming in, and this was the celebration moment coming in for the side of Team NS. Nongshim Red Forces with great with a chicken dinner and having 11 elimination points, and will be taking 21 points in the overall rankings and the match rankings as well. And the MVP? Yanbin coming in from the side of Nongshim Red Force. 5 eliminations, 916 damage, 5 assists, 26 minutes and 31 seconds of survival time, and 3 knocks and 261 heal. His body shot percentage is pretty high, 77.78%. Oh, heads not really there, but the lower body 22.22. He has been the key player for the side of Nongshim Red Force, and hopefully we'll see the consistency coming in tomorrow. And there's going to be another player on the same squad, TZ now coming in the top 4, along with Zeus on the side of Flash and Federals on the side of BTR, who did give us hope towards the end that they might be the team coming in with the chicken dinner and be 6 different, make it 6 different winners here today. Exactly, these are going to be your top 4 players, and after this we'll be having a look on to our
top 4 teams to watch out into the upcoming day, which is going to be day number 4. And there we have it, Edge. Let's just have a look. It's going to be Team NS, Team DRS, Team Flash, and Team FN. So insane level of performance, especially all the Korean teams and Nepali teams. They performed really well. The Indonesian domination is reckoned to be a good one, but Team Flash consistent with the gameplay throughout the whole day and the matches. And Edge, we are done with 23 days of total massacre, and still we are remaining with a week of total massacre incoming, right? So it's just emotions, man, right? Because Asia Balver's chapter 3rd, it was a huge ride. It was a huge journey from the start itself, and now we are down to a last phase and 3rd day, and we are remaining with 3 days of qualifiers, playoffs qualifiers, and then we'll get our top 18 teams, and then afterwards you'll be witnessing those top 18 teams fighting for the glory, and we'll be fighting for the reverse. The biggest question is gonna be, can a Team Flash win 3 times and taking that hat trick in this tournament? $64 total eliminations, 1 grand elimination, 2 A drops looted, no vehicle eliminations going into this, 8,207. And well, I believe that is Smiley Face coming in from the side of DRS once again with the 369 meters. Yes, I remember that pattern coming in. But non-champ Red Force with the 21 point total, 11 eliminations and 10 position placement points thanks to Chicken Dinner. They will be on top with 21, BTR on 13, 12 for VOIN, 11 for Flash, DRS on 7, 6 for 52 Esports and FN, SKG on 4 along with DRX, Boom on 3, RIQ 3 as well, 4 Tribes on 3, 2 for SCYTES, 1 for SKYFORCE, Team Secret, WARGYE, SI and T2K. Well, they have none. They don't. This is going to be a match rankings, and after this, let's just have a look onto our overall rankings, and let's see what is going to be the scenario in the overall rankings. These teams from first position to the last position on the first page: RQ, Team FN, DK, BTR, Team Flash, DRS, Team SCYTES, Team Xavier, Team T2K Esports, doing good. Nothing to fuss about. Everything's looking good for them. It's just all about to maintain the consistency into the upcoming 3 days. The upcoming days. Well, we're done with half of the journey in the playoffs. RQ 147, 134 for FN, D plus Kia 122, BTR 122, 121 for Flash, DRS on 116, 107 for SCYTES, D Xavier 101, 98 for T2K. These are the teams in the top 9 in a good position to qualify to the grand finals. But we will take a look at the position number 10 as well, HORAA at the moment with 98, 94 for SKYFORCE, 89 for PANDUM, 73 for SKG, 62 for 4 Tribes, non-champ now up to 61. This has turned out to be a great day for them, along with 4 Tribes, of course, coming in. 54 for Alter Ego Ares, 2K with 51, BLUG with 51. Absolutely, all these teams on the second page of the overall rankings, they are witnessing a good performance, to be honest. But the thing is, the teams on the third page, they're in the red zone right now. If they're not going to perform consistently into the upcoming days, they might actually get disqualified from the playoffs qualifiers and will be not able to make the spot. But look at that Edge. Team Nongshim Red Forces, what a good performance it was today, right? They played 3 matches very consecutively, right? And especially, I mean, 3 matches, it was bad, but we can see 3 points, 6 points, and 5 points. It was good. And now after that, 21 point marker into the single match. Team 4 Tribes, they were able to capitalize 46 freaking points in 2 single matches. So good consistency. VOIN. Yeah, I mean, you're definitely right. They need, consistency as well coming into the next matches. But VOIN, APG, Team Secret, WARGYE, DRX, Boom, 11, ASI, and 52 Esports. These are the teams here, and 52 Esports, I mean, I was hoping for them to actually be the one coming out on top, and unfortunately, that was not the case. And now, unfortunately, there's still 11 that's here, the team 11. They're in 25th position, 28 total points. This is unfortunate because they're done with 2 days, and they're here with 28 points on the very bottom of the scoreboard. As we take a look at the overall MVP after day 3, BTR, Federals, Firen, Godless, Pragos, and One Young. Now, One Young is still here.
in the overall MVP. But we do see Federals firing now into second position. Godless still in third. Drago is joining the party too. Yep, absolutely. These are going to be the overall MVP till this date, and in the playoffs qualifiers, good performance it was, right? And after this, I guess we'll be having a look on the teams vote outs. And if you guys are not voting for your favorite team, go right now and vote for your favorite team. And let's just have a look on the daily MVP, and it's gonna be Falak, and 15 elimination points and 14 knockouts they will be taking. And I guess the way Pakistani players and audience like to call it off, Falak Sher. He is definitely the MVP. He started off strong right off of the map of Rondo. Immediately kicking things up for the side towards New York's factory. I mean, we kind of missed them on that map towards that part of the map too. As we take a look at the votes coming in from you guys, well, once again, all you need to do to vote for your favorite team is type in hashtag your favorite team's team tag. And well, that's about it. You will have voted for your team, and top two teams in terms of votes will be the ones coming out on top, making it to the grand finals towards the end. Regardless of what their position is on the overalls, it doesn't really matter. All that matters is the number of votes that they have, and yeah, they just have to be the top two most voted teams out there. Exactly, Edge. We are done with all the matches. We are done with all the 6 matches, and we will be wrapping our playoffs qualifiers day number 3. And tomorrow we will be witnessing day 4 here on the channel 141 Esports. Same time, same broadcast channel, same platform. It's going to be YouTube. So the audience watching out there, अगर आप लोगों ने अभी तक यहाँ पर हमारे channel को subscribe नहीं किया है, तो जाके subscribe करिए, because the channel is really close to the 50k subscriber goal, and it's going to be our prime goal to reach 50k subscribers before Asia Balwas chapter 3rd. So please make sure to hit that like and subscribe, and आप ही लोग उस चीज को complete करवा सकते हो. तो जाइए जल्दी से आके subscribe करिए, like करिए, अपने fellow PUBG Mobile players के साथ में share भी करिए, because tell them it is actually Asia Balwas chapter 3rd. The matches here, it's really insane. It gives the same vibe of official level of matches we see. So those insane level of moments coming in, 1v4, great 4v4 fights, great chaotic zones, Rondos to be honest, my personal favorite map on the Asia Battlefield Chapter 3rd, Miramar's great close range, mid-range fights, Erangel, mix of everything, balance, emotion. So go right now, subscribe the channel and share to your friends. That is true indeed. So we're done with day number 3. I mean, make sure you come back tomorrow. You know where to find us. Day number 4 playoff will be once again witnessing Group Blue and Group Green. Or maybe Group Red. You never really know. So that's why you need to come on time and check it out tomorrow for yourself. Until then, this is us, Edge and Inferno, bidding farewell for one more time. We'll see you tomorrow. Good night, take care, and stay safe.
possible.
go. Invincible.
invincible.
invincible.